चलो वी लाइव खोल के बैठ जाइए। हाँ ये पीसी में अपने बैकग्राउंड में खोल के बैठे रहो। फोन में खोल रखे मैंने। ठीक स्टार्ट कर दी क्या मैंने? हाँ स्ट्रीम स्टार्ट हुआ अभी, स्ट्रीम स्टार्टिंग सून ऑन है। चलो शेयर करने दो और फिर करेंगे मैडम बाजी। Yo guys, what is up? 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। Welcome to another live stream. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for joining in. I hope you guys enjoy this stream. And आज हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वाइटैलिटी। हाय निबा, हाय क्रिस्प, हाय क्रिस्प, हाय। जल्दी जल्दी लाइक करो, मैं तब तक डिस्कॉर्ड में शेयर कर देता हूँ अपने अबिसल लाउंज एंड डीबीजी वाले में, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गॉड लाइक मैचेस। जिन लोगों का रिक्वेस्ट था, आई होप वो चार्ट में आ जाए बहुत जल्द, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लेजेंडरी। पहला मैच हमने देखा, ऋषित मैंने कुछ से भी थोड़ा सा देखा, एंड उनकी ऑपिंग, ओ भाई ज़ाइवू ने क्या कुत्ता बनाया ऑप से, अपनी नंगा कर दिया ज़ाइवू ने सबको, सबकी चड्डी उतार दी भाई। कितने 36 किल्स है ना उसके? यस 36 किल्स है ज़ाइवू के, वो मैच खेल रहा है वो 36 किल्स, ओ माय गॉड भाई, एब्सोल्युटली इनसेन, क्रेजी प्लेस ब्रो। जिपनिक से क्या ही निकाला, जिपनिक से शॉट वाला क्या राउंड निकाला है भाई, पागल हो गया मैं तो। हंस भी रहा था बड़ा, हंस भी रहा था बड्डा, कमाल भाई कमाल। चलो गाइस, साउंड सही आ रही है तो बताना मेरे को चैट। That is a game we deserve between How we these doing? two I'm good, titans I'm of good, I'm good. Counter-Strike right now. Starting off on Dust 2, we go the full वाह कसम distance, भाई, but जिपनिक it's से निकाला। still an Astralis win. And zywoo pulling off 36 kills, and it still wasn't enough because the teamwork, the clutch work from Astralis was ओके just वॉचिंग better. फिर क्या बात है, एक वॉचिंग फिर क्या बात है आज तो बस भाई मैच देखेंगे साथ में। This is where आ जाओ the लेट्स एंजॉय। slightest, tiniest mistake you do is going to snowball into a round, and we can talk about zip clutches, but the 1v2 लाइक करो he जल्दी pulls से, off, शेयर which is करो अपने दोस्तों incredible. और It's absolutely क्लैन मैच incredible, करो जल्दी but it जल्दी starts off as a as fast as 5v3 for possible. vitality, so you always have to go What's up up the people, line, what's up Manthan? and you find the mistakes. माइक आ But that गया, was an amazing माइक game. कल रात को Honestly, आएगा, that was कल an रात amazing को या फिर game. कल दोपहर तक आ जाएगा। Astralis really fighting back and go. pushing against zywoo with 36 kills. That was the full force zywoo भाई right क्या there. मारा है Yeah, zywoo ने। full force zywoo, but on the other side of the coin, it wasn't ADR full उसका force सबसे from some of the server. vitality players. सबसे best And when we player come server, to this, बेचारा फिर you भी guys हार were गया। mentioning it when we were talking and watching the game, that it's the pressure बहुत moments बहुत where अच्छा Astralis खेला है don't make इन्होंने। mistakes, and we see vitality, they do. मैं तो पर्सनली Yeah, फैन हो गया भाई you could इसका। say so. I think it's more about Astralis, you really putting out the pressure towards Vitality, right, and forcing them Zipnik, into hey, making, Triple K, welcome to wouldn't the live necessarily stream. call them Grim, welcome to mistakes, the but live just forcing stream. them Sham into Negi, Death uncomfortable World, Manthan positions, Basak. which then allows to Chris, pre- welcome Zip everyone. the जल्दी device of जल्दी the से world like करो, to share करो। capitalize. We saw zywoo throughout the entire game play a fantastic Counter-Strike. We often find ourselves talking about Yo, on ये वाला Dust 2 shot as a देखना, back shot, specific back map, shot, guys, how watch this. momentum is so important, and we What? see this directly translated into the scoreline. Vitality starting out by winning 6 rounds, zywoo then ने तो ये Astralis वाला winning shot भी 7 बहुत rounds, अच्छा था, then ये वाला Vitality लिखेगा भी winning नहीं 7 बंदा। rounds, and then हल्का सा Astralis ending दिखता up है winning dead। 8 out of the last remaining 9 ये वाला rounds. तो So back shot it was था this भाई। ये वाला momentum-based back game shot that था। constantly was switching back and forth. When you have Zywoo, players like Zipnix that Zywoo। makes the clutches at the pivotal I moments, really wanted you end G2 up to winning the win. games. बहुत As Matthew close said, match a था, मजा बहुत fantastic आया। game of That is Counter-Strike, what but matters. it could easily भाई have gone पार्टी both करके ways. आया। And that's when Okay. it comes down to these clutches that अब we बता keep zywoo या mentioning. केनी, I mean, पिछली obviously बार Zip सोच had a lot समझ of के them. आंसर नहीं Majisk दिया। had a 1v3 as well. And अभी these भी are कुछ कह the नहीं सकते, tiniest zywoo of नया these खून है, margin, right? This is zywoo where नया the खून difference है, is केनी being made. पुराना खून है। And I also think that this अभी is भी why कुछ कह नहीं it's सकते। such momentum-based केनी ने भी Counter-Strike, बहुत because as मारे soon हैं as ऐसे, one बहुत। team is pulling ahead, suddenly things turn to hell. Look at this. Look at the scoreline. It was a 5v3, now a 4 क्या versus निकाला 2. यार Zipnik Zip ने is going in, वाला। gonna kill onto zywoo. Don't exactly know what's gonna happen, कमाल but then that 1v2 from Zip, honestly, he's doing the only thing he can do to win the clutch. He cannot allow them to trace up and to go towards the A side. He's just winning up, dancing up and down. He's got the AK and he adjusts. That's beautiful. But what I want to say about this round, and we didn't get to see right here, is that there were 2 clear BM entries for BM. Vitality. There was a 5 versus 3, and then Apex decided to push up the Molotov towards CT ramp, and Nivera was fighting towards A long. You could have
totally seen Apex give up CT spawn, go back towards middle, Nivera pull up towards long, and that would have been a clean zywoo fight बहुत between. पुराना They खून decided to है fight, KNES से and these are पुराना what I'm talking यार about, the देखो tiniest mistake. KNES ने अपने टाइम Well, पे those बहुत tiny किया mistakes तो are हम a lot कंपेयर of नहीं fun, but करेंगे also उनको what's a lot of fun डिसरिस्पेक्ट is हो having a गए look at some of the mic'd up moments like this. zywoo is like Mbappe and KNES is like Ronaldo. Yes bro क्या क्लच था यार Hvor er du god, mate. Du er så Jeg sværger, du lever af det der. Fokus. कह रहा फोकस ये I कुछ love होता that at हमारे the end साथ though, the focus. ये Because कुछ you do होता need to हमारे calm साथ down after an insane moment like that. Yeah, of course, but Let's you go, can see boys. how calm Siblings is in those Yeah. situations. जब भी हम He कोई doesn't इंसेन क्लच break a करते हैं sweat कुछ at आता all. भी He's फोकस the clutch फोकस minister for a reason, and he showed it once again today. Getting back to shape as well. I think that's one of the लिटरली storylines गूज़बम्स we have आए to थे talk मुझे about. हंसने लगा Coming था into वही the ना tournament, we didn't really हंसने know लगा what to था put Siblings और as of Stralis recently 5x when he game came one back. winner था He was not playing that but well, you know. There was it again still rumors didn't confirm my circulating that place. maybe they wanted to integrate Bobsky into more maps because Siblings Manthan was not तेरी going back to live the shit that they F है would भाई like F to. हो But गई देख ले this tournament so Rip. far, he's been one of the most impactful Sexy players था in भाई the क्या entire क्लच tournament. था Back to the clutching, back to the old Siblings, and if he can continue with this level of form, then there's no doubt Astralis can win this matchup. Yeah, I strongly agree. I think Zip is one अब of the overpass है guys, by the revelation way, of the tournament overpass in terms of matchup. the level he's showing. Jacob is right. When he picked up the keyboard and the mouse again, we had a little bit of doubts. He was shaky at times, but he's been true. His aim has been true throughout the tournament. And now if we're looking at Vitality for a second, a man I talked a lot about was Shocks, and unfortunately he कुछ did भी not like find the impact overconfident he नहीं needed होना on हाँ those two. Would it be कुछ because हमें of the होल्ड calls करके being रखता है made? ऐसे मतलब Sometimes कुछ he was बोलता नहीं asked to push मतलब कुछ towards the बोलता DM है side. कि Could have been calm an down impressive action, but next one of round the Astralis player was not blind. And One then thug we think gaming, about any the tip for 1v2 mobile just on gaming, the A side, my Shocks only could have tip been on the is trade, didn't hit the mark. जो भी So गेम Shocks खेलो आप unfortunately उसमें had a बेस्ट quiet लो game, and and when try you to be reach best these bro games I where can't say everyone is anything else because peaking and PC it's gamers again and the mobile details, gamers का अलग a player like community Shocks है going a So little bit quiet, that whatever made I the can difference. say will Should I give be you like guys a treat? against everyone लेकिन Oh, इतना yeah. कह सकता हूँ Yeah, जो you खेलो got उसमें another one? best We've got another grind mic that up game moment. This time Hello. it's a bit of Zip and Danny Hello. magic going on. कौन आया अभी माइक शाम आया शाम अच्छा शाम Noget dark hurtigt. Split bag hurtigt, måske. Ja, ud midt, tror jeg. Ikke noget langt. Kom og skyd igennem, kom og skyd igennem. Jeg skyder. Split benet. oh Her dark. Rammer. Sådan der. Sådan der. Perfekt. Her dark. Det er flag kort. Hvorfor ligger midt? Sindssygt, mate. Sygt har det. Andreas. Godt call, Daniel. Godt call, ja. Ja, nice. Synes jeg også. क्या नेड पड़ा था Good thing you're calling thanks for bro me. no problem Yeah, that's how brother, no invested problem. Sonic is into the game, right? Because he's Subscribe picking कर it देना, up that as is it all I happens. can Because he's say in a as pressure a YouTube situation, so streamer is for Siblings, you and he's guys. calling, you gotta मैं shoot Discord through the join smoke. करूँ नहीं gotta shoot सारे through the यहीं smoke. बैठो भाई Then he सारे says, यहीं बैठो I'm अभी। hitting, stream so पे they get बैठो सारे confirmation that they're doing a B split, and then everything falls apart for Vitality. As a coach, sometimes you can have a very, straight back where you just sit back, you observe, and then you maybe come up with some conclusions or some ideas in the freeze time. But Danny, he's a coach that's sucked into the game. He's there as it happens, helping with the communication. If a player is too pressured to be able to talk, well, now given we're in the online era, well, Danny can jump in and communicate for that player. Yes. It's super, super helpful. And ये good to कुछ see और him मेरे do it. बीच में आगे They पीछे pulled होता off रहता है a हमारे big team में। advantage for him in that round. But now पहले we're getting jam to करता था, jam overpass, पर कुछ guys. होता था। And this is where we should surely Hello, see Madan, Masuta come back in, welcome. Navera go out. But Pimp you enjoyed wins. this pick, भाई right, Pimp man? बहुत बढ़िया बंदा Yes, है I enjoyed it because I saw it coming when Astralis picked overpass against EG. A little bit in the back of my mind was Five head in thinking chat. that might be for Vitality. That might be for Vitality. They are preparing for that potential grand final, upper bracket final against Vitality. Now the truth is, I don't even know what kind of lineup Vitality are going to use. If they haven't worked on overpass, maybe who knows? Nivera is projected in the lineup. We don't know. It's going to be Masuta. We don't know yet. That's going to be the big question. Yeah, can I help you with It is Masuta. Oh, thank you He very was much. showing I the wasn't graphic on sure. the screen. I wasn't sure. My bad. I was already thinking about overpass. You really tried to save me on that one. I was trying to help you. Don't But the worry. thing about Vitality, right? It would make sense for them to start on the CT side, and I need to say it, even though they haven't really worked on overpass, they could just put up a wall. It is a possibility, and we have to be careful. Against one of the strongest T-side units in the entire world in overpass, the B hits coming in from Astralis, the A hits coming in from Astralis. I agree. When you have zywoo in your lineup, you can sort of like dedicate a part of the map to him and then build up that wall. But against Astralis, you need more than just a bit of zywoo. Yes, and that's the thing, right? We just saw this go all the rounds. We're getting the Vitality back without Navera coming into play. But this is an Astralis where they were one of the absolute best teams in the world. भाई Remember so अच्छा many खेले magic मजा आया moments मेरे on को this. Yeah, मजा I आया agree, लास्ट but तक it's अच्छा been a खेले while. zywoo ने since कुत्ता बना दिया Astralis जैसा भी had था that as one of the main picks. It's और always ठीक है been about zywoo का Nuke, बाप लग रहा always been about है Inferno as a reason. Even the Dust भाई 2 are looking सफेद good. बाल है भाई Train and Overpass, RPG के the last couple of years has always been the 4th, 5th best map, but they're slowly but surely starting to integrate Overpass into their map pool
again. And as we spoke about before coming into this matchup, Astralis do it all the time. Whenever there's a break, they update their map pool. They make sure they're one step ahead of their opponents so they can bring in a little bit of a surprise like this against Vitality. It looked good against EJ. They won convincingly. So if I'm Vitality right now, you better have practiced Overpass throughout this break. Well, let's find out if they have practiced Overpass after this break. Overpass is coming right around the corner, and Astralis have picked on into it. They're looking for a 2-0, but this is a match that deserves 3. Let's see if we get there after the break. बात सही है तेरी डेथ वर्ल्ड, बात सही है तेरी। यार वाइटैलिटी को कुत्ता बना दिया DT पे। नहीं यार, वाइटैलिटी ने भी बहुत पेला भाई, बहुत पेला, बहुत ज़्यादा पेला उन्होंने। मेरे हिसाब से वाइटैलिटी ने बहुत उससे ज़्यादा पेला उनको, और 40 से ज़्यादा वाइटैलिटी ने मारा। चेस आता है ब्रो। लेट्स गो Astralis, लेट्स गो Astralis ब्रो, लेट्स गो। मेरे हिसाब से आई एम प्रेडिक्टिंग वाइटैलिटी विल विन दिस। लॉन्ग रेंज मैप, लॉन्ग रेंज में वाइटैलिटी का एम डुअल बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो खुद बोल रहा था, कास्टर खुद बोल रहा था, उनके हाथ में अगर वो वॉक करके एम डुअल लेने जा रहे हैं तो पागल हैं वो सही में। Astralis गेम कैसी? नहीं। भाई कहाँ 5-0 था, किधर 16-14 हो गया। बहुत ज़्यादा कमबैक कर दिया यार, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मैंने अज्यूम नहीं किया था इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ एंड में कर ही देते हैं Astralis वाले कुछ ना कुछ तो। एंड में पता नहीं क्यों करते हैं, पहले नहीं खेला जाता क्या इनसे? एंड में क्यों जागते हैं लोग भाई? थंबनेल में Day 2 लिखा है ठाकुर भाई, अंदर की बात है यार ठाकुर ब्रो, अंदर की बात है। वेलकम ठाकुर, लाइक कर दे जल्दी से ब्रो। मैं क्या बोलूँ, मैं आलसी बहुत हूँ, मैं नया थंबनेल निकाला नहीं मैंने पुराना ही चल रहा है। और पास लेट्स सी कौन जीतेगा। आई थिंक सो Astralis जीत सकती है, बट मुझे वाइटैलिटी को जीतना देखना है भाई। बहुत मेहनत किया वाइटैलिटी ने, क्या स्ट्रगल किया D2 पे, मज़ा आ गया वाइटैलिटी का स्ट्रगल देख के। एंड में जिपनिक्स ऑग निकालता है भाई। Astralis वाले सारे ऑग प्लेयर हैं, सारे के सारे। इन लोगों को ऑग के अलावा और क्या आता है? M4 आती है, एक क्या आती है बस, ऑफ आती है। SMG एक भी नहीं यूज़ करता इनमें से, मैंने देखा है कोई भी SMG यूज़ नहीं करता इनमें से बॉयस। अब इस भाई खाना खा लिया मस्त भाई, पिज़्ज़ा पड़ रहा है, को दिखा दे भाई, पूरा पिज़्ज़ा खा गया मैं अपना अकेले। 40 सेकंड्स में मैच स्टार्ट होने वाला गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड होपफुली वी एंजॉय दिस मैच एंड होपफुली अच्छा मैच हो, देखने लायक मैच हो। ऐसा ना हो कि मजाक हो जाए सबके साथ, दैट वुड बी बैड। ग्लेव बस M4 चलाता है अकेले। ग्लेव अच्छा प्लेयर है ब्रो। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर zywoo, सही खेला भाई। 36 किल्स भाई, मजाक नहीं होता 36 किल्स। स्मॉल मीडियम या लार्ज? मीडियम। गिटार कब बजा रहा है यार? पता नहीं, मैंने खुद अपने काफ़ी टाइम से बजाया भी नहीं, मैंने 1 महीना हो गया लगभग। अभी कॉलेज का काम भी शुरू हो गया तो अब मन भी नहीं करता आजकल। Welcome back, ladies and gentlemen. Second map in this Ampuk series so far. First one went the full distance, all 30 maps on Dust 2, and Astralis pulled off something I just wasn't expecting. Now we've got the surprise pick of Shame on you, Anders. You're not expecting Zipnix to clutch it out 1v2 every single time when all the pressure of the world is on his shoulders? zywoo I think plus that's rep. what makes zywoo it ने so good. कुत्ता बना दिया। Every time I see it, I think to myself, no, he can't. You know, like the pressure's on. They know what he like every time, and it still happens. You know, you'd think after all these years, I would have learned something, but I guess not. But that's why I could enjoy it so much more. Every time. That's the thing. It's like you're rediscovering it every time. The joy of the zip clutch. That's what it feels like. I've got some sort of selective amnesia every time. Like, no, he's not going to win this. डिवाइस अगर हॉट हो जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ वो देखा हमने। And then it happens. It's outrageous. Absolutely outrageous. Yeah, Dupree. बंदा वैसे ही hot है वो। He was playing outrageously on Dust 2. He was. Guys, कुछ लड़के देख रहे हैं hard carry for Astralis. ग्रेम को थोड़ी गेम सेंस दे दो कोई। Again, Astralis just 150 everything रुपया coming लेगा together to just make this beautiful comeback happen. And Yeah. proceed to tilt Vitality चलो off मैच the स्टार्ट basic होने line. जा रहा है। As लेट्स soon गो as got his गाइस। work cut off for him, because he's got to try and get his teammates excited here. It's going to be डिवाइस tough का भी after फ्लैश that में one. ओपनिंग Losing in सेक्सी that था। fashion to Astralis. हाँ on your वो map, हाई and मिड now वाला you're ऑफ बहुत going अच्छा into था। हाई मिड वाला Astralis' ऑफ map बहुत अच्छा pick. था। It Let's is go, worth guys, let's mentioning go, going into let's this go. Overpass 2020, Vitality, according to HLTV, were the top team
of 2020 with 21 map wins, 71.4% win इसको rate पता नहीं on बट this प्लग्स map. इतना पसंद क्यों है आरपीके को गंजा है ना बुढ़ा है भाई बुढ़ा हमेशा हमेशा ब्लड प्लग्स ही चलाता है इतना महंगे ग्लव्स स्किन से लेता है फिर शाडो डैगर्स हाथों में माइक I just don't even know. I'm so curious. I just only have questions right now. Masuta, that's a good start. Taking down Glaive, sniping away and spotting them out there. Smoke goes up. I think Astralis really wanted to go right here. They'd already done the triple nade to try and catch someone. Now they're going to be running in and fighting Zywoo instead, and they somehow take him down. RPK hoping to catch a kill, falling back into the bomb site. So a little bit of early action and a 1-for-1 trade. Shocks though. This is dangerous. Yeah, he's going to make his way back. I don't really blame him. Oh, and they are going to try and chase as well. They are going to put that pressure, clear out connector. Oh no, still hanging around here. He's going to be close enough to hear the footsteps as well, so he knows these guys are coming for him. Got a bit of information gained here from Shoxy, but he needs to stay alive. You're seeing the rotation coming in from RPK as well. Apex is not going to be far off of that A site either. And so Vitality are adjusting to this. Shoxy with the beautiful headshot on Zip. Doing the damage, but there's Dupree to bring it back. So close, so close. Clock is running down now. 40 seconds. A little bit of health off of Dupree. That could be an issue. I'm not seeing a kid picked up at the moment. Not seeing any smokes either. Confidence, man. Shoot confidence. Important tools to have on this map if the bomb ever gets planted. So we'll see if they find some anywhere. RPK is out looking for information, and I can kind of understand that. He wants to see if anyone is out here now. If he gets caught, that's a disaster. Oh, बुड्ढे ने मार दिया guys. बुड्ढे ने He मार looked दिया. like he was looking the wrong way, and he still managed to do it. Now he's back on track at RPK. Oh, Beautiful RPK. work with the pistol, a triple kill, and he looked like he was under no stress at all. That was so smooth. Why would a tank feel stressed? I know. They're going to shoot at him They were with so pistols, but he's just going smooth. to shrug that off. BB guns out there. Like, Welcome to Lined the up the clutch. cannon, took their heads off. He looks so Achha cool and calm here, RPK. Well played on his part. Triple kill in the pistol to get things started. And so Vitality now, 3 pistols in a row against Astralis. Right. You know, Dust 2, they won both pistols, still lost the map. Here they've won the pistol on the CT side, and now we got to see what's going to come of it. Because it's Astralis. No bomb plant means a very hard eco actually coming in here from Astralis. Only Dupree going for the deagle. Dada peaks. Well, I mean, it's very early days, but for now, it's Astralis just kind of hanging back. Vitality not overextending. This is more Vitality style in terms of on Astralis और Vitality में कोई regular streamer नहीं है here as well in mid. Dupree नहीं. Going to what works. नहीं कोई regular नहीं है मतलब करते हैं बहुत सारे करते हैं but regular नहीं है नहीं कि Run boost नहीं ना? Yeah. I mean, हाँ run boost नहीं run boost नहीं वो wall के ऊपर boost लेता है angle boost लेता है. Sound आ गया था वो. Shocks को भी पता They है. did just push out of B bomb side, which, you know, when you've got SMGs versus pistols, you're going to be just feeling that's a nice little shot there. All right, but yeah, so you're going to be doing that more, but actually you can do it even in rounds where rifles versus rifles. You can still go for that aggression. And obviously the equivalent of that on the A side is pushing all the way towards the tap है यार. Apex बड़ी जल्दी tilt हो जाता है. And try and Zywoo is hot now, भाई. to Zywoo the क्या T मार side. रहा But I है. think if you fall too far back, or if you're too quick to give up some of those positions over at the A side, मैं Zywoo बोलूँगा. it's मैं a little बोलूँगा bit Zywoo. of a problem. So curious to see नहीं how अबे तो Zywoo है भी नहीं. deal with it, Vitality here. Zywoo ही है. हाँ तो वो भाई. कोई एक अरे वो एक है ना वो caster जो कल cast करा था वो Zywoo बोलता है. Curious to see if Vitality were going to go for the same kind of aggression that we saw on Dust 2. Beginning of the half, just charge Astralis, try and set the tone, and really try and catch them off guard initially. And this time it was only Zywoo up there. They weren't risking more than that. Well, look at Masuta and RPK. They've got SMG, so they don't want to be holding inside of the bomb side. I guess they're really aggressive. And that's a nice find. Device might have expected that he was going to find Zywoo out there with the scout, and instead it Shocks with really the only decent rifle that they have right now on the Vitality side. So that's a nice position, right place, right time for Shocks. I expect we're going to see that duel quite a bit. When they do go long, it tends to be Device, it tends to be Shoxy. So we'll see. 1-0 for Shoxy so far in that duel. There could be some potential comedy here if they just go straight through L-bend into the B bomb site right here, Astralis, and don't even check outside where the monster tunnel is, because then RPK and Masuta, it's not that their positions are worthless, but they're obviously going to be way less exciting. Masuta starting them walk in. He was actually making some noise. Did they hear that? Yes, it doesn't they look like did they hear that. did. Now they're on the site, and yeah, they did just completely circumvent them. Masuta is hot on their heels. Let's see if they're going to realize he could get a quick kill here. 30 seconds. Yeah, he's going to catch Glaive and nearly the bomb as well. Great job on Masuta. God. And in the middle of the chaos,
Apex coming in with a kill. That was very, very well done. It looked for a minute like they actually were about to make a horrible mistake, but I think Misuta more than made up for it. Initially, they're just going to be figuring it out. It almost feels like now these teams, they're just so patient. You know, it's like you expect 30 rounds. Let's not get too excited, Anders. There's plenty of time here, and so Glaive just needs a little bit of time to download Vitality. And so he's going to throw a jab here, a feint here, a little bit of a fake. And this is all just figuring out how Vitality are playing, because we're going to start seeing Astralis coming back into this. That's the feeling that you get, at least, as Vitality have now got 3 rounds on the board. Yeah, but this is insane. They got 3 rounds. They had 1 M4 going into the previous round. Now they've got 4 AKs and the M4 still. They just had a massive weaponry upgrade. That's a very, very important round, and it happens really early on. Some Tech 9s, early round some damage. Deagles here. Astralis looking to change the pace and be a little bit quick about it. But I actually think that's so interesting. Just again, I can't even really blame Astralis for not checking behind them, because they did just all come from that position. But I think you're right. If they had got the bomb down, that's when they would have started to look around and said, well, hold on, let's recheck everything. But it's because the timing was so good for Masuda to pick up both those kills. It made all the difference. What? Shocks. He's trapped in here. Takes 2 with him. That's actually not that bad. What's going on? Sorry, what's going on, Device? Like he's missed, a little bit slow there on the uptick. Felt like he could have managed to trade after that first kill. They weren't really timing that well. Here. 0 kills so far for Device, 0 for Zipnix. Yeah, a little bit of a slow start. We'll see. It is still really early on. And this is a map that can be fairly CT-sided, I would say. If everyone knows what they're doing, if everyone has got the right strategies for both sides. Allow me to tell you, Anders, it's 50.8% in favor of CT side. 50.8? What? Across 240 games in 2020. 240 games. Well, I will say I'd love more specific stats, because I think there are some teams that are not very good at playing this map. Trapped but that's the problem, right? I think the difference between teams that are good on this map and teams that are bad will sort of dirty up that result a little bit, if we want to get into the nitty-gritty, that's just ballpark top 30 teams across 2020. Thank you to HLTV for product. I really like these stats coming out from HLTV. I agree. At the end of the year, they kind of just honestly, if you just would have had me guess, I think I would have been quite a bit off. I think I would have assumed that it was like 60 or something. Something like that. Yeah, something like 60-40 or something along those lines. But it may be that we are also just used to Astralis, and Astralis has a 70% win rate on CT side rounds. Yeah. So if you're used to casting Astralis, well then you would tend to think that. Yeah, I think that's just what's in my head at the moment. So we're gonna find out. Let's just see. If so far it's pretty good for Vitality, and remember they are the ones that are under pressure right here. They lost the first map in a really quite a shocking and somewhat devastating fashion. उसको overcome करने के लिए ऊपर से flash फेंको और golden box ones that need to mentally recover and obviously ऊपर से flash फेंको, high flash और एक smoke आता होगा तो bank का smoke दे दो, truck और bank का smoke. It has to be. That is how you do that. या फिर Ferrari पे कर दो, so there's no other option. If I had a video card, I could play it. या फिर bait out करके shot अंदर घुसा दो अपने long वाले teammate को. क्या flash miss किया यार, अंशी राय. I need to actually see that now. Speaking of nades, he just messed that up. But, what's funny, Anders, actually looking at it across 2 maps, 70% win rate for CT rounds as well for Vitality. Yeah. So they actually just balance each other out. अबे train आ गई, अभी miss हो जाता है. Again, like Dust 2 though, and look at what we just saw in Dust 2. Well, let's see if there's going to be a chance here for a round finally for Astralis. They do have a lot of grenades, and they have some of the most incredible flashbangs on this one side. So they're setting it all up. RPK, he's forced into the fight, but saved by Sip. I think Magus was about to be in a lot of trouble. Now come the deep Molotovs, just forcing them forward. They can't really go back and hide. And zywoo's out here with the AWP, and Sip is picking up all of the kills right here. Device to take 1 as well, but Sip took 3 with him before he went into the ground. Now it's Shocks, 1 versus 3 on a bit of a flank, and the bomb is being planted, and they'll find the first one nearly for free. How do you get the other 2, though? He has a smoke and a kit. I think if he finds 1, smoking the bomb and forcing the fight is definitely in the cards. That's something that he could do, but he has to get that first one in there, and it's not going to happen. Dupree will take him down. Ranji, welcome to the live stream. Dupree heard the footstep. Shocks, 1 footstep gave him away. Astralis ने D2 कैसा निकाला भाई? क्या निकाला यार? जब तक well. So as soon as Shoxy showed himself, he was a dead man. Speaking वाली वीडियो कब आ रही है? अभी टाइम है उसका. Anders, it's so fun, talking about this, because you were mentioning that coming onto the B side earlier on T side Astralis.
B site, they just obliterate you with nades. You never see anything. Like it's you just guys and please constant go flash ahead and grenades. share. Let's watch you don't this know match which way to together. turn. No matter which way you try and turn to predict it, you're going to get blind anyway. It's a nightmare. And so there we had it right there. You know, Vitality's like, they're just blind the entire time, and Astralis are just trading behind it, relentlessly advancing onto the bomb site. They are really, really good at doing that. And, well, you saw RBK was trying to counter it by just stopping them in the monster tunnel, which, I mean, that's a pretty sensible idea, but Sip was there to catch him. Shocks, though, he's got the right idea, but Glaive slightly better with that weapon and does a little bit more damage. Shocks mar gaya 100% confirmed death I still like it. I think from Shock's point of view, shot pe pre-fire angle I love the idea of trying to go that aggressive. And if he had found Glaive, then look at where the rest of Astralis are on the minimap. They would have been really awkwardly cut off from the A side of the map, and if they just Astralis वाले बंदे को सिर्फ एक एंगल पकड़ के बैठना था. Shocks को 4 एंगल पे ध्यान देना था, तो attention नहीं दे पाया. We're going to need some more of that aggression out of Shock's. We'll see if it pans out for him, as this is going to be the push once again. अब ठीक है, अब मेरी आवाज better है ना, ठीक है. As well, instantly removed. And it's zywoo and Apex, and they have severely tapped into that bank. नहीं save करेंगे, most probably save करेंगे. This half Vitality, they've got to back off and save these guns. They just don't have any money left in the bank. Most probably save रहेगा, yes. And so should be a save. Live के हाथ में op है भाई. Here on this T side, most back-to-back B side hits. Weapon and the right beauty now of it is because they're finding success with these गया. B side hits early. That's zywoo dead. Do we lose Apex? इसको op लानी पड़ेगी no matter what भाई. He needs to be in a position to save that AWP if he has a chance. Yeah, definitely interested in it. He already knows. That's going to be so hard to do now, though. Oh no, अब खत्म है game खत्म. Out on long as well. G2 कल जीता था. नहीं, Astralis जीता था. G2 रह गया. Sonic right now are working together to just prepare Vitality, right? They're just setting Vitality up to focus on the B site and to have to play honest on B and invest resources early on B because they've been successful now hitting it twice. And so as soon as things start to go awry on the B side for Glaive, boom, just flip over to A, and that's when you decide to flip that switch and hit the other site, and you're going to catch Vitality out of position. This is what the conditioning that Glaive and Zonic are trying to put on Vitality right now. Yeah, it's true. And it's actually, I think, a pattern that we've seen before on this map where I would say the default type setup for the B-bomb side is having 3 people there and having the other 2 play the other way. Oh, short Apex, yeah. Short Apex. Taking down Device. Now, they're going to be caught here running back, so I'm not sure they're quite ready for it, and they should be caught. I have no idea how they're not both dead at the moment. zywoo getting a headshot as well. The scout is out there. This is not clean at all. zywoo's actually running for them. He wants to see if he can catch anyone else. That is, well... Magus shows up. Don't bully my in-game leader! I'm here to help. Navi का किसके साथ है? Navi का I think अब Liquid के साथ है कल probably. Liquid Kenius अपना जलवा नहीं दिखाने पा रहे. दोनों star players वही थे भाई. बाकी कोई इतना खास नहीं Just because it could be that hard to hold. I mean, against Astralis or anyone else, it's something that happens a lot. So I'm interested to see how it'll play out if that starts to be the default for Vitality. Just doing that. All right. Device giving credit where credit is due in the chat right now. Just letting letting zywoo know that those USB headshots were crispy. WTF, man. zywoo just laughing. Why not? Why not? 38 seconds. Shot. Oh! Shock. Basically stuck the gun right in his mouth. The Glaive is gone. 30 seconds. bro. And now it's just USPs. No more scouts or deagles left. Yeah, we're going to have to see a lot more of those sneaky taps for this to work out. He was a little bit too close for comfort there, and RBK might be as well. He's already been spotted. The time is low, but they should just be able to overpower him here. Like करवा दो, share कर दो boys and girls. Let's go. But that one was, I don't know, very uncomfortable. Expensive. Yeah. You can put it that way. Expensive. And also, I mean, that is Facts, gonna, bro. That Expensive. Coffee महंगा round है. If I was taking your head off with a USP, just double tap headshots. Go Astralis. You know, maybe gonna worm a little bit into Device, who has started to wake up. मुझे नहीं पता क्या हुआ यार वो. G2 का अब कब मैच है? I don't know, brother. I don't know. But he had a little bit of a cold start to the half. दो बंदे कैसे मर गए पता है? भाई तो मैं देख रहा था क्या हो क्या रहा है भाई? इतना simple round था दो लोग कैसे मर गए? Just charging connector as well. So. मरने नहीं अबे भाई. Rather than hang around here, which isn't Vitality's style, they fall back to a setup that is more. मैं आ गई हूँ अब जीतने वाले साले. हाँ तेरी बात ही तो सुन रहे हो लोग. तेरे तो कॉल आउट सुन रहे हो लोग. Working together, and then the rest of the team focused on the B site. This is bread and butter for Vitality, and now Astralis. We'll see if they can figure that out. Navan Pokhriyal, let's see. Last match Astralis जीती between Apex and RPK. Last round, I mean, last best of one वाला. In the sense that last best of 3 में पहला D2 Astralis जीती थी. Let's see if they win this. And it's going to be fine,
or it doesn't, and then you leave I think Misuta alone in a position, and he's probably going to get wrecked in because again, Liquid versus Navi there's so है, many but grenades इसके and बाद है everything नहीं है else. I वो don't know नहीं if पता. Misuta has got a, well, technically he has a flashbang, but he's not the one setting it up at the minute. And now they've actually fallen back from that position. Glaive is out here checking to make sure that there's no one hanging out, because again, if Vitality was pushed up this far, especially into connector, suddenly they would know what was coming. RPK deep in the corner, he's got no backup here. This is a really big issue. The orb is going to fall down, and Apex, he's in an interesting position. He could go for a bit of a flank. I don't know if they heard that, but Glaive is about to show up. Oh, Apex, he's got them lined up. He's going to get the one kill, but he's about to be shot in the back himself. And Sip takes down Misuta. So in spite of that, it's still going to be a 2-on-3 bomb. It should be planted here. Let's see. Like कर दो guys, जल्दी से go ahead and share. क्या flank पे flank हो रहा है भाई? एक बंदे के पीछे flank, उसके पीछे एक और flank. क्या मजाक चल रहा है क्या? Well, device is going to be able to post up on the site. Ans, welcome to the live stream, brother. Nades here for Vitality to ruin him. Zipnix, come on, yaar. Nice, Zipnix. Yeah, and he just got Molotov. अगर ये मर away, जाता ना, that would have been a bad fight. scene. Shox was not expecting that position. Thought they were going to be at the barrels instead, and the AWP has got to be saved. So Astralis will just win another round. कब तक top This is पे very रहेगी? impressive. कोई I और think team we're को view पर आने starting दो. to see Astralis खेलता just बहुत how अच्छा है. confident they are. Again, especially Liquid in Navi that इसके B बाद है. execute. Okay. And it's a bit of a shame because I would have loved to have seen what would have happened if the RPK and Apex set up down there, the Monster Tunnel had stuck there. If they had stayed in that position, could they have actually shut it all down? That would have been so much fun to see. Zonic को मैंने बोला कोच करने मेरे को इंडिया आना था वापस damn यार what damn I'm also bro wondering is whether or not this is Glaive just downloading Vitality and figuring it out, or if देख उसको flank दिया अब इसको शॉक से उसको flank दे रहा है कोई मजाक चल रहा है यार what the Vice does on CT flank side flank खेल रहे हैं get up लोग into the birthday party, इंसेक्शन चल रहा है क्या जैसे सपने में सब flank पे flank दे रहे if हैं you're there as Shoxy and Zywoo, if you're there getting that kind of info from instead of trigger हो रखा है trigger हो रखा है गंदे वाला trigger हो रखा है you're going to see nobody's there. You're like, okay, this is going to allow for that defense to remain solid on the B site. But instead, I think if Hagrid है भाई जी Hagrid Harry Potter वाला and it just doesn't work for them. भाई comeback हो रहा Now we're है going to have to see what kind of adjustments they decide to do. Are they going to try and have more presence in mid? Are they going to try and hang around more in connector and bring the game there? Because right now, Astralis, this is all just feel good for Astralis. मैं try करूँगा मैं अगर नींद आ गई तो मुझे जाना पड़ेगा. Having taken 4 rounds in a row on the T side, money is starting to build up for him. It's looking good. This is a very difficult position for the Frenchmen to find themselves in. क्यों It most certainly is. We haven't even got to the quad boost yet, Samla. True. We can still get those. And that is where the fun अभी boost नहीं किया इन्होंने अभी boost करेंगे तो मजा आएगा. 4-man stack at the B bomb site, but they only have pistols and a saved AWP on zywoo. I don't mind any of the thing, it's just fine. Not Just ready protect to the breathe, AWP no oh, matter what, one tap लग जाता ना, cross your fingers and hope for some crazy deal shots to Like come कर out. दो guys जल्दी से, come on. Give anything away to Astralis. Increase likes, let's go. For now. So they're going to have to play it. Dupree, you can see, is kind of just hanging around here once that smoke is up. So take a look at how Astralis is set up right now. With Device in the playground, he was looking for anyone long. Glaive and Dupree are taking over. So if Vitality want to go a bit aggressive, like we were talking about in the previous round, which I completely agree with, that would at least, it would help to solve the lack of information that they have about what's happening outside of B. बहुत but you passive can see खेल रहे हैं भाई, Astralis बहुत actually passive. have a protocol, at least in some of these rounds. Oh, no way does he hit that shot. Glaive catches him mid-air. Yeah, jumping up. He should have been dead. Even if they maybe could have got the all back. That's wild. क्या था भाई वो? एक बार replay दिखाना जरा. एक बार replay दिखाओ जरा. Is so nuts. Well, they actually get an AK out of it as well. And Astralis decide, at least for the minute, start to go back towards the B bomb side a bit. Zipper's got the bomb back there. I don't like this. I think 35 seconds. Are you playing the same game? You know, when you're playing against Zywoo and he hits shots like that? He's definitely not. Oh! 29 seconds. The bomb is only now being picked up by Sip. Now, fair play if they can just clean out the bomb side. It's fine. It looks like that's what they are doing. Plant I still don't like this. I'm not a big fan. Misuta could catch the bomb on Sip running up. In the 17 seconds, they must hear the stepping, but they're not reacting in time. Oh! They just let him slip past. Baap If hone they wala had hai. taken a Let's see, step bro. up Let's and see. shot him in the face, who knows what could have happened. 7 seconds left here. Ball And back. Zywoo, yeah, he's Oh, hoping come that on. planting was Oh! the regular side, but towards the bank, and that wasn't the case. Oh, that's so unfortunate, Andy's right. Oh, they are going to line up, though, and there is a nice shot from Misuta with the headshot, but RPK goes down. We should be losing Misuta shortly here as well, though Misuta's got an AK. He's got something to hold on to now. Yeah. Could back out, yep, and he is going to back out and try and save that gun, but that's just the, the way ये things बस work in cartoon की तरह competition. लग रहा है. Sometimes, it's just a split second What one did way. he found on split second Zywoo's the other. mind? भाई क्या मार रहा था वो ball पे? You may have been watching Dupree that ने round मेरा and just Insta thinking, status well, देखा था. whatever, Wow. it's just Wow. taking it slow. Wow. But
That was Dupree is a three simp now, steps yeah, away from Dupree is a Masuta simp. just standing. You could see Sip wasn't even really अभी there किसको for it. He was सपोर्ट just कर in रहा है full साले सब वाइटालिटी run मैं mode at that वाइटालिटी point को in सपोर्ट time. कर रहा हूँ So, हमेशा नव्या के ऑपोजिट होता हूँ मैं हमेशा 5 जो नव्या यूज rounds करेगा इसके now ऑपोजिट for होता है Astralis. 5 in a row as well. This is very, हाँ, very भर impressive. के They're भाई। doing a remarkable job, and in terms of this being their sort of surprise pick into this best of 3, I mean, no one is questioning that right now. Even if the beginning was really good Vitality, the fact that they've come back and done this, you think, all right, there's a definite game plan here. Well, I mean, okay, do we want to meme a little bit? Because, I mean, out of the last 4 times Astralis have played Overpass, they've won all of them. 100%. 70% win rate on CT side. Come on, Astralis, come on, vitality. अच्छा गेम दिखाओ थोड़ा यार. So good. बच्चों की तरह MM खेल रहे हैं अभी ये लोग. And so, add to that a little bit of a break. We got a bit of a taster from EG. ये मैप के बाद हम भी खेले. You know, Astralis अगर ये Astralis जीतते हैं तो खेलते हैं. Like Pimp said on the desk, right? Revivify their map pool and just have that little bit of an edge over Vitality. They knew this was coming. They knew they would have to fight Vitality in this kind of situation. And any edge you can get. Oh, बुड्ढे. अबे बुड्ढे. मेजस ने चेक कर लिया. बुड्ढे ने मिस कर दिया. मेजस ने चेक कर लिया. Oh, Masuta. Picking up Megas, get come the on. pre. They must have lined up. I'm going to have to see that replay. 2 versus 3 now. Glaive and Device. They are on that ledge waiting, but Vitality Good are flash. here. They know the bomb is Shots. there, and they're going to Nice. be able to shut it all down. Nice. Finally winning a round and tying up the scoreline at 5-5. दुपरी एक बार स्ट्रीम पे पैंट में हाथ डालते हुए दिखा था. हाँ, वो स्ट्रीम पे नहीं था, वो मैच के बाद था, वो इंटरव्यू में. अरे कितना का लग रहा है. Every man has his needs. That is brutal. Yeah, just lined up. That's what, like Flash अच्छा था. maybe 3 Blind पे bullets. दोनों. आरपीके ने हक दिया भाई, खड़ा बंदा नहीं मारा यार ने. Right. It's time for दादा पीक से रिटायर. भाई कोई इसको उठा के उम्र हो गई भाई. उठा ले यार. लाइक कर दे guys if you are new to the stream. Let's get. भाई लेकिन जब मारता है ना, जब वो मारता है तब ज़ाइवू को भी कैरी करता है वो. एक बात है उसकी. Like rubbing his hands together, like, oh cool, gonna get in on that map too, aren't I? You know, just I mean, I wonder what it would have been like for him to. Obviously, he's been sitting in the room with them, so maybe his Apex का BP high हो गया. Apex भाई रेज कर रहा है Apex. But otherwise, भर के like रेज कर रहा है that, Apex. Speaking of memes, that guy with the pizza walking back in the room and Chat. everything is on fire. yeah, for him, he's just been sitting outside. He's usually like, hey guys. लोग खेलते खेलते एक्सपीरियंस होते हैं. मैं देखते देखते एक्सपीरियंस होता हूँ. अबे भाई मैटर करता है. Why not? मैंने भी देख देख के एक्सपीरियंस किया ना That's what he's खेल bringing to the खेल table. And if he के. gets तो shots वैसे भी like that, अच्छा field goal खेलता है. frags, एक्सपीरियंस where, का you know, क्या काम lines दे up and he's like, cool, awesome, great. There's a key Decent, round guys, that huh? actually ends the 5-round streak of Astralis based off of his play. Awesome. And for a young player as well, I mean, 18 years old, just turned 18, showing what he's Good flash, capable good of, and volley. actually showing the new generation. वो best of anchor है. coming up. कौन best Super anchor है? good. Apex का Only भी wish the हो best for गया. him, obviously. Ooh, nice nade though. कितना डैमेज हुआ? वो भाई 62 HP पे आ गया. Get them a little bit lower. Allow करिए उसका मैसेज काइडो. That all एक सेकंड मेरा counts. स्ट्रीम बंद है. मैगी खा. Counts more than people sometimes think about. Oh, टैग दिया. 43 47 डाउन हुआ. Even what they have here. Zywoo बहुत 18 important kill है damage or इनके लिए something like guys. that to make it suddenly means the M4 is a one-shot headshot instead of it being different. That's quick from Dupree, turning for the flashbang and then turning back again to pick up Masuta. But there was a return kill, so it's still 4-on-4. And that was a stack. I don't know if that's enough to tell Vitality, however. Or tell Astralis, rather, that Vitality were stacking B. Because there were 4 players. There are 4 players. 3 players still. Wow, and there's bhai, the boost. wow, Beautiful bhai. work. The flash setup from Wow. Zywoo. The man can do it all, Anders. He can even throw flash grenades for his teammates. Yeah, he's not just a solo player either. You're right. All right, up here at the bomb side though, Apex and Shox are in good positions. This rotation is very, very just well done from Vitality. I think this is a round where they finally have a very good read on what Astralis are doing, and it shows on where people have shown up. Glaive and Sip though, I can't believe they're winning the fight even to the extent that they were here. The Molotov nearly taking down RPK at the end. अरे मार दे. Glaive, बुड्ढे he's का not तो able मार to देता land the shot. यार. That actually could have been a nightmare. They could have even almost walked into that, but Vitality pick it up 6-5 now. And I mean, no bomb plant. They're not going to be able to buy here on the Astralis side. How unfortunate there for Glaive that he's not hitting 1 bullet on RPK in that situation. So doesn't go their way. And that is actually, I mean, that could have been even more brutal because Vitality stacked 4 on B. They were done with the shenanigans from Astralis over there. They were ready to just slam them. And while it works out that way for them, it actually pans out. And so now they can go back to having more of a presence in mid and changing up their game. And speaking of changing up their game, now they've got Zywoo Restroom. Apex is pushing long for Vitality. This is big. Anti-eco stomp. This is what Vitality are looking for. They want to pour on the pressure. Apex takes Megaskin. That's big. Oh, deleted. 1 dig. What? Not interested. Whatever. No, Glaive is the number 1 player in the world. You can't do that. Time there to get the spray down. Apex is actually kind of on a
on his own out here, which is really Oh, uncomfortable. अबे miss कर दिया. He's right Apex. behind him, and I don't think any of them know. Apex this ने is miss कर so दिया. awkward. Apex could get away with this. He could just walk on back to the bomb site, and no one will ever know that he was out here. Indeed. Wow. भाई मैच में हो रहा है. Again, if he gets caught, ये not match only में will हो they रहा have है the guys. open device, but they'll suddenly have the M4 as well, and it's, it'll be a 3-on-3. मेरे साथ हुआ है भाई एक बार. Who knows Oh, what jump happens at that spot हो point in गया. time. Now, you got the AWP here. Surely you go for a boost. Good night, Triple boost Crispy. into the Thank you bomb for site, coming. bring Sip over. They're not doing it. RPK One dig deleted. भाई क्या है ये? आगे पीछे रंगोली बना रहे हैं guys ये तो. However, RPK and APX playing on A, but they've still got Misuda and Shoxy Oh, playing Shox, B. Zip is Shox. gonna spot this? Did he spot this? I don't think he was close. I don't think he was close enough. I don't think he saw it. Shocks. Nice shocks. One more. Don't panic, Shocks. And that does a bunch of different things. Guys, Shox, Not वहाँ only से getting चला the kill, गया obviously, there's only 35 seconds, but Is this matchmaking? it also just alerts the vitality Wow, side that guys, they wow. were coming this way. We kind of know what's happening now, and they're already rotating people down here. RPK is getting Shocks, closer. why I think Shocks? They've pretty much been red. Nice Shocks, nice. Attempt at a flick from device, Woo! but he doesn't really make it work. So Apex 7 to Secret 5 Silver now. Award. Is this matchmaking? Vitality Guys, like getting and sub if 3 you're in new. a Come on, row 20 and people getting watching. Come on, themselves, I think, even subscribe just and mentally like. a little bit back in the game. This is really great news for the French side. I think this is very, very important. ये शॉट अच्छा था, ये बहुत अच्छा शॉट था. Let's see if लेकिन Astralis ये though. I mean, ग्लेव we've ने क्या already been मारा? praising them for the 5-round win streak that they were on here and how good it looked and how well prepared they were. But you know, now that they've been popped on the nose themselves, maybe. हाँ बुड्ढा बुड्ढे में देख pick it up रहे again. हैं. आरबी के बुड्ढा सिल्वर भाई सिल्वर बाल भाई. Now, just take that fight. They need to be acknowledging that Vitality are going to start trying to Oh, play भाई. They need to just run into this head on. and One smash damage it हुआ down. भाई, one damage zywoo guys. is now posted up along with Shoxy in mid. This is one of this Shocks is more क्या है Vitality भाई style, तू but क्या now चीज zywoo क्या है? is gonna शॉक्स catch कितनी Device. जल्दी रोटेट मार रहा है. No, Device was Zywoo. ready for him. They saw it coming. Astralis ready for that aggression. Perfect punish. Man advantage now for Astralis. Shoxy's going to be pushed up in a one and done sort of Shocks के scenario kill है, as दो well. kill He's है got भाई no Shocks way के. out unless he gets help from his teammates. Apex has a flashbang here for sure. Nice. But they're Back not मार, gonna back throw मार, it. back. That's interesting. Dash Yeah, कर ले, dash delayed. कर ले. They Dash wanted to मार. try अबे that on नहीं, the नहीं, other नहीं. side. अबे Right, उसे Clay check was ही नहीं किया setting Glaive up ने. the flash for Device to go and take the fight, and Misuta coming in to take down Meg is just continue to fight here. I'm really shocked that Vitality are winning this fight in such a fashion because actually Astralis were in a very strong position out here. क्या कह रहे हैं? जीतेगी तो Astralis ही D2 में भी अच्छा कमबैक कर रहा है. हमेशा कमबैक कर जाते हैं लोग. In these sorts of weird situations, trading. जल्दी सब्सक्राइब यार 1K से trading rate right now so far from Astralis. It's not fantastic. बोर to see होता these है duels, इसके they're all मतलब spread out and ये they're just तुम getting लोग bopped. हारो और Astralis come on. Weird to see Glaive. ए वो Device ठुड्डी not वाले को play नहीं खिला रहे भी normal. इस बार. स्विच कर दिया शायद. हाँ ठुड्डी वाले को स्विच कर दिया. What really was confusing to me is that Device as he came up to the corner, he ran the whole way. ओह नेड है भाई. बट डैमेज नहीं And हुआ. they would have had the top. Wow, Zipnix. एक और क्लच. Left god है भाई ये तो. एक और क्लच Wait a Zipnix. second. 20 seconds. नहीं यार नहीं हो पाएगा. 20 seconds. He's running back, so if he's really lucky here, he could just get the bomb plant down. नहीं हो पाएगा How नहीं. does he अबे प्लांट की escape? बात नहीं He's है. gonna smoke up the high ground. They don't have any HEs or anything, so this could get a अबे bit वो आए weird. नहीं Yeah, नीचे. just go straight for the plant. 5 seconds. He's at least gonna get that, but they're coming for him. And this, I mean, you could. What? What? One more shot and नहीं. RPK's on the other side. Oh my Really god. goes down. But that was a 1 versus 4. अगर वो ले लेता I ना. mean, almost. भाई someone almost ban win. this guy. What? It's so disgusting. He's so good. Yeah, man. Zip is just. शक्ल देख भाई इसकी. एक्सप्रेशन ही नहीं है भाई बंदे में. Dude, and these are the scenarios What? where he just goes up an extra few percentage points in 1vx situations. If he just gets to focus on his own game, this is what he's capable भाई of. क्या मार. कुछ नहीं दिखा भाई इसको. His reaction says it all. A little bit of a grin there from Zip as well. I don't think. ओ भाई Shots माउंटेन are ड्यू starting पी to रहा है feel भाई. too माउंटेन ड्यू stressed पी रहा है. out हैकर है just भाई yet. ये बंदा. But क्या he's ये? had rounds, more vitality on the क्या CT ये side. guys? What But is keep in this, mind, bro? Astralis, even before Flasha को coming into बदनाम है भाई. whatever Flasha तो changes यूं ही they've made, बदनाम है. Astralis had a 70% win rate on CT. Their CT side is super solid as well, and they still have a couple of rounds to work with in this half. If they can get up to RP क्या 9-6 would or do? 8-7 at the half, Apex भाई Apex ऐसे बैठ रहा है. सहमा हुआ है Apex तो guys. Apex सहम गया guys. सहम गया I think Apex. a 6th round. I think if अगर ये it's क्लच हो जाता ना तो 10-5, shame on Zywoo के बाल vitality. अभी तक नहीं है. Zywoo के बाल अभी तक नहीं है. ज़ाइवू के बाल अभी तक नहीं आए. हाँ गंजा है वो. Pretty damn good job if they could get up to 10 rounds गंजा here. गंजा. I'm still really confused about Device running up to that Aim long bot, why not? because
क्या if there था is ये? someone क्या out था there ये clutch? and they'll hear you stepping and player in the world they by can, like you're giving them, rather than it being just a random timing for them to throw the grenade, you're actually telling them, yeah, I'm right here, so they can just call it in from the CT spawn. अबे bait कर दिया ज़ाइवू को. But otherwise, back into the B bomb side. Meg is pushing through the smoke. RPK ने बालों में क्या लगा रखा है? सफेदी bro, बुढ़ापा लगा रखा है. Someone will forget about that and टुड्डी वाला कौन? रिवेरा. हाँ भाई. See, yeah. Nivera. In a little bit early, they know that he's here now. He's still sticking around. Normally, if you fail that attempt, you probably will fall back. And he's going to get overpowered by RPK. He's very, very insistent on trying to get that kill. No trade for Astralis. Device, it's a beautiful headshot on RPK though. He's back to a 4-on-4. So luckily for them, they're able to make that work. But now Shoxy, the heavy hitter for Vitality, is rotated onto the site. He's going to be ready for this. Waiting right around the corner. Combine them up, and here it is, the slaughter. Shoxy, what a beast. Dude, Shoxy's at 18 kills. Yeah, he's gone way above and beyond. To put in perspective, I mean, zywoo ये वाला मैच अच्छा खेल रहा है, पिछले वाला चूते की तरह खेल रहा है. बहुत फट गई थी. अभी भी पीक नहीं लिया इसने, इतना टाइम बाद जाके पीक लिया भाई. ओ भाई. अगर टेबल को ही धक्का मार दिया. And they saw when Megas went for that fight, he saw two. लो अभी से नव्या का नाम लेता था, मुझे लगता नव्या बोल रहा है. नहीं भाई तो confusion. Just checked it. They did not, and it cost them the round. So I think they're telegraphing it a bit too much. Like Vitality are starting to get the read on them. If Astralis just want to keep hitting B side over and over again, Vitality are obliging them by stacking it. Shoxy and Device though about to face off. Must win fight for Device. Absolutely critical that he survives that. Man advantage now for Astralis, and they don't have any more smokes. They have 2 flashes and a Molotov, Anders. It's not a lot to work with, is it? Bye. And बजा रहा है भाई वो, उसको मतलब ही नहीं. It's good that he won that fight, but again, he was running up to इसको that मतलब ही fight. नहीं भाई, He's making so much noise. I'm just not sure that is the best idea. From Vitality's point of view, Jai Mata Di, let's rock Astralis. Hello Blast Premier, hello everybody. Hello. That should give them a decent Jai shot. Shri Allah, Astralis. Astralis. Take a kill, and he's trying to fall back. He's nearly getting caught. Oh. Take RPK instead. अभी double kill होता यार. Zywoo, come on Zywoo, come on. Now actually could be a little bit tricky. Come on Zywoo, come on. Well, so nice shot. Continue to fight, even low on health. निकाल दो और. अरे. Up on the sniper spot. It's Apex doing his best to help out, but they do have him pinned down up here and out in the open. He's going to fall to the tree at the end. It will be 6 rounds in the first half in favor of Astralis, but 9 to Vitality, and I think that is still pretty impressive for the French side. They need to win this map. They have to win it, or they're going to get well, not to the grand final straight away at the very least. Buddha. Hagrid. Hagrid, bro, Hagrid. You're a lizard, Harry. Bro, these guys are fucking sweating, man. It's too early, dude. Let's go Astralis, let's go Vitality. Come on bro, come on. Vitality, do something. No, I'm kidding, let's go. Babushka. ज़ाइवू को देख रहे, चेहरे पे हंसी देख रहे, हंसी देख रहे चेहरे पे लड़के की. लॉल यार मुझे ज़ोनिक मुझे लगता है क्या? लॉल यार मुझे ज़ोनिक मुल्ला लगता है क्या पा? हैग्रिड को बोल फ्लफी को खाना खिलाए. पूल पार्टी या पूल डे. अबे आज तेरे सामने मामा आया था ना? हाँ मामा उस माँ की. अच्छा खेलता है भाई वो बहुत. भाई उसको क्या अल्टी मारा मैंने, ट्रिगर कर दिया. ये मैप इतना फन था ना, क्या बताऊँ मैं. सारी यादें हमारे सामने एक बार मामा और स्ट्रिक्स आए थे. बहुत अच्छा खेला है. क्या अबे सर गलत प्रेडिक्शन देते हो. नावी कैरी के बिना जीते. मैंने कब प्रेडिक्शन दिया भाई? नावी कहते के बिना कब जीते मेरे? सिंपल वांट्स टू नो योर लोकेशन. अभी क्या अभी? नाइस. मैं कह रहा था सिंपल वांट्स टू नो योर लोकेशन अभी क्या अभी. तूने मेरी बात चुरा ली, लेकिन ठीक है. इसे हैग्रिड ने G2 में हॉगवर्ट्स, इसी हैग्रिड ने G2 के हॉगवर्ट्स में आग लगाई थी, भूल गया. भाई मोटा भाई. हैग्रिड नहीं है वो, गुजराती में बोले तो मोटा भाई है. मैंने वेलकम टू द क्लच पिन ले ली. क्या बात है मेरे.
पैसे की कमी थोड़ी ना है। हैक्स ब्रो उनको बताना नहीं है ठीक है कहाँ रहता है। बंदा सीरियल किलर लग रहा है यहाँ पर सीरियल किलर लग रहा है। मतलब बार्निश सिम्पसन की तरह दिखता है मेरे मदर। पागल है क्या? पागल है क्या? मैं अच्छे से नहीं देखता लड़कों को भाई। तो मार चुदा मत देख। सिंपल अभी वॉडका पी के तुझे चप्पल पीक देगा। ओके ओ भाई Bro, these guys are fucking sweating, man. It's too early, dude. नहीं हो पा रहा डायरेक्ट। Zipnix is equal to cold blooded killer. Zipnix is equal to bro murderer. मलन के पास पैसे की कमी थोड़ी है। एग्जैक्टली आई गेस सिंपल पे सिंप करने से पहले ही सो जाऊंगी। क्या बात है भैया क्या बात। Leading into the second half, the score is 9-6 in favor of Vitality, which I think is a pretty damn fine. Picked by Astralis, and they look मेरी मम्मी ने बोला गेम नहीं खेलना। I don't think everything went according to plan. They had that great sort of win मेरे streak पापा in ने the बोला middle गेम of खेलेगा the तो first पीछे half. तोड़ They दूंगा। went 5 in a row, and at that point it looked like they were about to sweep them away and just completely just leave them behind. But that didn't actually work out that way. Vitality came back into it. Shots playing very well. So I don't know. I hope we see a really badly want the third map here. Inferno would be amazing between these two teams, no doubt about it. But I mean, it's almost as if it's written in the contract where these guys, if you win one round, you have to proceed to win the next 4 to 5 rounds. Or you give it back, right? You give the ball back so they can play a bit. But we're into the pistol immediately here, no time wasted at all. And Vitality, still a smoke on Misuta. These guys are not going to let a bomb plan happen. Well, that is the plan at least. See how long that plan is actually going to be working out. ये ठुड्डी वाला स्क्रिप्ट का भाई है बेसो बाप रे सही में। ओह मरा। अरे मिसूटा भी गया। Finding out there are a lot of people in here, and I'm in. He's going to get one. There's no need to call back up. Bomb is now मुझे तो लग रहा है भाई वापस स्ट्रीम स्नाइप कर रहे हैं वाइटैलिटी। गाइस 69 हो रहा है वाइटैलिटी जीतेगी टेररिस्ट साइड जीत के। I don't know, this is very awkward. Zywoo has a P250. He could do some damage. Shox is going to get run down. Oh, भाई वो सामने ना Dupree in the back of the head, but that only gets them so far. 40 seconds. The bomb is still miles away. He's a robot. भाई सामने ना ऑस्ट्रेलिया है ठीक है। Yeah, but he's got वो कमबैक किंग है। सही बात। अबे उन्होंने हर मैच कमबैक किया यार। all day long. Big thing here is that that's a strong. क्या मारा भाई ने? You're right. कैसे कूद के जा रहा था मुझे तक। कुत्ता बना दिया। On the Burlington borders. Now we get to see what they're capable of here. मेरे को मिड डे स्कीम में के बारे में बताओ। Vitality. It's funny, they have identical win rates in terms of CT talk rounds about my on one this map. faps. So Vitality 70%. This is God, 70%. So now we have to see. They've got the pistol. Are they going to be able to start chaining rounds together? And they should be able to. Already a little bit of a change in approach though. Device down on the B side, not floating mid, not floating long, as is characteristic. But we do have Zipnix and Dupree playing close connectors, so this is really just aggressive from Astralis, and it's a different strategy. And Dupree is surely going to keep going. He's so far in, just at this point, just climb up the ladder and try and see if he can flank them. Sip is going to get some confirmation. Don't really have to fight here, even if you might actually lose the bomb site, which is possible at this point in time. Oh no, Magic is gonna die. You can sort of join up with Molly! That's a very, very good wow, throwing perfect time, Magus. I mean, not necessarily mechanically, but just the भाई वो क्या smile देता है यार, कातिल smile otherwise bro. he might have been run over. Sees another one, and yeah, he knows what is up, but this flashbang coming in will absolutely tear him apart. Magus going down, so that is the A bomb side lost, and the bomb should be planted here. Dupree on a flank from long, but it's happening maybe a little bit late, and they already were falling back. This is a disaster. Misuta will pick up Dupree, and now it's a 5-1. Oh Misuta! Oh Misuta! Oh Misuta! The next Sip is out here hiding in pretty much plain sight. He'll only get the one kill, and I'm not sure that's enough. Glaive, he gets traded right away. Now it's a 1 versus 3 for Sip, and even his internal logic will tell him that it's not worth going for. He's going to get found, and Vitality, that's a massive round to win. Losing the first pistol round in the series, and this is the comeback that they have. Short, It's just going long
where you wouldn't necessarily expect them to be. Astralis are setting up for close quarters combat. Where they would think the fight is going to happen because Vitality are on pistols, and so Vitality are probably going to want to be closer to you and take those fights up. So they're going connector, they're going B. Vitality are one step ahead though. They're like, we're going to go long. भाई अभी मेरे को बता Navi versus Vitality कौन जीतेगा? You're going to have rifles, you're going to have the advantage. That's where we'll go. And it just works out. Sibling है मेरा, okay. Astralis just got gamed. Back मार ले device, back मार ले अभी भी time है. Vitality up on 10 rounds. Oh, पीछे चले और अभी भी time है. How aggressive Vitality would be actually flashing their way into the A bomb site, because they must have been thinking this is sort of a trap. You know, you may be right outside of the A bomb site, but we've got Dupree and Sip who are, you know, pretty close to flanking you. Yeah. We just need you to be out there for another 5 seconds, and it's all good. But they weren't. Good molly, good molly. That killed, because as soon as they get in there, he saw him. They turn around, and now Dupree's He's tagged by B's HP Dupree. They're just running straight into him. Come on. Well, now, I mean, once again, back over to long, where they have, again, you know, the rifles. Misuter ने जाने दिया उसको अंदर. Astralis peek them. You can see they get punished. Dupree getting tagged with that scout. Oh no! Oh no! Close, however, in restrooms with the dig. Oh no! RPK gonna pick up the first. Woo! Flash. They are just gonna go back out of there. Flash दिया flash. Yeah, a little bit scary. Could have been a quick double there. RPK. Oh, bye. Controlling the spray at a very long range with the Mac 10. That's all fine. Oh, Dupree he missed him. out here sniping away. So a bit अरे of a वापस क्यों जा रहा है? competitive round right now. 30 seconds. They are still hanging out. I think they're just waiting to throw all of the smokes that they need to, and then they're going to try and go for this A site. So should be fine. Eagle not connecting there. More grenades, and I think, yeah, the grenades are really, I think, the basis for which they can try and win this my round. God, zywoo. Jumping through. And Zywoo now it's God all award. down. God, Now they've got it bro, under control. I like seeing that. There पर could have वो been a भाई moment there की where they तरह could have एक panicked and वन said, टैप "Oh, no, एक let's ही run वन back टैप to नहीं B, मारता you ऑफ know, चलाता है. this is too Oh, dangerous." okay. Or just try to fight too much against the Deagles. I like the fact that they miss हो didn't. गया. They just calmly या Vitality the जितने standard चाहिए smokes तो and अगला molotovs मैप and तो went for it. literally goosebumps आएंगे. He अगला is मैप Inferno getting a होगा bit of a भाई. shot in there against zywoo, but it won't change the fact that he gets 3 kills with a Mac 10, which is kind of cool if you're the Opera of the team. Sure, but I'm thinking पीछे देखिए high grade का भाई बैठा Astralis था. right now need to be getting more kills. They need to be putting zywoo alien है भाई. zywoo alien है. मैं बोल रहा था ना तुमको पहले भी बोला मैंने. zywoo मेरे हिसाब से alien है. It's not going to get any easier here for Astralis. Alien ज़मीन के अंदर रहता है. Scenario. And they're trailing. They've still got guys who are on Guys, single can we digit kick kills. KaIdo, Magus and Glaive right now struggling. 8 and 7. So, eco round है, hard eco whereas है. everybody on Vitality are up in double digits. Astralis का hard in eco terms है. of firepower right now, Vitality are outclassing Astralis. They are, and it shows, right? 11 to 7, probably going to be 12-7 here, as it's just USP's RPK. बुढ़े. Realizing early on that अबे Dupree बन रहा है भाई ये तो. Very smooth, no issues here. They know where Megas is. He's going to get the one shot there, but otherwise, I don't think there'll be any trouble. So 12 to 7 in favor of the French. They are 4 rounds away now from getting us that. Even as Malan. What a delicious treat that असली would be मजा if we आएगा. could just Exactly, get there. bro. Inferno And पे you're मजा right, I mean, आएगा. in terms of the kills, it's Boomer outrageous. AI. zywoo obviously leading the charge way Liquid ahead of eliminate everyone होगी on ना? dust too. They हाँ, still I lost think the so. map. but नहीं, shots Navi here. versus Liquid है 20 अभी. kills, zywoo at 16. The rest 14 or 13. I mean, there's a very, very strong team effort coming out right here for Vitality. It's kind of what we were talking about coming into this. Did Astralis game themselves? After all, Vitality were the #1 team on Overpass throughout 2020. 71.4% win Good rate molly, on the good map. molly. So, Oh, they didn't play it Dupree, much very towards the strong end of the angle. year, and maybe Astralis were thinking this is how Oh. to change it up, Mar but gaya, clearly, you know, Vitality's still comfortable on the map. Come on, Dupree. I'm not even sure they're checking for this. They didn't hear him running, I think, because there was so much else going on. Device might be in a little bit of trouble, and he's going to get fouled. अबे यार Dupree ने पूरी Dupree team still bait कर has a दी. chance to play his hand Trash here. बंदे. He'll at least take down Apex. He knows there's a Mac 10 out there somewhere, but a lot of trouble Nice, this time nice. now for Vitality. They're Nice. in such a One weird thing. position. They almost just have to go straight to the bomb side. They will at least take down Sip. Timing, yeah, I mean, you've got no other choice here. Misuda and Shoxy. Good nade भाई. क्या nade पड़ा बे? 15 damage सिर्फ. Shox though going to get the punish, takes down Glaive, and now it's a 2-on-2 retake scenario. No अबे. picked up, but Megas, if he gets Oh. these kills, plenty of time. 3 kills for Megas. Oh my god. Oh my. That's oh my interesting. I god. mean, it's happening so quick. Australis #1? Question mark, guys. Okay. Guys, please can we get some spam in chat? Australis or very aggressively. Vitality? Most of his time Australis or you know, Vitality? it was his Spam in birthday chat. every Let's day. go. You know, you're just eating cake and having a good time, pushed up mid. Even a Every print stream. all-around हाँ ले ले बहुत बढ़िया. So I Even just a thought hyper perhaps beast that's नहीं because print they're stream playing print against stream. EG. They're not going to respect EG as Affordable much as they're चाहिए going तो to hyper respect beast ले ले. Vitality.
Magic's the magic. Face says it all. Apex's face says it all. Like, oh no, they are playing that aggressive against us. They are going to push mid, push fountain, device Dupree working together as a duo. This is what I was wondering if Astralis were they going to be this aggressive, or was it just because they were up against Astralis, Navi, Astralis, Vitality. Let's go. Spam kar do andar. It certainly worked that time. We'll find out if they keep doing it. I still believe Astralis come back again, I expect it's going to be harder and harder to do every single round, because eventually they're going to be more passive. Now, I do wonder about Glaive. I mean, throwing that grenade, he threw the grenade straight in. Cleared by with a full delete. Personal choice, brother. Personal choice. And trusted in. He may be forcing it. I mean, he's still sitting at the bottom of the scoreboard. Even Magus is in double digits now with 11. Because that's the kind of thing that can easily lose you a 2-on-3, right? Suddenly it's a 2-on-2 and you just need one mistake. Dupree, hold kar. Uchal mat, bandar ke baad. हाँ, बस बढ़िया. भाग. Well, if you keep into this, it's going to be a sad time. He barely survives with 8 health. That's unbelievable. Shoxy's going to back him up. Magus is taking Namisuda though in mid, but the pressure is on now. Device, he's got to get these kills. He's going to get one of the friendly flashbang right in his face. Somehow it actually still worked, because I think the enemy player out there, Shox, was also flying. RPK. Oh, this is all over the place. Shox. Nice, RPK. That's a huge issue now. Smoke me. RPK. Get in here. They have to take the sights and run out long and pick up the bomb and then get back to it. Sounds really unlikely. Very close, guys. Very close. Very close. Chaos. That was a really weird battle out there. Magic's firepower hai. Chalo bhai, come back. Apex. Liquid will win water. Let's go. Oh, Zywoo. Nice headshot. 1v2. 22 seconds. Maybe it's not the end, actually. He's right. Glaive to try and do something, but he's checking it. Another headshot to come through. Oh no! Bomb tapped once, and he's tempting him. He wants Sip to try and come for him. 10 seconds on the clock. He's spraying through. Sip is right there, and he fakes it another time. In a 1 versus 3, and he brings them all down. Quad kill at the end, and Vitality get to 13. That should never happen. You know what's worse than a Zipnix? A Zywix. Zywix. Dude, Eve knew it. This is how you survive the Zipmix clutch, is you just put... पीछे वाले को देखा. क्या बात. Oh, Hagrid. Such a big clutch win. Astralis are going to be kicking themselves. Definitely not the end. Perfectly. The support was there to shut Vitality out. अरे दादा, Underworld Dawn Zipnix बैठा है. वो फिलहाल चिल्ला रहा है. उसे पता है मैच जेब में है. It's like Excalibur showing up through the fog of war to save the day or something. Zywoo shows up and gets an insane clutch to put them back into a half. Naman Pokrial, हम दो भाई. Lose that round. But that's the star potential. It's why Simple and Zywoo are up there. Guys, subscribe and like. Subscribe and like. Jaldi subscribe and like. Come on. Insane clutch rounds. 18 people watching. Subscribe kar do. Jaldi se. It's what sets them apart. And worse still, to add to the miseries, the fact that Astralis don't have money to buy in this upcoming round. So not only disaster. Yeah, losing. Zywoo was born on the same day as CS 1.0 was released. Wow, bhai. This guy is young, bro. Into the following round, and you try to bring him right back. Say, okay, fine, you got that one round, but we're back in charge. That's unlikely. All right, very clean from shots. Stepping in to wreck. भाई stream snipe कर रहे हैं guys ये लोग. मेरी stream देखने हैं लोग. Device को device पे इतना गंदा फटका पड़ा है. Device बोल रहा है कोई ना Inferno पे खेल लेंगे. Everything looking good for Vitality. I mean, हो गया ये तो clutch है, easy है. हाथ में. Device में chat में डाला रहेगा. Chill out boys, we'll get them on time. Even if you picked Astralis, you should. मुझसे 1 साल बड़ा है Zywoo then. I want to see the nade battle in Banana and how these. Zywoo Chong is a Chinese professional Counter-Strike player. He was Apex takes down Zipnix, earlier working as child laborer and Momo's stall. But after playing 10,000 hours, he's became the best esports player. क्या बात है, क्या बात. Headshot, one tap. Shox number 1. We're not going to put ourselves. Hi Zywoo in stream. या वो यहीं पर है, वो stream snipe कर रहा है, मेरी stream देख रहा है. Device को तो पहले पेल के रखते हैं भाई. Device पता नहीं क्यों इतना. Dupree इतना famous क्या है मेरे को नहीं पता भाई. Device अच्छा खेलता है. Dupree क्यों है इतना hype? Dupree का entry fragging पे potential. A lot of money on the Vitality side. There's a lot they have to choose. Good flash. Hard rush. Straight into B. No fear. They know they're weak. They know they're reeling a little bit, so they're just charging right in to try and take them down. Shox with the opening, dropping Glaive. They did check for Magus. No, he's going to get a great double Sip to try and help him out. And now Shox 1 versus 3.
and he will take that kill. He's very dangerous as well. There's plenty of time, so he could try and walk around and look for kills and just try and, you know, traverse the entire map and make this tricky. But the low health will still make device को पहल के रखा 16-14 कौन जीतेगा 16-14 कौन 16 कौन 14 Arun Pillai come on and if you're new subscribe कर देना Arun bhai and like तो कर ही रखा होगा तुमने I really hope because this match is like worthy bro like worthy match That's the thing with overpass is that you can't really jog through नहीं sound नहीं दिया अभी tक Device is standing he could hear you running and that's going to give it away and so even more time getting burnt off अभी किसी को sound नहीं आ देखो हम आप देख मैप देख नहीं उनको पता ही नहीं वो आके तरफ से रहा है ऊपर मैप देख मैप में उनके आ रहे हो दिख रहा है put themselves in a position to counter Shoxy if Shoxy in fact is coming from A. Yeah, this is the problem. When there's been this much time off the clock, eventually they're going to start to think, hold on, maybe he's in a different position. I just don't even know how you would do this. You would need an absolutely clean fight against the first guy. Preferably the other way, make it a one-on-one, and then you probably can't plant the bomb here because there's just so little time left. So yeah, it's all around an uphill struggle for him. 15 seconds. He snuck all the way in, but yeah, they know where he is. They've already figured it out. So brave attempt there. I don't mind him trying to make it work. Maybe you could have found something, but this time didn't work out that way. 9-14, and a like bhi kar do, let's go. Very important round for them. Bhai kya khela Zipnix ne? The fact that this all happened in such a weird position. Actually, they had the देखा मैं short के अंदर push कर गया भाई monster push कर गया pushed out and was sort of flanking them in the middle of that push. It was very odd. कह रहे रहने दो Inferno खेलेंगे अब सीधा guys. The Australians actually they win the round, but because it's a one-on-one, still got a UMP, still lacking quite a few grenades. That's upsetting. It's I mean it's still the struggle. By no means is this. Oh no! But now look at the odds set up here from Australis, man. They are fully embracing it. Just pull out all the stops, everything you can here. You need every little edge you can afford. And well, Vitality, they tested B, and now it's the quick rotate up through mid, and the Device and Dupree were not that aggressive this round, and so they don't have any early warning on this. Although Glaive and Zipnix are working their way back, are they going to make it in time? Wow. The fact that they got caught doing that boost, that could have cost them even more than that. Shocked that they won the fight out at long. Now Device is trying to get back in here. He's very low on health. Masuta taking a kill. They know where he is. That little jump spot there to pick him off. And Sip and Meg is 2 versus 4. Oh, babe! Don't want to have the Molotov. But Sniper will take care of business. And that's going to be 15 rounds on the board for Vitality. There is nothing Megas can do about this. Device I mean, save the gun. I don't mind if he saves it here, but just don't try and fight them. It's not worth it. That was so clean, and the fact that they were pushed up that far and caught them boosting, that is, I mean, even if they didn't die immediately, and even if they won the fight out long, they were so far out of position to try and deal with that. अरे दादा अंडरवर्ल्ड डॉन जिपनिक बैठा था है वो मैच जेब में लेके जाएगा डिवाइस चैट में लिख रहा है डिवाइस चैट में लिख रहा है तो बनाना पे मिलो as a sacrificial lamb just you know I'll run in I'll be the bullet magnet and you guys need to play off of me because oh gaya how many times I've watched him run head first into a fight only to die and he's been on 8 kills शॉक्स यार घर नहीं जाने दूंगा अभी रुक जा he's not getting anything to go his way individually you can see right there boom Masuda dismisses him. And they lost the org at the end. It's the worst possible outcome. Match point. They've got nothing to fight with. Man. Agreed की शक्ल देखो. I mean, we're just gonna have to, you know, put a little frustration here for Apex को देखो भाई. But I can't blame them. Mid-air. Invisible. You keep going, you keep fighting in these rounds, right? Oh, no doubt about that, but the odds. Oh my god, takes a bit of damage. Glaive and Device are also pushing quite aggressively. But I mean, the fact that Dupree is already down there and being aggressive, I'm sure it'll be called out. And how careful they're being out there, really making sure. Good, smart play here. Trying to actually jump up against the edge of that tunnel to get out a little bit faster, but didn't work out. He's going to go down as the only player so far also plays CSGO, and that leaves Device in a 1 versus 4 to try and save the map, and it's just not looking like it. Again, Device is so handsome. I just think we're so blessed. Inferno, best of 3. Shocks is in top player since season 13. See you at right now, and to get to a third map, I just think it's everything you could possibly want here. Device. I don't know, the bell is ringing, might be the train bell, but certainly ringing for Astralis right here. 1 versus 4, and he's going to get a headshot. What? एक सेकंड ये क्या हुआ collateral headshot. What?
ये क्या हुआ? Has to be just pure out, just divine intervention. Dude, watch it. ये क्या हुआ? Shut up. Bro, कैसे बोल रहा है? कमेंट करो. ये I've never seen anything like that ever before. अबे मजाक में जीत Let's गया. see it again. I'm just waiting. Let's see it again. This is मैं the भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। the only way Vitality करने can दे, throw करने दे. this is by lining up for him. The collat. हाँ, Let's go. the Oh, collat. his face says it all. His soul just left his body. Yeah, I don't even understand. Oh, that's so good. You couldn't set that up with your friends if you tried for a full day. You could try इसका it. reaction देख. Get 4 friends and try and see if you can choreograph that Oh my and fake God, it. भाई. What You the can't. fuck? It'll take such a long time. Apex's face is देख कैसे priceless. ठाट You have में to ऑफ roll बाय करके बैठे हैं. डिवाइस those की dice लाइफ का a सबसे long बेस्ट time क्लच to हो get गई. outcome. I am so shocked. I'm so shocked. Masuta कहाँ will देख take रहा है down मेरे? Magus. That's a good start to the round. Oh, Finish it left को off. बंदा. Don't let that just find a way to win this now, because if it goes into overtime, I don't even क्या know हुआ how ये? मुझे devastating नहीं that would पता be. क्या Dupree, a single bullet is all that he needed, and Glaive will come up with a kill. So 4 versus 3 right here. थ्रो कर Stay दिया भाई लोगों ने. composed ओवर with टाइम your जा रहा है. vitality. This is a mental game now. Apex is Oh, going to ले take गया. a kill, but Glaive actually doing a Oh, lot of work. overtime. A triple Overtime underground overtime right दिया here. था. Overtime दिया था. Apex पूरे 1 map के ऊपर versus लिखा है 2 overtime. now. Zip is very low on health, and I don't think he spotted him then, but he's still going to have a better angle, नहीं. and he'll catch नहीं, that नहीं, kill. नहीं, Device is नहीं, sneaking नहीं. in behind पीछे him, देख. and has an M4, has all the health and everything else. And actually, Device is already assuming that जीवन Apex दान will मिलेगा go यहाँ to पे. the A bomb site, so he's ये trying अगर to महंगा stay पड़ेगा a वाइटालिटी को step तो ahead सीन even. हो जाएगा वही ना. Not the case. कमबैक बोलते क्या? ब्रो क्या हुआ क्या यार? वो वाला क्या Apollo got शॉट था यार? planted, मेरे को अभी and तक this समझ is नहीं आया वो क्या terrible हुआ. for Devices now. फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे. Gonna have to run Sure for enough, it. it's not up here, and so you're gonna have to waste all of this time running down. One thing he has going for him is that Apex has absolutely no idea where he is on the map. Mostly They डिवाइस each have a Molotov, Oh, so भाई, things ये हर get बार नहीं really, चलता. really interesting. He's देख gonna लिया, pit देख as लिया, well. Apex ने He's देख not- लिया. he's really trying to Apex mind ने game शायद देख लिया. Apex. He's assuming that he would already been there, but Apex is just behind the box. A little bit of a jump down, and he's a little Stop to get shot in the face. That will be 16 to 10. They don't get round rattled लगा by वापस the से. absolutely godlike round that came out of that Deagle. And अभी I mean, दिखेगा we're इसमें, talking दिखेगा, about for दिखेगा, a दिखेगा. long time to come. But third map Guys, will be Vitality in has store won for this us, and I match, think that is really and the we will most go on important to the thing next here, match because जो that's है what we all wanted. Inferno. That's the one where you got to shake it off. It's like a ninja diffuse. You just got to Yeah. put it out of your mind. We got to move on. Let's get it Comeback done. बोलते, And sure comeback enough, नहीं होने वाला भाई. they क्या deep shot था वो, they were so पता नहीं क्या consistent मार and they गया were so भाई वो. prepared for what Astralis had. And I Inferno, honestly wonder देखना if we look पड़ेगा back ना on भैया, this, did Inferno Astralis बैठ के game देखना themselves on पड़ेगा. their CT side? Did they overthink it? And that's what Glaive and Zipnix are going to be, or Glaive and Sonic are going to be thinking coming out of that map going into Inferno. Yeah. Did they overcomplicate things, or should they have just stuck to their guns and Inferno stuck will to be that aggressive spicy, CT बहुत side ज़्यादा that worked spicy. so well against It will DG be the and that we match didn't really of see the here versus Vitality? week, Did they give actually. the Frenchmen too much respect? I mean, it certainly stings a little Inferno bit तो when मजा you आएगा, sort of have भाई, like a Inferno surprise तो map मजा like आएगा. that, वरना अच्छा and होने it वाला blows है. up in your face. And there's like, Yeah, get out of here. not डिवाइस interested. का मन नहीं कर रहा Inferno Interested. जाने We're का. going to Inferno. We are क्या after break. Stay गाड़ मारी है tuned. भाई. वो राउंड देखना है भाई. देखेगा अभी. तू होगा. ये कॉपीराइट नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा. बस सारे आज भी नींद सैक्रिफाइस कर रही हूँ. बेटर यू विन. भाई क्या इंसेन डी शॉट थे यार, वो क्लिप बनेगी भाई वो. हाँ ग्रेट. ओ हाँ ये रहा. डबल किल. तो लाइन ऑफ हेडशॉट. एपेक्स को भाई खत्म. इंसल्ट टू इंजरी गाइस. I don't think so. Death no. I don't think so. Death vault. I don't think so. Literal throw किया वो शॉट की ग्रेफिटी मांगता है अपन भाई. हाँ भी उसको ग्रेफिटी बन सकता है. राउंड था भाई. क्या राउंड था यार वो. Legendary था भाई. कमाल का राउंड था भाई वो. कमाल का. Legend. क्या लाइनअप एंड डिवाइसेस रिएक्शन. या आई नो राइट टाइफून ब्रो. गाइस लाइक करो. लाइक तो बनता है इस मैच के लिए, इस राउंड के लिए भाई. वेल प्लीज ऐड ग्रेफिटी यार थ्रेड केबिन. I really hope they do भाई. 4 भाई वो क्या क्लच था वो. इसका कुछ ना कुछ तो होगा 100%. कुछ ना कुछ स्पेशल होगा. डिवाइस का रिएक्शन.
वाओ यार लिटरल थ्रो था वो, तभी तो हैरान हो गया इतना एपेक्स ही एकदम से कैसे हो गया, एकदम से सब थ्रो कैसे हो गया. Absolutely insane bro. Device clip is on Reddit already. दिख नहीं रहा इसमें मेरे को अभी, रेडिट पे है नहीं गाइस अभी. Let's tweet to Valve for graffiti. I hope they do add that bro. I hope they do. Oh, you have shit internet and can't connect and couldn't connect to match. Don't play for 30 more minutes. क्या मीम है भाई, क्या बात है यार, क्या भाई क्या शॉट था वो, insane. I am fan now bro. मैं ज़्यादा R6 का भी टूर्नामेंट देखना. ओके हैक्स ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग. ग्राफिटी वर्थ था, डोंट थिंक सो. ग्राफिटी होगा 100% बनेगा यार उसका. कोल्ड जीरा का भी क्लच का वो बना था ग्राफिटी, इसका भी बनना चाहिए. ज़ाकोस सब्सक्राइब विद प्राइम. भाई क्या हेडशॉट था वो, अनबिलीवेबल. मैं वही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. डिवाइसेस इंसेन 1D गियर है यार. To a third map, I just think it's everything you could possibly want here. Nice. I don't know, the bell is ringing, might be the train bell, but to get to a third map, I just think it's everything you could possibly want here. Nice. I don't know, the bell is ringing, might be the train bell, but certainly ringing for Astralis right here. 1 versus 4, and he's gonna get a headshot. Oh! No way! Best teams in the world right now, and it's been an eventful end of second map. I'm not gonna lie to you. Once Device hits that absolutely marvelous 1v4, like 1 in a million action, I thought that could be the end of everything. It could just unravel Vitality, and I want to give them props for staying calm, because if you think about how close this series is, I mean, I don't even want a voiceover. I just want to appreciate the craziness. You could obviously argue why the hell are they picking him, but I think in their mind, it's impossible he's doing it. It's absolutely impossible. They think it's over. They're already talking about Inferno, and then that collateral at the end. Oh my god. Your chances of winning the lottery are most likely higher than ever to replicate a clutch like this. This was absolutely sensational from Device. You know, if you're Vitality, sure, I don't even want to, you know, I don't want to blame them. I don't want to flame them for peeking in here. No. You would have done the same thing, right? It never happens. It's never happened before, I feel like. So for Device to hit this sensational, fantastic. Overall, he didn't have a great game. You know, he's been struggling a little bit so far in this series, and that's part of the story, I would say. So for Device to maybe gain a bit of confidence there and feel that he's still got that X factor to his name is a good thing, but just watch that. That last one. The collateral at the end is like cherry on top. It's like, yes, took that one away. But also, right, when you're talking about getting some confidence back, after the first map, Shoxy wasn't really activated, but coming into this one, he just gave it his all. Yeah, he really had a lot of impact, mostly on the CT side of Overpass, and I was surprised during the veto. I thought that could be a good punish. I forgot about Shox and the CT side of Overpass. It's truly a map where Vitality give him a lot of freedom in where he wants to go and if he wants to be aggressive or not, if he wants to take space or not. And yes, I point him out after Dust 2, but there we need to admit that he had a very, very good game. Ends up with 28 kills, 122 ADR classic, and you can see some of these clips on these kills. He's in the middle of everywhere. He's got space. He's pushing from the back. Sometimes he's on B. It truly is a map where his game sense can shine, and he can have a lot of impact. It's the turnaround. It's the turnaround from the performance we saw Dust 2. They played 30 rounds in Dust 2, and Shox had 1 round with a multi-kill.
1 out of 30, he was able to kill more than one Astralis player in a single round. In this game, as Matthew said, 122 ADR, went 4 for 6 in opening duels, 6 multi-kills. He was doing a fantastic job. And, you know, you make the argument sometimes when you have a 6-man roster, if a guy like Shox, you know, is being switched off the server after playing Dust 2 because he had a bad performance, then yes, bro. Next match बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है. 2 minutes, 1 minute में शुरू होने वाला है. He has and everything Inferno, he can वो reset teams का himself. बहुत He can strong come map back है in a वो. matchup बहुत like this. ज़्यादा strong Without a map है. doubt, the most influential player on the server in this matchup, and he deserves a lot of credit for that performance. He does deserve a lot of credit as well, but he also had his right-hand man alongside him. It was zywoo able to step in and deal the damage with it from start to finish, bringing out some more fun rounds for us to witness. And it's always the same. It's the impact that zywoo is having. No, even though in terms of stat, he's got only, air quote, 24 kills, which isn't absolutely insane. You will find in some of these rounds, the impact he's had was massive. I have in mind 1 versus 3 that he pulls up on the A side, and the scoreline is 13 to 8 or 13 to 9. And it's a moment where it's a make or break moment for Vitality. And again, during that time, at this very moment, zywoo is the man you can count on. And I think that is the immense value of that player here, right there. अब ये right वाले जो peak किया था ना, To इसमें me, वो मजा आ it गया था saves भाई. Vitality on their team. दिखाया नहीं उन्होंने वो right वाला जो peak था. They just bungled. They bungled Astralis advantage के on लिए the A बहुत side, bad and memory he का Inferno bails है. them है out of a Inferno terrible तो situation. लेके. That could have been Astralis flying with the CT side, having money in the bank, and a double AWP if they wanted to, but he steps up. And again, that's the zywoo factor. Any situation can be win by him. The key moments for sure. Now, we'll be moving on to from one match. Yeah, I know, right? When we've seen these two teams face off against each other last Insane, time bro. around, Absolutely it was in crazy. Astralis' favour. Before that, it was to Vitality. But individually, it was very dominant from the team that won, and that's not normally what we see on an Inferno. No, I think we have a close game in our hands. There's nothing that suggests to me that this game is not going to go all the way. I think we've seen enough from Vitality to say that they're here to play today. For Astralis, I think there's 2 things I want to point out that worries me a little bit coming into Inferno. Okay. First and foremost, we haven't seen any of the Guys, players can we go off. 30 We likes, haven't 1 seen like a away from 30? Come on. performance on Astralis. We haven't seen a Shox-like performance on Astralis. They have to win as a team, and in itself, that can be a good thing, because that's probably where Astralis are the best. But when you have Shox going off, you have zywoo going off, you know, Nivera is now coming into the server, playing well in Dust 2 as well. There's a lot of individual power from Vitality that can overshine Astralis. The second one is a very worrying point for me. The pistol rounds so far for Astralis in this tournament, they've only won 5 out of 16. That's simply not good enough. And the big problem is that you can make up for that if you're good at breaking the economy for the other team if you don't win your pistol, basically. But in the 11 pistol rounds they've lost so far in this tournament, they've only broke their opponents original aim 40 which is ka tha. 9%, which is Try by to go far for the lowest 40, in why the not? tournament. So they don't win their Interesting pistols match, and they one don't of the break best their matches opponent's abhi tak pistol tha. round either. So if you're Astralis, you're more or less starting every single map at least 0-3 behind. You cannot do that against Vitality, because I just said this is going to be a close game. But on Inferno for Astralis, right, one thing they do is start ahead on doing damage before anyone's seen them. Yeah, their damage, I mean, with the nade is usually awesome. And the fact that they renew how they take banana control and they change the timing makes it really uncomfortable for their opponents to just take it, knowing when to take it, how many people are going to be behind that smoke, when are the nades going to fly, when are the mollies going to fly. So that's a huge point. Now, if we talk about Vitality for a second, their CT side of Inferno used to be problematic, right? So what kind of solution did they find? They slot in Nivera, they take away Shox, they move zywoo to the B side with a rifle, and now Nivera is having to do the lion's share of the sniping on the A side. That puts a lot of pressure on 2 players. Nivera, first of all, he's got to step up, and if we're being honest, his Dust 2 was normal. He was so-so. Yeah. He wasn't too flashy on Dust 2. And then RPK. I feel like RPK has been such a rock on the CT side of Inferno. The last few times they played it, he was bailing them out from the pit position with the rifle from side sometimes. And it's a profile he likes. He can just turtle back, be ready, focus on it, then more. That's RPK. That's how he plays. And he's got to do it again. I love the little soundbite you give it there. Yeah, you have to do it to him. But when it comes to what Astralis offer on Inferno, right, they are such a well-calculated and thought-out team. But we haven't seen the most impressive Infernos out of them so far this tournament. No, it was not looking too well against EG. I think most people remember how they lost that one. It was the first game of the tournament. They said there was some beginners jitters, so to speak, for the beginning of the year. So maybe we can put that match aside and think to ourselves, okay, there was an outlier for Astralis. But I think they're going to struggle a little bit in this game against Vitality. I think I've seen enough from them to believe that this is going to be a game that is going to go toe-to-toe, right? All of the players seems activated within Vitality. And for Astralis, as said, there's not a single player that has stood out so far. You mentioned the utility, and I think that's going to be a vital point to bring up once again. I said coming into this game that so far in this tournament on the CT side, Astralis are the absolute best at dealing damage on the CT side with utility. So far in the tournament, 42 damage on average every single round. Guess who are the worst? Guess who are the worst in the entire tournament so far? That'll be the opponents from Vitality, only dealing 17. So there's always a difference right here between 25 damage every single round. So in theory, it means that every single round starts with 500 HP for Astralis, but Vitality, they have to do with 475. So
So they're already softened up a little bit. So if that trend can continue in this game, that could make up for the pistol rounds Astralis seemingly lose all the time. That could be a huge difference maker in that. Now, we've got to mention one thing as well. It is the substitution like you already spoke about, Maniac. Shox goes out of this one despite having a great overpass because they stick to their guns and what they do, right? They're not changing protocols here. We get a Nivera in, but for me, now he has to really step it up a whole notch compared to what we saw on Dust 2. Shox I की mean, जगह it is Nivera खेल still रहा है bro. a never-ending trend of proving his position for Nivera. Yeah. Right? Because even though he can perform well 1 game, 2 game, 3 games, we always are going to ask more from You him. got a He's always beast gonna have to PC, step bro. up Yes, bro. massively. Thanks to We talk about streaming, I Inferno built the this, last bro. two Thanks to times. you guys, I mean, the last I 2 built times they this. played Inferno, it was Thanks to all either the donation 16-5 for and Vitality some or smart 16-5 for Astralis. It At has been perfect timing. hugely momentum-based. share पे And more often दो than not, it was a stage team who won the second map who actually Whatever went on to screen win पे दो Inferno. stage So I don't know if there's a trend. That could be something. I'm not going to jump on it. I think these are professional players who can easily just reset. What scares me as a profound Vitality fan, everyone knows how biased I am, is that Astralis have showed poise. They've showed resilience in that series. I feel like the way they were winning some of these very tense rounds, and again, if it wasn't for zywoo or Shox, I feel like they had an absolute overpass. I think that can be a key element here because the pressure is going to mount up, the temperature is going to go up, but I do believe that Astralis will remain calm at every single time. And we know that's exactly what Astralis do, and we know we are in for one hell of an Inferno coming your way. It's the third and final map. It's the upper bracket final, and one team will be marching on forward to that grand final spot. Will it be Vitality or will it be Astralis? Make sure you're back here after the break to find out. Yes, I know right, Nabra. शॉक्स इतना अच्छा खेल रहा है यार, उसको बेंच कर दिया, मैं खुद इतना हैरान हूँ. I don't know why bro, there is no reason why. निवेरा के चेहरे ध्यान से देख पे श्रेष्ठ की हल्की झलक दिख रही है. क्यों दिख रही है ब्रो तुमको झलक? तो मेरी झलक क्यों देख रहे हो तुम, मुझे पहले ही बताओ. शाम कुछ तो चल रहा है बिकॉज वो स्माइल कर रहा है, कुछ तो चल रहा है. हाँ भाई, ज़िपनेक्स स्माइल कर रहा था बहुत ज़्यादा, वो करता नहीं कुछ बिना बात का, एक्सप्रेशन नहीं आता ज़िपनेक्स का. गाइस ऋषित क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि इन्फर्नो में ऑस्ट्रेलिस माच हो देती है एक की. एग्जैक्टली, लेट्स सी. मैं अभी भी वाइटैलिटी की तरफ हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वी नो आंटी, वी नो ऑर्टी. ओके वन मिनट में शुरू होने वाला है गाइस. इट्स ओनली 1 minute लेफ्ट. लाइक वी कांट टेल नाउ. निवेरा भी कुछ धमाके कर देगा, हो सकता है यार. वीनो आंटी, मुझे वीनो आंटी लगा यार, वो वीनो आंटी है वो. The street sign Vio Adamo can be found in Banana meeting Adam Road. A tribute to King of Banana. Wow. Okay. क्या मालूम ऑस्ट्रेलिस ओवर पास जानबूझ के हारा है इन्फर्नो में इनकी लेने के लिए. हो सकता है. वही तो काइडो भी कह रहा था. ऐसा लग रहा था ये लोग कह रहे हैं कि रैन इन्फर्नो में मिलेंगे इनसे, ऐसा लग रहा था. कौन कौन है चार्ट में? 12 लोग हैं चार्ट में बॉयज. विनो ऑटी इन्फर्नो का मैप डिजाइनर. या आई सॉ दैट. ये वाला मॉनिटर वाला मैंने देखा है. ये CSGO स्क्रीन वाला होता है ना कंप्यूटर जो है, उसमें मैंने देखा है अपनी आंखों से. CS 1.0. Simple donated, dominated. Okay. It's the only map in the to have video feature live stock. Okay. मुझे ये नहीं पता था, मैं भूल गया था, एक्चुअली ध्यान नहीं दिया कभी. I really want to play CS now यार. है ना ऋषित? Yeah. Bro तेरा सेटअप कितने का आया? 82,000. कोई और स्किन सेल कर रहा है? Let me check. Malan pin है pin. Well, this is what it all comes down to. We're going to be on Inferno for a final map here. This best of 3 between Astralis and Vitality, and
It is going to be so good. I can't wait. It's Kunal the pin and classic twin pin, map. Now here's the Murgi, replay that we don't all pose. want, right? The AI prediction 1 to 99%. And you know what? You guys have been asking for years. I've been telling you we're living in a simulation and you wanted evidence. Well, here it is. This cannot be actually the real world in which that can happen. You would have to spend, again, such a long time rolling dice to make any of this work. It's outrageous. Device 75,000 finger wag there as well towards the end. Bro, मेरे just को got cut 50,000 off. देता मैं But PC में that देता is तेरे को यार. definitely reset, and that was the हो what गया was चालू talked आजा मौत का about दरवाजा here खोलने. on the Ready, match क्या हुआ? coming into it. Both of these teams are रुक capable गया of तेरी winning आवाज when it को. goes against. हाँ भाई बोल दो आप बोल. Vitality have shown us that with the second map on overpass. भाई मैच चल रहा है यहाँ पर सेमीफाइनल अभी नहीं. Closest could be, doesn't matter. They still hit the ground running on overpass and get the job done. They क्या time shot the था वो series. मेरे को भी नहीं Now पता यार it's मेरे को भी Straws. नहीं. They're the ones who need Woo, to show us let's that go. quality. First They're round the of the ones who match, need to show guys. us बुला what लो they're वापस capable of सबको here, भाई and लोगों they को. start on the CT side. I'm not sure if this is a good thing though that they're starting on the CT side. Let's find out. We're in the action already. Masuta picking up 2 clean kills down the middle. They did take a tiny bit of damage, but nothing to write home about. Sip is over here. He's been the end of many teams in this bomb site. Let's see if he could do it again. It will be nothing but headshots. It's not even going to be close to working One more, out. nice. Dupree will take 2, but they Abey should yaar. stop fighting and get the bomb down here. Vitality have already done enough to make this a very, very good round. The device will fall. So, nice, clean, First nothing round goes to complicated. Vitality, It guys. works. क्या खेला ऑस्ट्रेलिया से टट्टी कर दिया यार मिड पे. They've just अबे made फिरा their गया. lives हाँ so ये इसी की difficult. जगह शॉक्स की Because जगह they इसको want खिलाया to go भाई. for that aggressive play क्यों because शॉक्स they को क्या know हो they गया? need to get in here Replace कर दिया fighting. ना इस मैप में. This इस is their मैप में. favored side on थक CT गया side क्या? Inferno. ये This क्या is the side where they would विचित्र expect to मुझे catch नहीं up पता if they यार, ये didn't क्या finish हुआ? on if they मिड didn't पे start जाके here क्यों on मर this गए सारे? side. Yes. It's going to be the 500 one that में they दोनों really pin, need to get तो as let me many check rounds दो. as possible वो on, महंगे and, pin so, है भाई, and they 400 just का got एक pin beaten है up on ऐसे नहीं. overpass. Glaive calls an aggressive strategy, hoping that that's going to work out, that they're going to be able to just take the fight to Vitality and establish themselves early, and it backfires immediately again. Oh. Nice shot there from Zippo, though. Now, You can never count him out. One cool thing about I think taking that peek down middle on the CT side. I mean, it didn't work out, but part of I think the idea could also be you're not guessing where they're going at that point. You're actually just forcing it. You're saying, well, we are going to be fighting in middle, so let's do it. Otherwise, if you fall far back sometimes on the CT side, you know, you're just hoping that they all come A or all come B, and especially in those pistol rounds. So I think they were maybe trying to put that pressure on, but, you know, it doesn't work when you get shot in the face. This is what I expect to see, though. I think Astralis are just going to be वैसे shot अच्छा था they've got to be so insanely frustrating to play against on T side because of the nade damage. क्या बोलूं शाम भाई कॉलेज Pimp के was चक्कर talking में. about ठीक है that भाई, coming Phoenix, into the welcome to series, the how live stream, brother. absurdly high their average nade damages per अरे round. यार And I गलती think a कर lot दी of है that work बहुत gets done बड़ी here क्या on हुआ? बी पे on- रोटेट करके. अरे ये आरसी 2 वाले भाई, दोनों भाई, बी पे भाई, रोटेट कर गए. They fell back हाँ, from वापस आ गए, Arch way वापस आ too गए, quickly. वापस आ गए. वो ये Now, smoke बहुत this is अच्छा a था. mag 7 on Dupree, so गया, he's गया, gonna गया, be, Dupree. I think, Oh! well, maybe Oh! not. He's maybe एक going और. to be fine. Woo! He gets one Dupree! kill, just headshots. It's a rare Oh, gun to see oh, these Dupree, days. They'll come pick up the on, kill and भाई, pit as अच्छा well, खेल but गया Dupree Dupree. just got the double, and here's the flank coming in alone. It's zywoo in one and a 1 versus 3, and he's going to get picked off. Astralis Dupree. क्या round था the भाई, revenge. Dupree. They've only won Dupree one भी like round so far. हाँ in the भाई, series, तुम तो घर but घुस के मारता now हूँ. they pick up the second round, and that is Oh my great God, news. भाई. I was भाई, actually मेरे को about to make the 35 opposite मेरा point. I was about to Ryzen say 5 मिल it's गया. not so good having the mag 7 here because you're going to क्या be at sort मारा of यार medium range, उस and साल it's a lottery playing where you never know Okay. what's actually going to happen. Lappy That was mobile for a beautiful. reason. He saw Honda. You know, he watched Honda and got inspired. Oh man, it's Look at nice that guy shot. can do it. So can I. Australis, let's go. wasn't. अच्छा मैच चल रहा है भाई. अभी से दिखना शुरू हो गया. All अच्छा right. मैच चल रहा है. It's true. That is a big round, though. No bomb plant. This is going to be Oh! zywoo with the headshot from bottom mid. Oh, Denied. it's Glaive that gets sent Oh down. man. Glaive had a rough one on. This is a good on match, overpass. भाई. Not This the is a best very good match. map I'm for enjoying him. this वो match. नेड पड़ा See if he can, like, नेड get पड़ा बड़ा, खेल बड़ा, जावे. बड़ा, 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 Inferno बड़ा, can start finding his form. ये owners lounge Memory, I mean, लॉक किया है क्योंकि वो मेरे लिए और I बाकी जिनको remember मैं Doug ड्रैग as करता being हूँ a very good Infernal player, so I would expect for him to find a way to have a decent impact on this particular map. But I think everyone is going to be fine. In fact, I can't think of anyone that's not going to be interesting to look at here. I know, right? I know. What will be fun though is seeing whether or not Vitality can win this round, because then it swings right back in their favor. Three going for a fight, and that was against the AK, and it still comes out on top. So kind of good news. 3 versus 4 though. Very nice. And now he's wrapped, and he's going to be able to support Device. Device currently posted up with the MP9, hoping that somebody's going to come close quarters. Dupree's going to speak. Nice flash setup. Impeccable stuff.
Zipnix with the flash allows Dupree to pick behind it. 2 kills, and now it's zywoo all by his lonesome. Already damage ho chuka hai. Again, 63 HP left guys. Astralis' nade usage on this map is something to behold. Can he? It's art. मैंने कर रखा है पहले भी. I mean, Rishit that ने भी कर रखा है पहले. flashbang, But I think he नहीं. gets their eyeballs. अभी Is that accurate? में conduct I think he करने really can see anything. Really well done. Really important. Again, just think about it. Dupree is actually peeking that angle really low on health. So think of his charge. He's got 22 health. And he's trusting to do that perfectly. That's real important. Champ के औलाद बग. I don't think I could ever get bored of that. No, it's so good. It is so good. Dupree and round no better love coming story. up. They've got an AK stolen, a Mac 10. They've got something to work with, and all they have on the Vitality side is a P250 to fight with. So this should be a much more relaxing round for Astralis, or they're trying their best to make it not so by pushing and actually Mac 10 kills. There we go. I like it. Anti-eco stomp down. That's what you need to be doing. If you know they're hard ecoing, you need to be pushing them. You need to be getting the kills with the SMGs. And more so just beating up on them. Be the bully. Oh, कैसे भाई? भाई हार्ड अरे डूड नहीं हार्ड इको करना क्लच बहुत मुश्किल भाई ग्लॉक बहुत टट्टी है अगर तुम्हारे पास हेलमेट हो तो सीरियसली 3 हेडशॉट मारने होंगे तब जाके सामने वाला बंदा मरेगा उसका कुछ भी स्प्रे लग गया डिवाइस का. I mean, it is worth pointing out that Astralis in 2020 thanks to HLTV again मेरे को दोनों पसंद Dupree और top team on Infern 77.5% win rate across 40 maps. That's no joke. Across साला ग्लॉक बहुत टट्टी गन है. डिवाइस का हेडशॉट You're able to pull that kind of win rate off on this map. You can see why Astralis, when given the chance, they would pick this map as the final one to finish this series if it had to go to 3 maps. Yeah, it's beautiful, isn't it? Let's see. Actually, got 4 kills in that round, maybe, with the Mac 10. That's a lot of money to make. 3-1 in their favor. Vitality have picked up AKs all across the board here, and they've got some smokes. Only the one Molotov. Molotovs on the T side are so useful, so it's a bit of a shame that they're lacking those. And I think they already threw it, just tossed it up to the. Oh, good boost. पहले boost कर रहे हैं. First time boost कर रहे हैं लोग. Not much fight coming out. 4-man stack over at top mid, expecting for Vitality to show up, leaving Sip on his own. I mean, this is a big risk. Wow. ये 4-man stack बहुत गलत खेल रहे हैं लोग. Zip alone with an MP9. Yeah. नहीं भाई. This is a hard read, and it is not working. You know, not doing any signaling here. They're not throwing smokes. They're walking all the way onto the bomb site, and Sip is falling out. What the right? actual fuck, dude? It's going to be full on safe for Astralis. They're not even going to go for it. They're not going to go for it. What kind of round is this? Anders, I mean, we're freaking out about Device with that Deagle quad. But I mean, this round is almost as ऐसा है कि round दे दिया बस. So now they know. Oh no. No भाई थोड़ा सा ले जाओ तुम. I was going to say, the fact that they got that kill, sometimes if you get an early kill like this, you actually get भाई fooled into going for the retake when you really shouldn't, and then you just throw everything away. But that didn't happen. They're fine. They back up. They realize it's not worth it. -69 IQ. What a weird round. I swear, this is almost as weird as Device's quad there. I mean, exactly. Like, when do you see this? A stack, I mean, full stack, Zipnix rotating out, the 5th man rotating out of the site. मैं सोचा कि वो सीधी all जाएगा. sorts of weird. What's really even more strange, and I think this is also what Astralis must be thinking too, is normally if you were going to go B, you would have someone checking top mid from the T side. So I think they would have been happy Astralis, you know, just getting a kill top mid and then, you know, just falling back from that position, but no one came to check, so they just went for it. Yeah, this is very strange indeed. But they get to hold on to their rifles. They have a very good economy still, Astralis, so even though it's a bit upsetting, it's still pretty much fine. Even on loss bonus अरे as well. pros का gameplay है, convention games. So now it's all about figuring out what comes next here. And I'm very curious to see Astralis. They're not going to have 3 early this time around. I was curious to see what kind of they would have set up here. In fact, it's not going to be much of one. लेकिन ये हमें पैसे नहीं मिल रहे होते ना. हाँ ये लाखों के लिए खेल रहे हैं. 1 करोड़ लाखों के लिए खेल रहे हैं. It's the game within the game here. This portion of the map. Waiting. They're a little bit delayed. They have one they can throw into the ceiling here, and it'll bounce back down. So waiting for that smoke goes up and running through just as it happens, taking down Glaive. That was really well timed. Oh, good flash. Zip trying to hold them back. He's going to flash himself in. Actually gets a kill. And if they didn't duck into that corner, he could have got the double. Now he's got backup, and there's a lot of backup out here. If he can stay alive for 5 more seconds, they're going to be here. But he's Molotov into the fight. They've got him out in the open. Oh, good and he finally goes down. Device there with a refrag though. Now it's a 3-on-3, and everyone is here
from Astralis. They're in the right position. They catch Apex and the बहुत bomb is on the प्यारा ground. And this is trouble now. RPK, he's low on health. zywoo has to try and fight this one back. Vegas will get one, but they're all and he nearly catches Device. He's up in the box, but he can't get it done. The Deagle coming out for the kill. I swear, he almost shot him in the face with the smoke there. Wow, what a round. मेरे को तो लगा ये भी क्लच कर देगा। मैंने भी सोचा what? Grinning through and through this. I mean, this is amazing. It's just 20 seconds of non-stop action. Once they go for Zip, it just doesn't end. They keep fighting. But it's so beautiful that Zip, the way that Zip plays that situation, the way that he gets that one kill, doesn't overstay, doesn't force it, backs off, stays alive, buys even more team a time for the rotation in. It's so good. It's so good. And then, of course, zywoo is there to just make it so close. I mean, this is something you'd have to go back and look for, but I think when Zip escapes the Molotov, the reason he doesn't die immediately when he steps out from the box is because I think his teammates have thrown a flash into yellow to stop anyone from peeking him. So there are just so many details in that moment. You can't catch all of it, but I mean, the level of coordination, it's so hard to deal with. It's so sick. And Vitality, I mean, you can't even feel bad if you're Vitality, because like, what more can you do in that situation? You're just getting sprayed through smoke, you're getting flashed in the face, you can't see anything, you're just getting whittled down. And, I mean, just think about how that round starts, right? They get the fight at top Banana, they win that immediately, and they correctly know and guess that Zip is alone in B, so they actually have the right information. There's nothing wrong with the idea that they had going into that, but... This is that brick wall, though, that Astralis are capable of putting up on the CT side, where you're just going to feel powerless. Add that, the nade damage, add into that, all the pressure. Mega's getting pressure, speaking of, in front of Library. Now Glaive is going to get caught by zywoo. Oh, guys, I'm looking the wrong way. Big opportunity there for Glaive. Finds that shot, and he's going to be able to rotate back over here, and this is where the action's going to be. RPK and Apex, they've got the bomb right outside of B. Yeah, they wanted that to be B-split, but Glaive walking in, they're inside. He still gets one. They must know Zip is in here. And Apex, 0 kills so far. He's going to be going down. Oh man, or maybe the 1 kill actually now, but Nivira, 1 versus 3, he's boxed in, there's no time. This cannot be done. And not even if you're Device with a Deagle and 1 versus 4. This is just time is making this impossible. Dupree will take him down at the end. And the Charles will be 5-2. Really great beginning here. So far, in the 5 rounds they've won, there have been no bomb plants, so they're lacking a lot of funds vitality here. And I mean, this is the best possible start that the Danes could have hoped for. Oh, absolutely. And not only that, the round that they lost out of this one, they all 5 stayed alive. The money is just so good for Astralis. There is no pressure on these guys whatsoever, and they have fully embraced it. No messing around. And, okay, once again, bully. And this time Nivera's going to be ready for him. Hits the headshot on Megas to put the pressure on here. Nivera doing a great job of staying alive. This is really drawing it out, making it way more expensive than Astralis were hoping for. There comes the flank. A lot of aggression that's being thrown their way. Didn't look like it was about to got a little scary there. I think that got a little bit too feisty for Astralis. That's not what they were hoping for. Yeah, definitely not. I mean, I still appreciate it. I like the idea of it. एक kill पर है Apex और इतना trigger कर रहा है वो. Don't whatever you do, don't give vitality away to get back into this game for free. That is not a good idea. So just zywoo left. So I mean, at this point, it feels like vitality. They're getting something that many teams on the T side of Inferno would love to have, which is banana control. The setup from there. I mean, every time they play. Dude, but Device ने इतना wait क्यों किया? So broken. Device it looked like he was caught sleeping. I'm so confused. He definitely had time to get that shot. I'm not sure what's happening. Zip will still catch him, but I mean that's an extra kill on a bomb plant. That's really important. It's weird because Device ने बहुत time ले लिया. He must have been looking at his teammate's monitor or something. No, that's right. Maybe it was like. Yeah, Device doesn't react on him. It's Ace. Yeah, it's his dog. There we go. Snipping at him. He named his dog Ace. Well. What's the matter with that? Nothing. I'm just saying. वो seriously aim लेके. No, not बैठा है वो बस. Not really. हाँ. Aim लिया. Biting his own fingers. Right में aim था flick भी नहीं मारी उसने. Apex क्या कह रहा है? अपन इस गेम का डेमो डाउनलोड करके देखेगा. नहीं, जायो ने डिवाइस को फ्लिक भी नहीं मारी डिगल की पूरा एम रखा है उस पे. We're starting to come back into the wheelhouse. Still डिवाइस में कोई रिएक्ट नहीं किया.
difficult. He should be taking a lot of damage. And yep, sure enough. क्या चल रहा है भाई? भाई ग्लेव कह रहा है, ग्लेव कह रहा है तुम नहीं रश कर रहे ना, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ. It's only fair that it ends up 1-for-1 trade. Device will also get dropped. Device face it level 8 or what? भाई सो क्या खेलते खेलते हो? And he's going to go back and play a position you can actually very easily grenade, but I guess he's just banking on the fact that they maybe won't. Dupree trying to line up. He's going to get the one kill, swings even further and almost catches up the grenade, and finally they put an end to him. So 3-on-3, and Magus down in the pit, and actually missing the spray, but Magus is one of the best players in the world. He takes them down. Not exactly what I had in mind when I was saying that, but I guess it was. Oh, headshot, zywoo! He just runs into the fight, not even afraid. It drops Sip, and now he's got the health and the bomb as well. He's got every advantage right here. Only thing he doesn't know is exactly where Device is, but he's figuring that out one step at a time. ये चलते चलते सो जाता है. Let's see. Tom and Jerry भाई चल रहा है. तू मेरे आगे मैं तेरे पीछे. If Device doesn't have a kit, there's no way for zywoo to know that. He's hiding inside of the smoke. He's hoping that he comes that way. Device, I don't know. Time is running out. Smoke is going to be fading. Device is right there, and zywoo's playing this so perfectly. There's nothing he can do to win this one. What a beautiful round. 3 kills, and once again, it's zywoo trying to save Vitality. He's actually top fragging the server. It's another triple for zywoo. Runner up on his team. Nivera has 4 kills. And an assist. Device की बंदी का मैसेज आया On the था. other side of things, Dupree 11. So I mean, that's the difference here is that Astralis, if they've got Dupree, if they've got Magus, if they've got these guys who are actually fragging, unlike on Overpass where they just vanished, we didn't see anybody really stepping up and performing on an individual level for Astralis on that map. Here, we've got Dupree who's up there just getting those kills. Magus and Glaive as well. Glaive actually awake this time. So pink mouse. यहाँ पर गलती से किसी ने पानी की बोतल गिरा दी ना मजा आता है. They just have to find a way to deal with the raid boss. है ना Rishit land पे. zywoo right now. zywoo को pipe हो जाएगा. Bye bye. मेरा seriously मन कर रहा है land पे खेलने का. मेरा भी यार. मैं जब ड्रीम हैक गया था मजा आ गया था. Johnny, तू मैं कुछ Johnny. Anshu सारे इधर बैठे. Like that was. It's like KaIdo, they just gotta wipe and keep wiping until eventually. Eventually they're gonna run out of rounds to play with. Let's see. 6-3 right here. AK's back in the hands. A lot of the money for Astralis is gone. So I mean, there's a big window of opportunity right now for Vitality. There's something they can do with this. If they win this next round, maybe Astralis will try and go for a crazy force if they save some stuff. But they're gonna be stretched really thin. So I think this is. Not the entire first half is going to be settled on this round, but I think a fair bit of it, or the momentum is certainly going to be switched if Vitality can pick up a round here. They've read this perfectly, so they've really done a great job. They smashed Vitality so hard in Banana last round that they've correctly assumed that Vitality wanted to swing A. And so you have the 3 set up, Dupree and Magus, focused on paths. They totally had this. But now Vitality are getting cold feet. Again, Misuda just taking damage. No matter where this guy goes on the map, he's eating HEs. Doesn't matter if it's Banana, A-side apartments, like the guy is he's just a shrapnel magnet right now. I mean, I think what they wanted to do here was clear out Banana, then go for the 3-man push out of apps with flashes and grenades from middle, and it seems like they're actually holding on to that in spite of everything. So let's just see. Magus got a double nade last time. He still has a nade down there in pit. I don't know if he's going to throw it up into the apps, but if he does at the right time, it could be beautiful. 35 seconds, and here come the first line of grenades. They're going to be going right down. Magus caught completely blind, but it's a double hit setup, and Dupree, he only gets the one device inside. 25 seconds on the clock, and he can't keep it up. He wanted to go for that and just buy more time with the spray. Apex not winning the fight against Sip. Now it's a 2-on-2. They do have a smoke. Yeah, that smoke from Nivea is going to be huge, and they have a follow-up Molotov even that they can put up there. So I don't know. This retake will be very tough. I think for Astralis. Pickup line चाहिए, naughty boy. But Zai was alive. Pickup line काम आ जाती है कभी कभी. The boss is still here, just roaring, and now Glaive having to work his way up short. He is going to be the one taking point. यार निवेरा तो ऑपर है ना. एक भी बार इसको ऑफ करते क्यों नहीं देखा मैंने? Nivera will be the first point of contact here. He draws attention to himself, and that sets it up for zywoo to just eliminate them. Glaive though with a beautiful shot. Whips around, puts the pressure on Nivera. Nivera has to come here and check, and Glaive is ready for it. Not connecting with the bullets though. This is going to go the way of Vitality. Nivera plays it impeccably. Does not survive the blast, but they get the round. They do. It's really important. Absolutely. A little bit further away. But 6
6 to 4. अब जाके क्यों आ रहे हैं That's such an subscriber alert? important मेरे को नहीं round. पता. Mostly because इतना of that late क्यों आ रही economy है? on the CT side. A tactical अरे timeout anti being called now. कुछ कर नहीं सकता था. T side off नहीं करते. Man. And the bank is finally gone here from Astralis. Yeah. Scream's brother is So good. with those 2 rounds in a row, Vitality have It's a good succeeded one too. in Let's actually see putting bro. अब पता Astralis लगेगा. on the back foot. Let's see. Right. Apex के एक kill है. 15 kills. एक kill 10 Apex, I mean, he और ये इतना ये craze रेस कर रहा है. ये भाई, रेस scam स्टार्ट कर अप रहा है, मारूंगा ना scam. आधा हो जाएगा यहीं पर. I think you can tell Apex यहाँ in से the मारूंगा beginning ना is a little दूसरे bit छत पे frustrated. जाके कच्चे में अटकेगा And it is किसी के. ridiculous looking at the scoreline. I mean, yeah, 15 and 7, you see your Eagles are 140 ruining my ADR life. Nice on choice, Zywoo, yes. but again, the drop-off is still Thank to you. Nivira at 6, then 3 भाई on the इसका shooter, then कैमरा 2 on कहाँ पर RPK, है? and 1 on किसका? Apex and kills. But that's वो exactly जायो what I का said, it was just भैंस worth जो कभी 3 guys स्क्रीन right के now. अंदर घुसा But look रखा at है what क्या? Astralis have done. 110 Omega Lul. They How have about forced what into about this bro? round. Simple. What's this gonna look like? What about Actually simple bro? think that's Simple a is little God. bit bro. mad. क्या I think क्या? this What is a about little bit simple what? crazy. ये बुड्ढा If you didn't, if you just went for maybe like a couple of upgraded pistols, try to do the best that you Good could. flash. So what? You get Vitality a 5th round, but this is Inferno. Giving 5, 6, it's not that bad. Then you have all of the, weaponry that you would possibly want on the CT side. The fact that they've done this, Wow. I'm Dog so player बहुत worried अच्छा है, I about know, this. I know. Not sure this is the best call, but I'm happy to be proven Oh, wrong. It's looking good here. Could have easily been a Oh, double Dupree. spray. Dupree down here at the max 70. Oh, gets Dupree. one. मजाक चल रहा है क्या Dupree? Absolutely exploding them. And that's the bomb up there. बच्चों क्या कर रहे हो बच्चों? Apex Match is चल right रहा in है. front, and he's Oh. really not had a good game. छोटे हो बच्चों. A little bit of help from device inside of the bomb site. I'll eat my words happily. This force up was भाई ये absolutely जाइप fine. I take it all back. मॉडर्न I'm वॉरफेयर kissing, खेल रहा नहीं the हाँ, tips जब of my पिक्स मॉडर्न fingers of वॉरफेयर how कर रहा है, beautiful that exactly. was. How delicious that round was. Shout out to Okay, Arun this is Pillai. Dupree. This is him just annihilating them as they come through. The reason this works so well is that Astralis just baited them. They threw no nades at the start. इसको देखिए, Vitality have no इसको देखिए. information. ये They're देखिए, thinking that, देखिए, hey, कुछ okay, कर maybe तो this रहा is just नहीं a है. कर ले control, पहले there's तू, gonna हाँ, be some तेरे pits, जैसे we're अर्जुन gonna आते be हैं, aggressive, we can get in here. Oh, And watching. they're running into they're running into वो तेरे showers, स्ट्रीम में they're running अरुण into पिल्ला है ना? guns, and they just get completely वो मेरी mauled. बिल्डिंग में रहता है They वो. just got the wool Oh, pulled over Arun their bhai. eyes. And now दोस्त है मेरा. Apex, he's not having this again. He's charging top Arun banana. bhai, He's दोस्त like, बदलो. okay, we're gonna get क्या up कर रहे here, हो? we're gonna do it right. We're gonna put the pressure on and force you to use some nades. Yeah, probably hoping. Oh, अरुण भाई ये flip. अबे भाई. Something done, even just for ये him देखिए एपेक्स लोडू personally. का पिल्ला. भाई इसको Over खेलना ही at नहीं mid, आता I mean, I Apex think को they तो. wanted to swing back here, but the smoke will pretty much ये shut तो that ये down. गाली खाएगा भाई भाई एक बहुत किल. गाली So खाएगा भाई. good. है And ऋषित now, एपेक्स. I mean, they You have Samu to with be the simple naked. for That that, surely bro. is what this round is वो about. आरपी वो बुड्ढा भी साला 2 किल पे ही है. आरपी. All the आरपी के आरपी के. क्या Rivera, बोल रहा he just can't catch a break. अरे You see it आरपी too, के like, है. these guys are just getting pummeled. Lep- Astralis पता नहीं क्या बोलते हैं, how to like, pronounce. utility damage at the end of this map Zywoo is को going to देख be भाई, off ये the देख, charts. ये देख. It's actually going to be disgusting. वो अकेला कैरी कर रहा है बे सबके किल 6 2 1 Found a 3. Molotov coming out. Modern Zip, warfare, yeah, modern he sees warfare. a couple of people out there. Only one of them with an AK. Oh, That's the real भाई threat at हमेशा the बच moment. रहा है. Yeah, Samu, he's Oh, gonna modern get, warfare. actually, the shooter with a headshot there. Samu मजाक trying है through क्या? the smoke, and I think one of the tracers showed Magus will pick it up. ये So, टुंडो तभी फिर कहते से हैं, तभी बच कहते गया. हैं no स्मोक थ्रू bomb मत मारा plant and करो. 1 versus 3. मारे ना, दोनों मारे keep ना. their cool here and just slowly overpower him. अब Yeah, निकाल नाइफ not निकाल है really हिम्मत fighting है him निवेरा के लड़के. too aggressively. Knife and निकाल रहा है, eventually they'll आराम. find the kill. So, no bomb Yeah, plant. the MP9 अरे gets the kill. यूपीएस एंड डाउन्स होते हैं आरपी के प्रॉब्ली I still- फटीग दिया या I think for a long यार time, देव को गए एपेक्स भाई. especially भाई during ग्लेव like, बहुत रश the गई है. absolute ये देखो, उतार prime गया. Astralis, ओ ओ ओ ओ. Okay. might have Hi. just been, I need to run to the bathroom. Maybe, Possible. So, I think especially in their prime, I think Astralis was भाई seen as एपेक्स sort रेंज of like नहीं the, फ्रेंच you know, the बिहेवियर है. most क्या textbook बात है team भाई that did फ्रेंच everything that you would बिहेवियर want to है. do You if need to had have to some teach hard other people pick. how to play like the best version of Counter-Strike, but they weren't always like the most Oh, miss कर दिया. necessarily creative Trash or player wild. Apex. And भाई for that एपेक्स reason, किल I के think the लिए fact that इतना they आगे forced बढ़ it रहा है in this ना. round, that goes पेशाब outside लगी of होगी. that. You know, like that's the sort of stuff you would say, yeah, many other crazy teams might try and do that. Maybe not so much Astralis. And I just think that's really interesting and, यही and मुद्द shows दूंगा वरना. that, you know, even they are ओ evolving their पड़ा game, I think, नेड. to some ओ extent. -66. Dude, Oh! it's like Oh, every ये round Apex they're पे doing थे. 60 damage with an HE. Yeah. एपेक्स की लग गई. The argument there, Anders, are like the point to take away from that maybe is Apex
इसको smoke से मार मेरे दिया को एपेक्स का रिएक्शन देखना है सीरियसली ब्रो सब तोड़ दिया उसका smoke through मार दिया Apex को I want to see एपेक्स का रिएक्शन दिखाओ यार इसका नहीं चाहिए हमें एपेक्स का दिखाओ now we're going to get that full buy. Now we're going to get everything. And I expect तो एपेक्स का रिएक्शन दिखाओ ना कीबोर्ड पे सर मार रहा होगा अपना Apex का है vitality. If अरे Apex is उसको going to try and दिखाई keep नहीं putting रहा together अबे big कुछ plays, बोलिए it's, ओ भाई a good time to get in here and just punish them because we really haven't seen
all that much activity. गाली दे रहा है No, it's not that at all. Apex मुझे क्यों तोड़ा? Apex Glaive पूरा is ट्रोल कर रहा है भाई Apex की क्या किस्मत है बिना बात मर ही जा रहा है They keep having this banana control and are allowed to get it this much. भाई फिर से Apex मर गया. Normally you would love that on the T side. It would give you a lot of options to work with, and not what we're seeing flashed in. Sip was flashed as well, but I guess that doesn't even matter. Modern warfare, bhai. RPK, who's always had a very, very tough map so far. Mivira gets tagged to the wall. This is looking so dominant for Astralis. Navya कहती Apex ऊपर आके बात कर. Just silver lobby talks. Required for them to get back into the second half. Apex जाके Legends खेलो भाई Apex. Apex जाओ भाई. कोई और गेम खेलिए. You know that force-up situation. Apex से तो बढ़िया ही है. चुप साले तक घटिया जोक. Apex तो abandon कर देना चाहिए. Race quit कर गया था अभी. For Glaive, 158 for Zipnix, 196 for Device. 100. The guy who's slacking is Meg. It's 82. Come on, dude, pick up the pace a little bit. Except the top guy on Vitality has got 64. भाई Apex jump कर रहा है तो मर रहा है. Smoke में खड़ा तो मर रहा है. There's no nature coming in for Vitality. चल रहा है तो मर रहा है. भाग रहा है तो मर रहा है. वो kill लेने जाता तो मर जाता है. Flank कर रहा तो मर जाता है. Flank कर रहा तो मर रहा है. Rush कर रहा है तो मर रहा है. Stay कर रहा है तो मर रहा है. Vote kick Apex 1 on 10. Try and block him out, but that'll also signal that they're coming. So it's nice shot. There's no perfect way to do it at this point in time. You don't have the time for it. You certainly don't have the manpower. And there's another grenade. zywoo in a 1 versus 5, and he's going to go down 10-4 in favor of Astralis. मरने के बाद भी कुछ कर सकता है. I mean, again, बिना बात ये तो बिना बात ऊपर चढ़ा यार. absolutely beat them up Vitality का IGL पर I think Apex ही है. so impressive. हाँ Apex ही इनका IGL Astralis तो. just look completely बिना बात unfazed. ऊपर They चढ़ा don't है. care. They're back, ready to fight, ready to win and get that spot in the grand final. तभी So worth mentioning, man, you're 600 grand for first place in this tournament, and you're one match away now. You're one half away, pretty much, Astralis from securing at least a chance at that in the grand finals. And those will be coming up tomorrow night. I mean, if you are tuning in. Either of these teams, right, would be considered a favorite going into the grand final. Whatever, you know, so whoever gets there, free, trying to spray through, and Device. He was in middle, so everyone was focused on that balcony. As soon as that gunfight breaks out, that is... It's unbelievable what's happening here. They are just picking them apart down the middle again. Reloading will finally get to pre-killed, but... At this point, it doesn't even really matter. 2 versus 4. Misutra and RPK. Apex has left the game. This has been just a world-class CT side out of Astralis. Silver Again, I'm very, very impressed. Maybe a bit early here, but you know, Astralis just establishing themselves as the top team on Inferno in 2021 as well already. I mean, they're making a very good case for it. Just cut to the chase. तुम भी खरीद लो एक गंगनेर. ओ बाहर अबे निकलेगा वो. पकड़ डिवाइस पकड़ ले उसे. हां बस होल्ड कर. थांबा. ओ अरे थांबा. लेफ्ट. RPK can get in. Left. There's no flashes though, so they have to do it dry. Device lining them up. Not quite a 2-for-1, but Masuta, he's forced into making it, and that will be 11-4 in the first half. In favor of Astralis, who are now just 5 rounds away from taking this incredible series. We're going to have to see a hard mental reset for Vitality. They need to get back in here and fight in the second half. It's coming up after the break. Apex team snipe करता है, हग रहा है. मैं पानी लेकर आया. जाओ. Dupree finally 8 से kill ले रहा है instead of Hog. Yes, bro. देखा अभी. Whack. Let's go Astralis 11-4. Good half, guys. Good half. Very nice half. क्या लगता है guys? कौन जीतेगा? Spam in chat. Let's go Astralis और अपना Vitality. Vitality और Astralis. अंधा spam कर दो. जो सबसे ज़्यादा देखेगा वो जीतेगी. जिस टीम का सबसे ज़्यादा spam होगा वही जीतेगी. भाई ये वाइटैलिटी कैसे हग रही है पता नहीं भाई. निवेरा को खाना नहीं मिलता क्या? भाई सब यही बोल रहे हैं निवेरा को खाना नहीं मिलता. सारा खाना स्क्रीम खा गया, मोटा हो गया. हाँ भाई उसकी बॉडी देखिए स्क्रीम की. Astralis 90 अकेले शुरू. Astralis जीतेगी क्या? ऐसा है क्या? Astralis जीतने वाली है. Apex setting help how to play. ट्यूटोरियल ऑन कर रहा है Apex अभी सेटिंग्स में जाके. ओ भाई. Astralis भी लाइक
और भाई आगे स्वाद मजे लेने थे ना। निवेरा 800 DPI प्लेयर नूब, वाओ। ये लेफ्ट साइड में देखो गाइस, ये वाला बहुत अच्छा है। अगर नावी फॉर्म में हुई तो नावी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। मुझे लग रहा है नावी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। आई रियली फील इट ब्रो। नावी ने डिसअपॉइंट नहीं किया अभी तक एक भी बार। पहले किया था। प्रैक्टिस मैप है, ये सबके लिए अवेलेबल है या सिर्फ इनके लिए? ढूंढना पड़ेगा यार क्या मैप है इस नाम का, लेकिन बहुत अच्छा है मैप। टीम ब्लास्ट प्रीमियर का मैप होते हैं ये वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पे बहुत सेक्सी मैप है यार। अरे हाफ है भाई, इन्फर्नो में गांड मार ली बे। जीत गया ना साले। नहीं जीता नहीं, हाफ चल रहा है 11-4। इसके बाद सीएस खेलेंगे काइडो। दुपरी बेसिकली इसको खाना ही नहीं मिलता सही में। इसकी चिन कितनी वो है यार, शार्प। ये सारे सिल्वर लॉबी के चार्ट में भी लिख डाल दे चलता है वही ना। ऋषित बीइंग गे फॉर अगर नावी फॉर्म में तो चलेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस लिक्विड क्या डिस्पॉइंट नहीं किया, लिक्विड के कुत्ते जैसा मारा था भाई। क्या बात कर रहा है, वो वाले मैच में न्यूक वाला मैप नहीं देखा तूने? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस लिक्विड बैक शॉट मारा जब उसने। वर्कशॉप पे मिलेगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सबको हरा देगी सिंपल को छोड़ के। आई विल बी इन डिफिकल्ट पोजीशन टू सपोर्ट इफ नावी एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों आ गए तो। बोकू नो पीकू देखा है? Boku no Pico, nahi bro. Welcome back, ladies and gentlemen. 11-4 in the first half in favor of Australia's final map. And we are ready with that second half right about simple, now. bro, simple. And you know, here it is, replay of Shoxy just trying to get in, giving a bit of support from the back line right now. And you know, the one thing that is crossing my mind is why is Shoxy sitting on the bench after the poor performance he's given us on the first two maps of this series? 28 frags on Overpass, and then you bench him in favor of Nivera, in favor of Masuda, the young guns. But why aren't you swapping one of those guys out with one with the other? Why are you taking Shoxy out of the picture? Apex if Vitality don't recover here in this half, that is going to be a question that the coaching staff is going to have to answer. I'm so glad you brought that up. So I don't have a good answer. Right now it doesn't look like it's the right move at all. Let's see what they can do right now. Zywoo has more kills than his entire team combined. Like the four of them, he's outdoing all four of them at the moment. And that can't keep happening. They have to step up right now. Or it's going to be Australia straight into the grand finals here. They're 5 rounds away. First position, first prize there is $600,000. So you don't just want to give them that ticket right now. You've got to fight for Inferno. We know they can. We know they're going to be a good team on this map, but they need to step it up right here. And it looks like Astralis have cleared up Banana. Now they're back towards the middle. And Vitality have 3 men here, but if they lose one of these fights, this bomb site's going to get overwhelmed. They have to win the first battle, or I don't think there's going to be a chance of stopping all of the Glocks. So let's just see. Oh, there's Nivera with one. He's going to get overwhelmed. And the spin. Dupree turning around. Double kill. And that's the A bomb site completely gone. And there's your answer to Zywoo from Astralis is Dupree with 22 frags, 5 assists. And getting those 2 shots right there, he sees that pinch coming as well. Yeah. He is so good. And he was doing a lot of the work as well on these maps. I mean, Dupree has been a standout player so far for Astralis. But now let's see if they can pull this off. Apex and Zywoo, the raid boss is still alive, Anders. I mean, there should be no way, but we keep saying that, and it keeps happening anyway. He's essentially walking into a 3-way crossfire. His teammate is dead on the other side. Apex got shut down, and they're just hiding from him. And he does not get the chance here. So 12 on the side of Astralis. Look at how careful they play around him, though, in that sort of scenario, knowing that it's Zywoo alive. Do you think that he has that same presence as Kenny in his prime did, where players are saying, like, I've never been scared of a player until I played against Kenny, and he scares me? I'm sure that there is that feeling where, you know, you hope, you should probably not check the scoreboard, but if you do anyway, out of just a अबे RP की और Apex दोनों पे भाई इतना बुरा खेल just don't peek Zywoo. Whatever you do, don't peek him. I think there are a few players like that in the world where that is what happens. Now I will say this though, for the pistol round, that actually was not. It looked like maybe that was sort of Oh gaya. Dude, the stuff is actually getting out of hand, and it had to be Apex. It had to be Apex. It had to be Apex with their HEs. It's actually stupid.
ये बंदा मेरी वाली गलती कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट में गलती कर the रहा kill है। there on Arch and he doesn't get caught if he falls वही ना, back. ऋषित को साथ This is a completely different round and suddenly Astralis, because they're not going to chase अरे him क्या forever. करूँ यार, And the अब two अंदर people से at Arch that Stop pushed being in, that got trash. killed by Dupree, don't have to do that. If Nivira's falling back, it's all fine. They can fall तो back भाई as जो well. है वो Suddenly है, it's 4 and 5 and everything is stabilized. So Apex Dex तोड़ेगा, it Dex तोड़ेगा doesn't Apex. look like it was just, again, the trouble is they're so close when it breaks out that you just have to win so many fights. They're going to find an empty bomb site, which is fine. Yep. Perfectly fine as far as Astralis are concerned. And Vitality, they went for that gamble. We've seen this as the new strategy. I mean, it's a common strategy, let's say. If you feel like it, you stack on one side and you just try and save whatever utility you have, whatever you've invested into this round, try and save it for the next round. Nice. Dupree's not going to allow that, though. Oh. And take him down long range with that Mac 10. Just keep being really annoying. And I mean, Dupree if you're with Astralis, SMG it's Rambo really not mode. worth risking too much here. RP के बुद्धि की जगह शॉट लाओ यार, है ना? Yeah. Oh. Don't lose the AK. Definitely don't lose the AK, but this is also maybe RPK को देख, अब जाके किल मिला 3 और 15 पे RPK. This is again where I probably agree. RPK को भी अभी एक किल मिला, 2 पे ही था वो भी। हाँ हाँ वही ना, They अब could have definitely lost a little bit more there, but at the end of the day, they do take it all away. जरा कम करिए और छोटे किल कर. That's just actually just Could be. anti-eco bully. That could very well be. According to the best IGL ever. Best IGL. Dude, Like. Astralis are fixing to have. अबे ग्लेव बहुत रश करता है। ग्लेव रश, हाँ ग्लेव का aggressive game है। They are setting themselves up to have a वो 10 कौन था? अबे G2 का After original that कौन Eagle था वो? Madness on हाँ World वो Pass, पूरी they टीम never को कॉल saw आउट दे देते anything. हैं और फिर रश No more. Double nade. Fallen Made नहीं in case there was going to be NBK a NBK crazy NBK. rush. We have some deagles in NBK right play. NBK. And the tower Oh, of them over oh, here, oh, oh. they're going to get immediately Apex मर गया. मर गया। Apex मर गया. don't want it to hang around. फिर But से गया Apex. realistically, barring anything mad, this वो पहले should के be 30 सेकंड 14 जिंदा ही to नहीं रह पा 4, रहा. and then we want to go on something that feels like a 12 round in a row comeback, just not dropping anything, just completely clean. There's absolutely no evidence or nothing to suggest that that's going to be happening. You just don't see it in their play right now. So I think Zeus was the if best. it does नहीं, happen, it'll Zeus be was good, but surprising. oh. We'll be excited Shot to है see यार it. Masuta. Masuta Glaive getting पता है a क्या shot there करता on है? Dupree is a pretty Glaive- good start, but he does end up Charles alone Star as Major, his so teammates Glaive best run down IGL. middle to get caught. The Well, ball is yeah, far well, away you know from what? him. You No are apparent like क्या reason. कहूँ मैं अरे थोड़ा सा accurate ग्लेव कर ना रहा हूँ. पता है क्या करता है, सुन ग्लेव ना पहले पूरी टीम को कॉल आउट देता है, फिर ना खुद रश करता है। अगर उसको किल मिले तो ठीक है, मर गया तो फिर पूरी टीम को मर लीड गया तो करता पूरी है। strategy change, You हाँ. got your quota of kills, Sharks, you're out. Right? Yeah, that's it. You bet your quota. Now it's time to. It's in his contract. NBK भाई best Everybody gets a IGL है trophy. ना. Everybody needs to भाई get their अब जब kills. भी Apex I मर रहा है for you. बहुत हंसी आ रही I है. actually think this is the Casters closest भी thing हंस you रहे हैं could भाई, do पीछे to sort of put Casters Sharks भी हंस रहे हैं in भाई. a living hell. He's already a player. I know this from talking Glaive to is him Fragger, many years lol, ago, हाँ. that already, whenever he's Glaive dead Fragger and around, IGL. we'll look at his teammates and think, man, if only I could वो have ऐसा played लगता है that अगर मैं कॉल scenario, देता हूँ I उसके could- बाद अगर मैं now नहीं that's मरा what उस it's जगह like पे for him तो all आगे the time on चलेंगे. this map. अगर I मैं मर can't गया तो even strategy change. I mean, ऐसा I है wouldn't Glaive rule का. it out that Sharks eventually is Carrigan going best to अभी just तक. push one of these guys out You of their agreed, chair right? and Well, just say, you know what? I wouldn't agree Forget what completely. we've मेरे planned. हिसाब से That तो is NBK back. best है. Yeah, so they're gonna Apex have- is getting I mean, kicked. Yeah, look at the utility damage here. 285 from device. I was wondering if somebody's भाई going नेट back to डैमेज नेट डैमेज देख जरा. Like that is so stupid. Yeah. हार्ड टू गेम यार. I don't Vitality even खत्म है mind the भाई. Masutra and Nivira. Sort of the swap pairing between those two, I think is fine. I have no objection to it at all. Oh, There's no Nivira, doubt that it looks a little bit strange with Good Chocks boost. out of the mix. ये वाला Nivira, boost match that's में a करेंगे nice हाँ. boost, a nice flick, taking down device, and this is absolutely the last Mid chance peak for boost ना Vitality बुलाते to हैं do इसको, mid peak boost. anything in this series. We are going to have to see something great out of them. Masuta the anti spray, यार spray does आ not गया. quite connect. Glaive stays alive for a second long. ओ एपेक्स को किल मिल गई। अबे Apex ये क्या हो गया? किक करो भाई. हैक कर आरपीके को भी मिल Now गई। it's Megas can sip. 3 और Left 4 हो 2 गया. versus क्या 4. बात है. And they can just relax here. Vitality, चलो this ये is मैच where you ऑस्ट्रेलिया want जीत गया यार to सरो. fall back to the fundamental stuff. Never Never give them a chance, especially with Sip alive. भाई Just don't do ऐसे it. अगर अच्छे प्लेयर ना There's होते a तो focus they on wouldn't be IGL Shanxi's ना. discussion, obviously, but Apex that's his third kill, and that's RPK's fourth kill. Apex yeah, we yeah. like drop दे दे भाई. They've been इसके बाद इस बार पक्का completely इस लूंगा. इस बार Yeah, पक्का एक बार drop दे दे भाई. it can't just be zywoo Carrigan के लिए driving perfect engine, है. थक देते हैं. making everything happen here for the Carrigan team. JW का player ने यार. But JW भी अच्छा we need the rest of this team to wake up. Apex नहीं hack पता है. नहीं नहीं
नहीं Fnatic का आइडल पता है कौन है? कौन? Golden guys यार. भूल गया था मैं. Apex. बहुत time जाने Right idea. Does crouch right under, but still आधे fine. लोगों को लगता है कि Just some क्या good info. ये लोग हैं, but नहीं Magus actually has the Golden bomb, है. and he's making his way out there. So they're really far apart. It's going to Apex be, you know, gets triggered. भाई वो the table Defensive तोड़ Vitality देगा. doing a lot here. Yeah, And it Kelly comes Pixel to come to the nothing. like कर दो Zywoo will जैसे take Kelly. down Magus. That's a beautiful flashbang to Flash set दिया it up देख. with. Yeah, there's nothing Sick can do again. Anshu, They're going to go right, fight him. They don't really Anshu, have to. right. They could just leave भाई him alone एपेक्स here. को मार दे प्लीज. Apex को मार दे please. Yeah, 10 भाई seconds मार दे. also boxed in. उसका trying to aim make भी it, but Apex पे था अभी. just gets down with the flashbang. They were looking at that from top mid, including the AWP there on the Vera, but he'll make it out. He'll save the AK. Good round, solid round. I love it from Vitality. Any Drop flash one for Magus now this round. And Glaive can drop for Dupree. And we have a fully bought up Astralis. So actually him backing off and saving that AK turns out to be a pretty big play on his मैं part. तो कह रहा हूँ sell back करो और It's still eco very रखो. early days right now from Vitality in terms of just saying like, oh, this is Zywoo what का they need to face do. level 4 They kind of need to do everything 4600 है right साला now. monster है. So it's a Wow, it's a yeah. tough one. You know, they KaIdo, भाई. what's the meme? You know, they just need to KaIdo. improve their nades, their crosshair placement, their trigger squid. You know, like, just keep it and click heads. Just do about 200% better in every department, and it's going to be good. Early days, one round at a time. It is the mantra of every comeback. Apex आ गया We've है क्या? seen Apex crazy है वो? comebacks एक before, Anders. Worse ones than these. मैं सोच It अरे is हाँ मैं possible. लॉल It is लॉल always possible. These are the top two teams in the world. So if any of them is going to be able to pull it off, it's going to be one of these two teams. Now, Apex Vitality, A पे बैठा है, they've got veteran players here. हो जाता है. Apex A पे बैठा They है should be यार. capable of keeping their आ रहा है आ रहा दिया Right on the other side, they're going to push out. They wanted to surprise them. अब Apex Gets a मरेगा. double अब anyway. Apex That मरेगा. could have been the भाई, other one zywoo right बेचारा, then and there. zywoo. If he just gets बेचारा traded, zywoo. there's nothing they could do. Now Apex, he's going to get smoked off. I don't know if he can catch anyone for the smoke. He's actually thinking about running मरा, through. मरा, He's मरा, got last no backup here, and he भाई still फिर भी एक gets a मारा. kill. Zip I mean, late हो गया. hard to say if it's worth it or not, but certainly better than going straight down. So Apex 2 on पीछे 2 पीछे for the रहेगा afterpart, and जीतेगा. Vitality should नहीं भाई कहाँ absolutely से go for जीतेगा? this. I कहाँ से mean, जीतेगा? otherwise, shoot you're never around going to make it actually back here. They निकाल सकते have हैं. a couple नहीं, of नहीं, grenades, they have a निकलेगा. kit as well. नहीं निकलेगा. Well, yeah, it might just all Molly come down to नहीं है this. ना? They're Zywoo not going to have a lot carrying to fight with silver, after I it, know, so right? Astralis, Sip, and Dupree. भाई What इसकी about सिल्वर the नहीं है भाई वो लोग Molotov तुम लोग goes उनकी in? जगह पे बैठ के So दिखाओ now they तुम can't even make it through their Abbe. early run. This might चल गया actually, क्या? the retake might दो- almost minus 40. be done with here. Oh. They've been slowed down. More grenades right on top. It's so disgusting, isn't it? And RCK, he can't do anything there. Double kill for Sip. 15 rounds for Astralis. A single round. Utility damage देखा तूने उनका अभी सही दिख रहा है. है. इससे बेटर यूटिलिटी वो एवेंगार का अगेंस्ट खेला था ना फाइनल्स में. हाँ वो चला दिया था भाई बंदे को साइड के अंदर. राउंड इन्फर्नो में एक ना एक को मार रहे हैं anybody. भाई वो तो बनाना होल्ड कर रहे थे. लिक्विड के अगेंस्ट उन लोगों ने मॉली शॉट मारा था याद है साइड पे बंदे को जला दिया था. वही ना खड़ा From बेचारा says it all. फालतू में चले गया. What can you do? सेकंड ऑन You पे are getting उधर से इधर जा रहा ट्रिपल बॉक्स पे जा रहा ट्रिपल बॉक्स जाते बंदे को मॉली था. 3 मॉली फेंक के मारी. ट्रिपल बॉक्स के उधर मॉली डार्क के उधर मॉली उधर हाथ पे जाके जला है. ओ वाओ भाई They ran वाओ. right into that. Apex मरा क्या? नहीं, Apex ने flash दिया था. Zywoo मरा, Zywoo. Apex ने फ्लैश दिया था. अबे Zywoo कीबोर्ड ना मार के Statement, Apex के मुंह पे Anders. जाके I mean, मुंह से Astral निकलता is coming. I mean, this yeah. is This is the an Docker incredible shooting. statement on a third map, Inferno, which is usually the This is 30-rounder, Zywoo, right, where you Rivera, expect it to be a Anchox, bloodbath going back and Anchox, forth. Apex. Yeah, I know, Astralis right? establishing Apex अभी themselves बोल रहा here होगा, कोई as ना the मिराज में number one खेल team in the लेंगे. world. They have just annihilated कोई नहीं Vitality. इसके बाद खत्म हो Next गया year, game. but next year bro, lunch I break है would अभी. say lunch if break. you replayed this particular, just on ये you round just का replayed MVP Inferno Majid in को 5 days, Apex भी like I Apex would भी like not कोई rule ना it out कोई ना that मिराज में Vitality खेल would, लेंगे. you know, चूतिया flip लास्ट मैप था. the sides and just be and Bad shut them shot. down. I just Uttari, really think that Uttari. the बोलेगा, rivalry between match these point two पे बोलने को आ रहा है तेरे को teams ये. is one of the best we have मैं in सोच global रहा था offensive अभी है and हमारे पास I 25 think round. almost ever had. I think it's बोला अभी है एक such मैप a है high पूरा. level team. Apex Like, both सबसे of them are चप्पल just such खाएगा. high Apex level. को तो कुत्ता बनाया So जाएगा I भाई. really enjoy तो this. गोली भाई बनाया Zywoo जाएगा. बेचारा Vitality कितनी कोशिश कर रहा है definitely भाई. 21 kill shocked भाई. to find exactly how good जीत गया, Astralis जीत गया. are खत्म है on भाई. this map. उनकी टीम में Device device with a top nice है ना. clean flick to take down Apex. The नहीं, only Dupree thing है. is the bomb is in second mid, so theoretically they could get caught and run out of time. It's not looking likely. They're all rotating through खत्म CT है भाई. spawn. गेम ही Forget the खत्म है. theory. जीत गया. 30 गेम seconds खत्म on the clock, and Just go away. but Sip is even. I think he heard them. He heard them run out. So yeah, they might. You got 20 seconds, boys. Megas is still sitting in Like B, but charger now लेकर they've आया actually मेरा. made themselves this very difficult for them. You know, look at this. Device is going to get caught. RPK and Mesido are here.
here. 15 seconds on the clock for Astralis. Megas is really deep in. They don't know that he's up this close. 9 seconds left, and there's no one to stop the bomb from going down. So, yeah, that looked really odd, but maybe it won't even matter at the end. They were so confident. They were just like, we got this. It's fine.
well, confidence. I mean, why would they not be? They've done everything right on this time map. This has नहीं been देते such a retake power करने का, इतना performance mall out ही of the नहीं Danish देते। side. Masuta goes down, Nivira the last one, and Astralis, I mean, they're going to be the first team in the grand final. Nivira going to be found 16 to 5. It took all 3 maps, but we have told you found our Australis finalists right here, and they definitely deserve it. Absolutely power performance coming out from them. Oh my, table तोड़ दिया. Showing it all there, not Table happy तोड़ one दिया. bit with the Table decision तोड़ made दिया. here. Listen, Oh, monitor तोड़ दिया. I respect that. There's no doubt about the passion coming out here from Vitality. They put their hearts and soul into this, and why would they not be upset that they can't find any way to get in on Inferno, really? You're going to make some calls, and I think that's what's going on right now, and Apex cannot be happy with it, but I imagine there are calls made from the coaching staff on Vitality thinking this is what we've practiced, and this is what we're going to stick with, which is having Shoxy bench on Inferno and putting in, Sido and Nivera. And it's not a knock on them. It's just perhaps it was a little bit too much change given Shoxy's form, certain decisions, and this is the sort of learning curve that Vitality are going to be in. They're a team that are actually trying to make the sub model work. And they're figuring it out. They're going to be some भाई Apex था भाई अभी फटेगा साला भाई उसने Apex के टेबल तोड़ दिया अपने लास्ट में देखा क्या तुमने हाँ देखा मेरा अकाउंट देखा बिस नहीं मेरा अकाउंट that poor monitor of course is Inferno Australis वो तभी हंस रहे थे वो तभी स्टार्टिंग भाई डिवाइस को जो क्लच मारा था ना एक भाई बहुत well Australis are up 2-1 कमाल खेले यार कमाल का खेले so but there's still a chance because this was an upper bracket match मजा आएगा आ गया they aren't लिक्विड out of देखने it में मजा आएगा नहीं नहीं यार लिक्विड के लिए अभी मन कर रहा है अब खेलने का अब मन कर रहा है CSGO खेलने का मेरे को लिक्विड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखना है coming up right after the desk. लिक्विड वर्सेस नावी अभी होने वाला है भाई लिक्विड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से कितना पहले अभी तो फिर भी नहीं है भाई इतना It wasn't all the rounds that we expected there. It wasn't the clash of the Titans we were hoping for on Inferno, but it was a spectacular performance coming out from Astralis. Just absolute dedication to what they're known for, what they're good at, and Vitality, well, they had no way in. Yeah, this map followed the trend that we were talking about in the series between Vitality and Astralis. It is more often than not that the third map is a landslide, and I don't really know if it's because of the amount of energy and focus both these teams put into the. चलो guys, let's play. आ रहा हूँ. Let's play some CSGO, guys, boys and girls. Let's do some godlike gameplay. शूट मारी पंती. Let's go some godlike gameplay वाला सीन करते हैं. आ जाओ. Fuck, -6k. Manthan, so sorry for you, bro. Manthan. कभी कभी हो जाता है कभी कभी हो जाता है किसी को इनवाइट दे गो कर दे हम 4 काफी हैं दिग्मा तो नहीं है टॉक अबाउट में कम शॉट्स अरे इनवाइट दे वापस इनवाइट दे नहीं वो नहीं है गेम 2 थोड़ा थ्रोन बाय ऑस्ट्रेलिस गेम 2 नहीं ऑस्ट्रेलिस अरे ओवरपास वाला वाइटैलिटी हां ओवरपास वाला ठीक है रुक उनके हाथ का गेम था बात तो सही है रोक दे ना शूट है क्या ऋषित लेकिन मजा आएगा इस अपने अब तुम लोग बताओ मेरे को चार्ट में जो है कि कैसा लगा तुमको मैच अपना समरी दो चाहे मैच का भाई हाउ वाज द मैच और 40 को देख के ही बेनाम कौन है बे मेरा दोस्त यू श्योर इनवाइटेड व्हाट मैच एक सेकंड ऋषित काट एक मिनट काट ईयरफोन निकालो मैं हेडफोन लगाऊं काट तो हो गई भाई बेनाम हाँ अब ठीक है गाइस गो कर दे ऋषित लेट्स प्ले CSGO वेटिंग स्क्रीन पे लगा देता हूँ मैं तब तक तुम लोगों का और 40 को देख के ही तुम लोगों को बूस्ट मिलता है भाई हम जब भी कोई प्रो गेम देखते हैं ना इंस्टेंट खेलने का मन करता है उसके बाद am I right boys यस तभी तो खेल रहे हैं तभी तो अभी खेल रहे हैं एकदम मजा आ रहा है एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी जीतेंगे ब्रो अभी कांड फाड़ देंगे अभी करना जो करना और कभी टाइम मिले ना मिले ऐसा ही सीन है तेरी माँ की चूत ठीक है भाई माँ की चूत दुआ करते हैं भगवान तुम्हारी माता जी को भी दे बे यार ये बहुत पहले मारा था मैंने जोक still it's funnier than your face you bitch अरे मम्मी पापा कैसे हैं मम्मी अभी भी मम्मी की तबीयत खराब है भाई पापा ऑलमोस्ट श्योर हो गए हैं और भाई तो ठीक ही बैठा रहता है खराब ही साला मेरा भी नेक्स्ट टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा मोस्टली जब भी होगा 1-2 हफ्ते में
मैं भी एकदम बराबर हेल्दी फील कर रहा हूँ अभी। टेस्ट थोड़ा सा गया हुआ है अभी, टेस्ट वापस नहीं है मेरा। पानी पी कर आया, मेरे को एक्सेप्ट हो जाने दे पूरा। ये बंदा मेरे बिल्डिंग में रहता है, कवाई। आई एम बैक बॉयज। अभी हमें नाम ही नहीं दिख रहा कवाई, ये क्या है? मैं कास्टिंग करूंगा थोड़ा। उसको जॉब पे फुल स्क्रीन कर ले अभी, करते हैं अभी वेटिंग टाइम के लिए। पीवी प्रो स्टिल लेजिट, कोई फायदा नहीं पीवी प्रो का ब्रो। जितना अमाउंट मिलता है उससे दैट इज यूजलेस। इससे अच्छा तू जा गोलगप्पे खा ले। 2 words to explain the match, Apex kicked. क्या मैच था। एपेक्स पूरा चैंप की तरह खेल रहा था। उसने एंड में मॉनिटर और टेबल दोनों तोड़ दिया। नहीं चैंप एटलीस्ट खेल लेता है। हाँ, और वो पैसे वेस्ट नहीं करता, मॉनिटर नहीं तोड़ता। हाँ वो गरीब है तो वो गरीब है, वो मॉनिटर। Let's go guys, let's go। अलग ही फील आ रही है। चैट में सबको गुड नाइट नव्या, गुड नाइट। कल मिलते हैं नव्या, बिल्कुल मजा आ गया यार आज मैच देख के। ये बंदा ना कवाई, ये चैंप का क्लासमेट था ये। अबे छी यार, क्या बोल दिया। I used to like him, but तूने ये बोल दिया तो ठीक है ब्रो, अब से नहीं। सब दिल से हेट चैंप को। क्या ब्रो, सेम एरिया में था वो चैंप। फुल हेट भैया, हेट बाजी हो रही है गाइस। देखने तुमको को मस्त 1 वगैरह वाचिंग स्ट्रीम चालू है। हाँ ब्रो, हाँ चालू है। अबे कोबे, अच्छा नहीं मेरा दोस्त नहीं, दोस्त तो नहीं है। गैप इंस्पेक्टर अल्केमी। हाँ चले क्वींस गैम्बिट देखने, हम चले क्वींस गैम्बिट देखने। मलन उसका क्या हुआ, पिन लेने तूने मुझसे तो 600 में दोनों डन करता हूँ मैं। एपेक्स या फोरसेकन ऋषित ब्रो, आई चूज ऋषित। तुम वो दोनों तुम आपस में रखो, अपने पास रखो भाई, हमें नहीं चाहिए। चलिए फुल स्क्रीन करते हैं, ये मैच को खेलेंगे हम। You know what to do and so do I। 5 से 550 चल 550 में डन करते हैं। क्या 550 में डन कर रहा है? लड़की ले रहा हूँ मैं, बंदे पिन बेच रहा हूँ मैं। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है वो? स्क्रीम की क्या बॉडी बनी है, बाप रे भाई, स्क्रीम कुत्ता है भाई। हेड लगाओ उसे। कॉर्नर में मारेंगे। आई मेरा सीडी देख काइडो। नाइस। साइड ले ले, कोई साइड ले ले। बन गया 90 प्लस। डैम यार, 9 टैग दिया मेरे को, एक को 90। अरे यार साला ये एक को 9 टैग दिया। नहीं एक को 9 टैग दिया, एक को 11। किसको 9 टैग किया, किसको दिया? डीएम के और 11 टैग अल्केमी इंस्पेक्टर वाला जो है। तूने किसको दिया? मैंने हर्ट्स को 81 टैग, वो 81 टैग दिया। मैंने सिर्फ एक ही बंदे को टैग किया, उसको भी 110। भाई स्क्रीम ने कुत्तों वाली बॉडी बनाई है, देखिए गाइस। टैग नहीं बोलते, गवार के लड़के उसको मारना बोलते हैं। तूने एक बंदे को मार दिया, टैग नहीं दिया। एक ही बंदे से फाइट हुई, इसको ही मार दिया। स्क्रीम की क्या बॉडी बनी है, देखिए गाइस किसी ने। अभी मेरा एफपीएस ड्रॉप आ रहा है, डबल डिजिट पे जा रहा है सीधा। डबल डिजिट ज्यादा नीचे। हां पोलिंग सिस्टम वेटिंग करी है। ठीक है। 111 सीटी हट भाई। एक कनेक्टर। ट्रिपल 37 टैग, सीटी 28 टैग। एक स्टेयर्स है। नाइस शॉट। 1v साइड फ्लैश अननोन। हाइड 89 90 टैग। दोनों जंगल दो लास्ट 1 HP 95 75 75 है यार, वो मरा गया। 75 कुछ 20 दिया मैंने भाई, क्या करूं? अरे भाई उसी से कंटिन्यू करना। एंटी कोई ना। एक 95 बोल रहा है, एक 75 बोल रहा है। नहीं 75। ये इसने 95 लगा इसको। मैंने अज्यूम किया था क्योंकि 2 बुलेट लगे थे ना। हाँ इसीलिए अज्यूम किया था। फिर जब मरने के बाद चेक किया तो 75 था। गुड इको। कैमी वेलकम।
मलन 550 में डन करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। पेटीएम नंबर वही वाला है ब्रदर। प्लांट दिया है मैं कुछ बी ऑफ करके गया साले के मुंह पे, डर गया वो। डिंग ट्रिपल डिंग है। नाइस कार्ड। I can flash out, flashing out once. Stairs है। Jumping out. Blind हो सकती है फ्लैश। CT देख रहा हूँ, CT smoking. Scout connector 26 tag. Okay. Shot one. Unknown. Woo! What's up? Scream को CS लीव नहीं करना था, नहीं उसको करना था यार, क्योंकि उस बेचारे को टीम भी नहीं मिल रही थी और वैलोरेंट आ गया तो उसमें वैलोरेंट में उसका एम बहुत अच्छा है। वाचिंग किसका? स्क्रीम का। एक्चुअली स्क्रीम का एम बहुत अच्छा है वैलोरेंट। स्क्रीम का एम बहुत अच्छा है वैलोरेंट में। आई थिंक चॉइस सही था। या आई थिंक चॉइस सही था। इसकी मर्जी है, वैसे हम जज नहीं कर सकते, बट उसको टीम्स नहीं मिल रही थी। जब से G2 ने छोड़ा उसको, तब से उसका लाइफ अब डाउनहिल चला गया। एक पहले शायद रश है। ट्रिपल वन मारो ट्रिपल वाले को। डेड। CT1 बॉयज। फ्लैशिंग सिटी। ना शॉट लास्ट CT। अबे स्मोक के काइडो। अरे लॉल तू कोई 3 किल। काइडो तू मैंने क्या किया भाई? तू सीटी रश करते करते कहाँ चला गया? मैं सीटी रश किया ही नहीं, मैं बॉक्स के ऊपर कैंप कर रहा था। नहीं तू स्मोक में मेरे को जाता हुआ दिखा, तभी तो मैं 20 शॉट देखा। नहीं मैं बॉक्स के ऊपर बैठा था, जो बाजू वाला बॉक्स है ना, जो व्हाइट वाला सिलेंडर बॉक्स। पॉइंट है आई थिंक टेंस और वॉर्डल देख ले, लेजेंडरी है मैं उसका वैलो में, पर सीरियस नहीं थे। और उसने एक्चुअली कुछ चल रहे थे मैच था सीएस में नहीं चल रहे थे। ओह रॉजर गॉड वेलकम। चुप हो जाओ ए गांडू। तो भाई को बॉम्ब दिया मैंने। वो सीटी के पोस्ट टॉक करते थे स्क्वाड। सॉरी रे बॉम्ब ड्रॉप लॉल। अरे ओके अरुण की बंदी एक ट्रिपल वन ट्रिपल। मेरा एम शूटिंग अपनी चेयर की वो सही कर रहा था, हाइट भाई थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। रिपोर्ट करता है रॉजर, लाइक कर। मैं तो कह रहा हूं रिपोर्ट करने के बाद। मैंने नहीं मारा तेरे को, मेरा चाकू घूम गया। 2 मोर प्लीज। कौन 2 मोर प्लीज? क्या तो अपना चाकू दे तू मारा था भाई। 10C9 में सेमी तक भी नहीं पहुंचा पा रहा था सीएस में। तो मैं तो जानता भी नहीं उसको जिसको मैंने मारा। कौन है मेरे ऊपर? छोटा पड़ रहा है क्या रिशित? क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है? अटक गया मैं। क्लोज है, किसे क्लोज है? मेन क्लोज है, उसके पीछे है। पहले सारे का पहले मैं पीछे जा रहा हूं, मैं मिड जा रहा हूं। एक टिकट रुक जा होल्ड कर। मैं मेरा हाथ ठंडे के पड़ रहा है, व्हाट द फक। टिकट ऑफर। एक नेस्ट है, एक अंडर। नेस्ट मारा इसने। सीटी ऑफर और एक अंडर पैलेस। बी क्लियर। आ रहा हूं मैं। मार्केट चले जा। टिकट ऑफर। मैंने 60। ओके। ए उसको मैंने 26 दिया, 60 वाले को। लो है अच्छा। बीजा भाग बी क्लियर है, भाग के बीजा। ये हाथ गरम पड़ेगा भाई, हो रहा ही नहीं खेलने। दिया है तेरा किल है रिशित। वो नहीं रिशित कन आउट। एक और लो है, एक और ऑपर लो है। हां मैं लास्ट मार्केट आएगा। नाइस डू रे नाइस। गाइस रिपोर्ट क्या करना है? क्या रिपोर्ट करी जा रहा है रॉजर? व्हाट इज रिपोर्ट ब्रो? एक ऑफ दियो कोई पैसे रिशित पे रिशित ऐसे चिल्ला है मेरे को देनी है। कवाई ऑफ दियो पीछे तेरे। वो एफ क्या? वो आ गया जिंदा है। अबे रिशित तू गलील के बाहर करके बढ़ गया। अरे F3 टाइप हो वो F3 की हालत ले चूतिया प्लेयर है भाई। छोड़ गली चला रहा हूं। Flashbang out. इसमें के आई गेस अंदर आ गए मुझे। कैसे जाता है भाई? तो
P250 से कैसे मर जाता है रिवर्स से जाके? आगे के टट्टी के साथ तेरे साथ टट्टी भाई नेट में क्या है ये? एक शॉट एक नेस्ट एक टी पे लैडर देख लोअर चला गया यार वो। 85 मैंने 82 दिया काइडो उसको। मैंने कब उसको टैग दिया फिर? तो मारना कवाई तेरे को दलीली भाई मैंने कब बोला वो लो है? अरे कोई शक दिया। ठंडे पड़ रहा घूम नहीं क्या रहा। बात है रॉजर, क्या बात है श्याम? बहुत ठंडे पड़ रहे भाई। मैं ये जाता हूँ, तू भी पे जा। अरे 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 कवाई विद द प्रो कॉल्स। मैं जा रहा हूँ, तू भी जा भाई। सिंपल आता है 1.6 का प्रो है भाई वो। ऐसा चूतिया प्लेयर नहीं हो कोई। हाँ तो मैं ये जा रहा हूँ, मैं भी तू भी जा, ठीक है ब्रो। दो साइड है, तू Short. शॉर्ट से आ रहा है, शॉर्ट से आ रहा है, एक मिडिल कनेक्टर आएगा लोअर। लोअर कौन? तू सीएस कर ले, वैलोरेंट जा रहा हूं। दोनों इधर कुछ एक लोअर कॉर्नर है घंटा में। नाइस बॉल। डोनेट पता नहीं क्या हो रहा है। आई एम ग्लोबल। वो पाकिस्तानियों की छत पे जाके गिरी है कुछ। वो सोच रहे कौन बंदा घर चला रहा है हमारा। बाद में रियलाइज हम पाकिस्तान में रहते, कॉमन है इधर। या रैंडमली हवा में चिंगारियां। शॉट भाई क्या ट्रैश प्लेयर है सामने। क्या पनीक किया है भाई। पेटीएम नंबर दे, ऐसा कौन करता? क्या बात रॉजर। अपनी तरह फेसिक लेवल कितना गया रे? एक्सक्लेमेशन डोनेट रॉजर इफ यू वांट द पेटीएम नंबर भाई। एरर आ रहा। काइडो मिड ऑफ के लिए दे। कल तक पे करता मैं। फेसिट लेवल 8 काइडो मिड ऑफ के लिए दे। फेसिट लेवल 8 भाई मैंने रिशिट को ऑफ दे दी। सर मैं तो टीम फ्लैश करता हूँ। काइडो जा। हां जा ले टीम फ्लैश। हां जुदा बोल रही। स्मोक में मार दिया। वन वे लेफ्ट साइड। कौन है ये स्मोक नेस्ट वाला? लेफ्ट पता नहीं उनका ही नहीं अपने बंदे का है, अपने बंदे का। नहीं हमने मॉली किया था। हम लोग ने मॉली किया था। बस मॉली फेंक के मारा था हम लोग ने नेस्ट में। एक नेस्ट के अंदर था, एक कनेक्टर के राइट साइड पे था। क्लच है चलेगा। इजी पीसी लेवल स्क्वीजी। वन डील नहीं लग रहा आज इतने, लेकिन ठीक है। अभी डीगल खेला ही नहीं हमने। बूस्ट देगा बूस्ट। नेस्ट के अंदर है, नेस्ट के अंदर। ब्लाइंड चाहिए नेस्ट के अंदर फ्लैश नहीं? नहीं शॉट फ्लैंक चेक करके है मेरे। नेस्ट में जा सो जा। हां नेस्ट में मारा था इसने मेरे को। हार्ड शॉट ने ऊपर है। नेस्ट प्लेयर है कुछ जान पे। ठीक है जा। कंट्रोल ले जाके। तेरा ही प्लांट दे रहा हूं। भाग दिया। डन। मतलब एक ऑफ काफी है। एसएमएस स्पैम देखे जरा इसका। कहां है मेरा एसएमएस स्पैम भाई? मैंने 8 दिया उसको। 8 टैग दिया उसको मैंने। अच्छा मनी रिसीव्ड। अरे थैंक यू फॉर द 100 रॉजर। मैं एसएमएस में ढूंढ रहा हूं अपने। एसएमएस में लिखा पेटीएम। इसी बात पे मेरे को कूल डाउन ले लेने 7 दिन का वापस से जरा। थैंक यू फॉर द 100 रॉजर। रियली अप्रिशिएट इट। इसने बोला पेटीएम नंबर दे, एसएमएस बॉम्ब करता हूं। नहीं सबका इवेंट पुश है क्या? मैं बॉम्ब ले ले मैं डुअलिस्ट हूं। हां ये सीने में कर दे, ब्लॉक कर दे। नहीं ब्लॉक कर दे। मैं मर गया भाई, क्या बात कर रहा है? मुंह के सामने आ जा मेरे। मैं मर गया। डुअलिस्ट बॉम्ब लेके गया। थैंक यू फॉर द 100 रॉजर। थैंक यू। अपडेट कर दूं मैं रॉजर? रुक जा। 2 कनेक्टर भाई। जावेरी पिक आया इस पे। जावेरी पिक लेती रे बाबा। माचदा ना बे छपरी। ठीक है भाई, तू छपरी मैं छपरी। बाय बाय। मैं नहीं जानता तेरे को। बाय बाय। दिखा दे यू आर ग्लोबल। Show them your global power. Sorry darling. You sure? Yes. भाई 67 HP हो गया भाई।
नाइस वॉल्स ब्रो। लॉल चालू हो गया रे पपी, ले बोला लेवल बड़ा करके स्टीम। एक डिगल दिया अपनी चाहिए थे कवाई, एक पीछे डिगल दिया पीछे। अबे इसे 5000 तेरे। अच्छा बाय कर ले। डालेगा मैं नहीं करता इको, कब पैसे डालेगा जाओ इको कर करके। अमेजिंग बीहॉप बाय रिशिट। वो जो बीहॉप था ना, सेंड मी ऑन, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू बी फनी, आई डोंट नो। आया नहीं, कुछ आया देर में दो लोग खड़े हैं यहाँ पर। आया दो है ए गैप है स्मोक में। मैं कनेक्टर पिक लेने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे पास हुआ टीवी सिटी ऑफर। टिकट ऑफर। एक एमएन था वो लेके। तो दोनों इधर ही है, मतलब दोनों उधर ही है ना, मतलब एक टिकट एक एमएन। या नहीं एमएन नहीं 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 गलतफहमी में हूं। हां दोनों उधर है। तेरे स्मोक्स की वीडियो देख कर है क्या भाई? तो तुम लोग को स्मोक सिखा देगा सालो वो। ना वो मेरी स्मोक्स की वीडियो देखा है, तू जेलस है और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स यस आई एम जेलस कि वाचिंग छोटी हाइट का है। मैं यार भाई हाइट पे क्यों जा रहा है भाई? अटैक वेरी थर्ड ऑन दो सिटी इसी शॉटगन से क्या पिटा भाई? देखो पिटा हुआ। सीटी देख रहा हूं फुल। ऑपर सीटी आया है। शॉटगन सीटी। डेड कर दे मैं, चल मर जा। ऑस्ट्रेलिया इन अ 1v1 सिचुएशन हैज एन AK इन हैंड। नेड इधर पे। ये बात अबे फटने देता यार इसको। अरे पापी बोला रहा है तेरे को ये। अभी भी पापी बोल रहा है देखो भाई। माल दे कुछ माल दे। पीछे तेरे पीछे। अरे कवाई ऑफ देना मेरे को। किधर है? कौन है? सामने अबे नहीं वो नहीं। अबे रह गई यार। आदत हो गई तेरे साथ रह के। हाथ से चली गई ऑफ मेरे। लिटरली एक फ्रेम दिखा मारते हुए उसका शॉटगन से स्ट्रीम पे। ऑन डी इसने को ऑफ से डिंक दे दिया। मैं शॉट स्मोक कर रहा हूं। इसने को ऑफ से डिंक दिया गाइस। बंदे किधर? चेयर अरे भाई मैं गंदे एंगल पे चला गया था बहुत। कोई नहीं वन स्टेयर्स। ठीक है रुक जा मैं पहले से आ रहा हूं। रश हो गया ऋषि तेरा है। अरे ऑफ से डिंक अनएक्सपेक्टेड है ना। हेडशॉट पड़ा मेरे को ऑफ से। एमएन 1 स्टेयर्स रशीद ये बंदीज बहुत बार वॉक करके साइड चले जा। नहीं जा सकता ना? अच्छा जा सकता मैं। बिहाइंड यू पैलेस वेट कर ले उसका। वो चेक नहीं करेगा तो गधे का बच्चा जंप कर गया। क्या दिया है? तेरा मेन अकाउंट का क्यों तू पागल है? क्यों दिया? मत भाई मेन अकाउंट पे जाके ट्रैश टॉक करते हैं, फेस इट को रिपोर्ट करते हैं लोग। कवाई डिगल दे भाई मत करा कर मेरे से। हां भाई मैं खुद नहीं देता भाई। आज तक मेरा अकाउंट हम दे देते ना भाई, ऐसे हमारे दोस्त लोग यूज कर रहे हैं, हम खुद दे देते ना मेन अकाउंट। हम नहीं देते, वो ट्रैश टॉक करते हैं जाके कमेंट सेक्शन में। साले आप गलत टाइम पे जंप। ओ कल बेटे कल शॉट और बेटी आएगी उसको शॉट आएगा ऊपर। भाई सारे डब्बे उड़ के जा। ऑफर टिकट मैं टैग हुआ शॉट वाले से। जा इधर है तू मेरे। सीटी मैं पीछे जा रहा हूं। सीटी बीच मार गया मेरे को वो। शॉट पे एक बंदा, एक कनेक्टर है। ऋषित का ब्रेन बफरिंग ऑलवेज ब्रो, ऑलवेज बफरिंग पे रहता है ऋषित का ब्रेन। डिले में चलता है ऋषित रियल टाइम में। इकलौता ऐसा बंदा होगा वर्ल्ड में जो डिले में चलता है रियल टाइम में। आई एम ग्लोबल। मेरा माउस हां हगने के बाद तो माउस जाता ही है। माउस पैड वगैरह सब जगह। इस बंदे को चीटर बोल रहे हो। इस गंदी टट्टी को चीटर बुला रहे हैं भाई। It's not like we started playing yesterday. Global है ना शाम, I know right?
कैसी कर रहा हूँ सालों, शर्म करो तुम लोग को। कहाँ है कैरी? मेरे को तो दिमाग खराब कर रहा है भाई, उसको अच्छे से बोला नहीं है हैकर। 3 राउंड क्लच करके निकाल के दे रहा हूँ ना, हार रहे होते तुम। बहाने है भाई, ये तो कहने की बात है। ऑफर नेस, अरे मैं भी छूटों की तरह बड़बड़ करके जा रहा हूँ भाई, इसकी माँ का लोड़ा है भाई, है तुझे पता है। कुछ बनी ऑफ मार के बाहर निकल रहा हूँ। नहीं आ सकता। एक स्टेयर्स, जंगल, एक स्टेयर्स, एक जंगल, दो ऊपर, जंगल एंड स्टेयर्स। फ्लैशबैक। वन मोर कनेक्टर ऊपर। भाई कह रहा है एक एपेक्स इज इन योर टीम। ऋषित तो तेरे को देख रहा है। कौन? श्याम। एपेक्स है भाई तुम्हारी टीम का। अब बोलेगा टिकटॉकर बोले, इतनी बड़ी गाली मत दे भाई। मैं पीनट ही निकाल रहा हूँ यार, बस हो गया भाई। मैं ट्रिगर कर रहा है बस, और कुछ नहीं भाई। बी चलते आ जाओ। ओ भाई 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 भाई, मैं रुला दूं उनको। कुछ may I take this heat from your hands? चालू कर रहा है अभी भैंचोद माचोद में। Please. May I take watching it deagle दे। Please take the step forward to kill them. Okay bro, as you say so. Legit खेल और फिर दिखाता हूँ शॉटगन से। मैं क्या चल रहा है भाई इन लोगों का? अबे ऋषित चूचों की तरह शॉटगन से जाके मर रहा है। राउंड तो बज रहा है। बॉम्ब ले ले कवाई, बॉम्ब ले लेना। फ्लैशबैंग। युग चिल, युग का है भाई, युग है ही नहीं। बी शॉट वन। निपा बी शॉट रशिंग। ऑपर डोंट पिक ऑपर। एमिन फ्लैश करूंगा। ये तो ऑपर शॉट पे ऑपर। टैग है। आ जा वापस जा रहा हूं। शॉट एक ट्रिपल है। नाइस शॉट में ट्रिपल एक बी शॉट पीछे है गया चला। सुनो तुम लोग मार रहे हो नाइस शॉट मैन, मैं मार रहा हूं मार चला। मतलब क्या ये प्यार है भाई। काइडो ये ले यार। ना भी हो तो भी दे देता हूं भाई, मैं क्यों चलाऊंगा ऑफ? नहीं चाहिए, मैं P90 चला रहा हूं। अबे तो क्यों बज रहा है? देना फिर। अरे दादा कोई टिप्स दे दो कम्पिटिटिव सीन में आने के लिए प्लीज। अरे यार हमारा कम्पिटिटिव आने के बाद खत्म हो गया हमारा कम्पिटिटिव आया कहाँ भाई? आया था जब हम लोग बहुत किया हमने ग्राइंड, अंधा ग्राइंड किया हमने। 98 अंडर पैलेस। काइडो भाई कनेक्ट कैसे नहीं हुआ क्या मालूम? लैग हो गया। हो गया भाई। पीछे 98 अंडर पैलेस 98 बच गया। क्या चूतिया गिरी है भाई। देखो कम्पिटिटिव सीन में आना है ना अगर, तो सबसे पहली टिप आई कैन गिव यू इज दैट डोंट रिलाई ऑन योर टीम, रिलाई ऑन योर सेल्फ। अगर टीम के भरोसे रहोगे तो नहीं हो पाएगा, अगर टीम के भरोसे नहीं रहोगे तो तुम खुद इंप्रूव करोगे, एंड दैट इज़ व्हाट टीम्स लुक फॉर। सिंपल है, इतना बता सकते हैं। एंड कम्पिटिटिव सीन में इंडिया में इट्स वेरी रेयर टू गो एनीवेयर नाउ। वैलोरेंट इज़ द न्यू थिंग। वैलोरेंट फोकस कर रही है इंडियन प्लेयर्स पे, इंडियन सर्वर्स पे, एंड वैलोरेंट इज़ एक्चुअली काफ़ी फंडेड, फुली फंडेड। CSGO डजंट स्पेयर फंड्स फॉर टूर्नामेंट, सिंपल। तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड्स के लिए जो करा रही है मैचेस वगैरह, वो लोग भी एक टाइम रन आउट ऑफ फंड्स, ऑब्वियसली दे रन आउट ऑफ फंड्स। तो CSGO इज नॉट दैट ग्रेट। इफ यू वांट टू गो फॉर प्रो सीन, ट्राई टू स्विच टू वैलोरेंट, सिंपल एज दैट। CSGO इज नाउ ओनली फॉर फन एंड हैकर आते हैं यहाँ पर। फॉर सेकंड इमेज बिगाड़ दी। यस हैकर मेरे को शॉटगन से वन टैप देगा। तो शॉटगन है भाई, वो उसका एक्यूरेसी 100 होता है सब। यार वो 98 टैग है ऋषित, थोड़ा ज़ूम कर लेता ना, मार देता। सबको म्यूट कर। अरे वहां पर नीड किया। How do I get from GN1 to GN2? Just grind. Have a warm up routine. 15 minutes every day before matches. Warm up. Red TF incoming. तो खेल क्यों रहा हमारे साथ? मेरा 1.5 KD है CSGO stats पे. Lol. That is high. That is high. हमें क्लियर है। जाके देखो भाई, मेरा बहुत बुरा है उसमें अकाउंट। मेरा मेन अकाउंट भी 1.8 है। एमे नहीं आ रहा है। कवाई उधर जा। माइक ऑफ। कहां है? ए पे जा। कुछ भी इधर। मैं बी पे ही बी देख रहा हूं। हेलो मैदर चोद। फेक है कुछ आई थिंक। कंट्रोल मैकेनिक्स बहुत गंदा है भाई। कंट्रोल
और ग्रीन मार अंडर बस गया बी वाला गया लास्ट पैलेस डिफॉल्ट आएगा ना। मत ले मैं लो रे काइडो भाई मैं 1 HP हूं। बम पे जाओ दोनों के दोनों बम पे जाओ। आया क्लोज आया अंडर पैलेस बम जाना उधर जाना। वेयर इज बम अंडर पैलेस ब्रो अंडर पैलेस जस्ट रैंक अप इजी क्या बात है। अंडर पास वाचिंग एबीएस नोबड़े सस्ते आदमी टट्टी आदमी दैट बुलशिट क्या है सामने वाले रो क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हार रहे तो रो रहे हैं, जीत रहे हैं तो ठीक है। क्या है इनका? खत्म कर रहा भाई मैं बस। मैंने तो म्यूट कर दिया भाई सबको सामने अपना। नया वाला शुरू करते हैं भाई। मेरा हो गया बोर हो गया मैं बच्चे। मॉलिंग है Throwing fire. Smoke. Throwing flashbang. बी क्लियर है पूरा बी क्लियर है। क्लियर तो मेरा दिमाग है भाई। बी डीप तक क्लियर है पूरा। टॉप में हुआ हां टॉप में रहेगा पैलेस कवाई मर रहा मैं। अबे यार एक किल अबे एक किल आने दे काइडो। हाई मिड वन एक पैलेस तू तो भाग के गया तो था। मैं फ्लैंक में मार रहा था ना। काइडो ने हर किसी को 1990 टैग वाले को फिनिश कर दिया। अबे हटना लौड़े किल छीनना है मेरे को। मैं तेरे गोली मार दूंगा काइडो। भाई कितना टैग दिया इन सबको मैंने। क्या यार हरकत ही ट्रैश है काइडो तू। मर जा कुछ मर जा ऐसे। नावी और G2 नावी हो गया ये सर आपका -70 जैसे रैंक 4 किल्स स्टोलन। देखते हैं अभी टैग कितना दिया गाइस। जरा चार्ट में तुम देखना मेरे साथ ठीक है कंसोल में। आओ जरा मैंने सबको कितना दिया मेरे को देखने दे। 57 69 46 46 एक को मैंने सिर्फ एक को 32 दिया है, दो लोगों को 64 दिया है, एक को 130 एक को 70। मैं बैक स्टेप दे रहा हूं। ये बंदा उन्हीं को मारी जा रहा है जिनको मैं बैक स्टेप दे रहा हूं। 5 के ऑन द लाइन बोलो नावी G2 वर्सेस नावी में कौन जीतेगा? मिल गया फाइट किया है भाई मैं। SMG भाई ये वाचिंग इतना बज रहा है डिस्कॉर्ड पे आवाज ही नहीं आ रही। G2 वर्सेस नावी में कौन जीतेगा बोल जा रहा हूं चुप ही नहीं हो रहा साला। नाइस कार्ड डिस्कनेक्ट करो इसको स्क्रीन जा रही भाई चलते हैं कर दिया भाई मैं सीरियसली। पैलेस क्लीन कोई नहीं है ऊपर उधर। G2 जीतेगी मंथन। नावी जीतेगी आई मीन नावी। सात दिन का कूल डाउन मजा आ जाएगा। 7 दिन बे मैं अंडर पास आ रहा हूं। कोई फ्लैश मांग मत मिड पे रे। नहीं एप्स काइडो एप्स। हां ठीक है ना। एक और है मेरा आवाज आई। बाबे बॉम्ब मैंने बाद में नोटिस किया है। 54 टैग एप्स के अंदर बॉम्ब था। 99 बेंच वाला भाई मेरे को पहले पता था। 72 दिया मैं 99 नहीं था वो कुछ। भाई मुड़ना किसको? बेंच वाले को मैंने उसको दिया इंस्पेक्टर अल्केमी को दिया था मैंने। अच्छा मैंने हॉक को दिया। अगर लगा सीधी 7 दिन का तो मजा आ जाएगा। लगा था उस दिन ही मजे कर रहा था काइडो एंड लग गया। ए मैच दरे लग गया था उस दिन बड़ा मजा आया था। एपिक सीन हो गया था उस दिन तो। Get your ass up. जिंदा कैसे रहे अभी तक? 3-4 गोलियां खाई है। एक और सॉरी ब्लॉक कर दे सारे। क्या यार गेम नहीं लग रहा। पीछे से भाई
ये चाकू मार गया काइडो। मेरे चाकू कर दिया मेरे को। मैं तो म्यूट करके रखा, बच भी नहीं सकता हूँ मेरे नाम। कुछ कहना चाहेगा काइडो? मेरा ध्यान भी नहीं है कि सब मर गए, अकेला जिंदा था मैं। काइडो कुछ कहना चाहोगे बहानों के अलावा? नाइफ हो गया यार, रिस्पेक्ट से माइनस हो गया है तो इतना जो बज रहा है ना, इतना जो बज रहा है ना, कभी वैलो में खेल लिया कर। वैलो में क्यों? इस गेम में हो, उस गेम में आओ ना। तो बोल रहे कि तेरा 2 किल कम है अभी भी। वेलकम बियर डाला के लिए ले वाइड पिक में तेरी मार छोड़ता हूं। डिंक खाया हुआ 60 डिंक क्या हो रिशित? एम एन 1 ऑफ टॉप मिड 31 टैग डिंक क्या हुआ? शॉट कनेक्टर आ रहा है रिशित। अरे लैग आउट हो गया रिशित। बी शॉट गोइंग इन, बी शॉट आ रहे कवाइड। दो लोग बी शॉट साइड सारे मिड। तीन बी शॉट, दो बी शॉट। कुछ जल्दी जा ऑफ पुश कर दिया। एक 71 टैग है, वो 40 टैग था, 31 मैंने दिया। हेड नहीं पड़ा उसको। टैग ऑफ टैग -70 हेड नहीं पड़ा मेरा। मैंने 1 इन हेड पे लगा। दो लोग 70 टैग था, दो लोग हेड पे लगा। अरे गुड ट्राई यार। मैंने पैलेस में 1 डिक दिया, 16-1 लगा उसको। हेड पे लगा उसके थ्रू, वार्डन के थ्रू। डैम यार, मैंने पैलेस वाले को हेडशॉट मारा था। आर्मर खा गया क्या गाइडो तेरा? तो हेलमेट बाय करके क्या करेगा? एक से मरने वाला वैसे। ट्रू नो बाय कर लिया कर, क्या पता ऊपर से फाइट हुआ, उसका शॉट में से ब्लॉक निकाल लिया तो। भाई ये इतना डीप सोच के खेलते हो ना तुम। शायद तभी वो ग्लोबल है। तभी ग्लोबल है बोलने वाला था मैं। शायद वो तभी ग्लोबल है। एमएन 1 गया मिनिमम। एमएन स्टेयर्स का स्मोक फेल हुआ उनका। होल्डिंग अंडरपास। एमएन फ्लैश अंडरपास आया। मैं नेट एक बी है, दो बी है। ए हैंडल कर लूंगा मैं, टेंशन। भाई क्या फ्री फायर मार के क्या मैं ऊपर चढ़ा। क्या बॉम्ब दिख गया कुछ? अंडरपास लोअर कॉन्स। Are you sure? Grenade out. अबे अरे शेर भाग दिया भाई। शॉट कैप ऊपर ये शॉट 50। ऊपर अच्छा कर रहा है एनिमी। हां अच्छी ओपनिंग कर रहा है यार। एनिमी ब्लू है कौन? DNK। वो कुछ बजरा भी नहीं है ना, वो खेल रहा है अपना चुपचाप। ये क्या हर्ष बजी जा रहा है? बट काइडो इज माय क्या बिच ये दिख रहा है। ब्लाइंड कहां है तू? अबे मैंने म्यूट करके रख दिया हम लोग These fellas are gonna regret waking up this morning. ये लोग कौन सा रियल लाइफ में आके बजने वाले हैं? मंडी मारना पड़ेगा। मैं रियल लाइफ में तनके घर में आग लगा दूंगा। इधर आने दो ना इनको, भेज चलो कोई एक टांग पे घर पे जाएंगे वापस। छोड़, ऐसे लोग से पंगा नहीं लेने का। इसलिए तो पंगा नहीं ले रहा मैं। किधर है डीगल? आ रहे थे डीगल भाई। शॉट जा रहे हैं शायद। लोअर कॉर्नर नेक्स्ट के अंदर 70। अबे 88 दिया भाई उसको मैंने। अरे कौन ही मैसेज कर रहा है यार? अबे मैं हेडशॉट मारा यार स्पॉक को। 64 in 1 70 नहीं था, 64 in 1 था, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सही था। सेटिंग चेंज करो यार मैसेज। कमाल है यार, हेडशॉट पे भी नहीं मार रहे। 64 in 1 42 in 1। मेरा रिएक्शन रेट बहुत गंदा चल रहा है फिलहाल। वैलो खेला था ना सुबह हमने, इसलिए मैं तो 2-3 दिन से मस्त वैलो में फोकस। मैंने सेंसी बदल दी वाला। नीचे ले आया मैं सेंसी बहुत। नाइस। Incendiary out. Throwing fire. पहले आएगा। Put up a smoke. सारे तार है। स्मोक कर दिया मैंने। Incendiary. कर दिया। अब मैं भी जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। Flashbang. ठीक है, वाचिंग तो कर। सेफ हो जा। जंगल ओपन है कुछ ध्यान से। Fire in the hole. उसके हाथ में है बी यार। मैं देख रहा हूं। कुछ कनेक्टर की तरफ चले जा। मेरा यूटिलिटी पड़ा है।
पेमेंट पे था। किधर मारा है? हाय मेरा लास्ट के लेट के मार में आया ना। इसकी एक लगता हूँ। आधा मिल गई। इजी है रे सामने वाले, इतना पता नहीं क्या है। हम टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ। हर्ष के किल कितने हैं? बज रहा है इसके। उसको बोल बजने ज़्यादा गेम पे फोकस कर लेगा ना, करने लगेगा किसी। बीजा काटो, बीजा ऑफर है ना, बीजा। ये था ऋषित, मैं मेड ऑफर हूँ भाई, ऑफर की जगह तू खेल रहा है। अरे भाई एक और है भी, अब जाओ उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अरे एक और शॉट हाई मिड क्लियर, फ्लैशिंग साइड कुछ बाहर निकलने के लिए रेडी हो जा। बेंच टैग हट जा, टैग वन HP बेंच बैक साइड किंग मार बैक साइड। किंग बैक साइड हिट नहीं है मेरे पे। बी पे मारना बंद करो यार। बी पे क्यों एग्रेशन में क्यों मार रहे हो बी पे? दैट फ्लिक कतई पिघल गया। मैं करता हूं हैंडल, बी जा रहा हूं मैं, मुझे बी जाना चलेगा मैं हैंडल कर रहा हूं। ठीक है मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ यार। मैं एक खेल काइडो बेंच वाला कौन भी आ रहा है मेरे साथ? एक खेल काइडो बेंच वाला बूस्ट दे दे, बेंच वाला बूस्ट दे दे। ट्राई करना है क्या बूस्ट? हो जाएगा। मिड ओपन है। हां गाइस मिड ओपन है, ध्यान से। मालूम है मैं हूं ना इसके वजह से। पहले बस बैठे रह काइडो, शॉट दे काइडो। खड़े हो। बैठे रहे बोल रहा है, बाद में बोल रहा है। नो वन एप्स। एक मिनट है, फ्लैश है, शॉट फ्लैश है। हां पीछे गया कनेक्टर। एक गेम है। शॉट मॉली कर दिया, तुम्हारे पास आ रहे हैं। कनेक्टर घुस गया, 2 लोग यार। अबे रिसेट तो कैसे मर जाता है इतने ओपन में? -80 है वो। तो कनेक्टर साउंड नहीं, मैं जरा सा पीक लिया, वो एकदम से हेड दे दिया। काइडो जंगल की तरफ जा, फ्लैशिंग यू इन। दे अबे साउंड देके जा रहा है। मैं कैसे मर गया? साउंड क्यों दे रहा है काइडो? वॉक करना, फ्लैश क्यों कर रहा हूं तेरे लिए फिर मैं? अब तो फ्लैश देना, तो मेरे को क्या पता था पुश करेगा, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि पुश अरे करेगा। तू वॉक करना, अगर रीटेक कर रहे हैं तो बंदे के सामने नाचते हुए जाएगा तो कैसे? ऑफ मत दिखाना है। एमएन पुश कर रहा हूं मैं। अरे मेरे पे क्यों नहीं आई? व्हाट? मैंने एफसी दबाया, स्मोक्स बाय हो गए। तू हमेशा ओपन में मरता है और कितनी बार बोला ओपन टेक किल्स मत ले। देख लिया हमेशा ओपन जगह जाके मरता है। एमएन 1 या साउथ करेंगे। हाई मिड 1 एमएन ऑपर वन हाई मिड मॉली करो पैलेस। मॉली पैलेस एमएन जला मॉली में जला थोड़ा पीछे गया। वापस गया, कोई नहीं। वी हैव साउंड है। एमएन एक आगे में आ जा। भाई कुछ भी वॉल थ्रू स्मोक में हेडशॉट, नाइस। कनेक्टर इन। हेल्प नाइस कुछ। 2 टेट्रिस, 1 मोर टेट्रिस, लास्ट टेट्रिस लास्ट। 1 HP हंट कर भाई, 1 HP। लास्ट नहीं चाहिए रे। एमेन भाई 1 HP क्यों भाई? अरे कुछ यार मैंने मर के 3 लोग मारे। तुम लोग को एक काइडो पे पिस्टल लेके काहे जा रहा है? तुम्हें एक का कॉल आउट दिया तूने, हंट कर बोल रहा है तो क्या? कवाई को बोल रहा हूं, तेरे को थोड़ी बोल रहा हूं, नूबड़े। 1 HP का कॉल आउट भाई, वॉचिंग क्या बोले जा रहा है कुछ तो भाई कुछ ने उसको मारा था इसलिए मैं बोल रहा था मैंने। और वो -50 भी आता मैंने। 50 था वो माइनस, और ये मारा ही नहीं। तूने पिस्टल से मारा होगा जितना भी। अबे मैंने उसको 48 दिया है भाई। इसने नहीं मारना, कवाई को मैं बोल रहा था, तुझे नहीं बोल रहा था रश करने को। कवाई का ट्रेड लेने मुझे समझा नहीं, तुम लोग तो पागलों की तरह गए ही क्यों? ये बोल रहा है हंट कर। कवाई को बोल रहा हूं हंट कर भाई, उस पे M4 है। हमारे पास M4 मर जाएगा, ट्रेड ले रहा हूं मैं।
इवेंट पीछे गया। तुम्हारे पास M4 ये सब है, तुम लाके पिस्टल से फाइट ले रहे हो, क्या फर्क पड़ा उससे? कमिट नहीं कर रहे थे वो लोग। अगर 1 HP है तो भी M4 से जाओ ना। फ्लैश कुछ आगे हो जा फ्लैश फॉर यू बाहर निकल। स्मोक नहीं है उनका, यूटिलिटी यूज कर दिया मैंने इधर। स्मॉल आउट मैं चल गया। अरे ऑपर पे शॉट 90 टैग शॉट 90 70 टैग शॉट डाउन है कुछ। शॉट डाउन है। बैक साइड और है बैक। हां गुड ट्राई। कोई नहीं डी रैंक हो गया क्या? मैं डी रैंक हो गया यार, कुछ का पता नहीं मेरे को। भाई मैं 12 गेम लगातार जीता था। थैंक यू क्या बात है गाइस, ये होता है गिफ्ट। कोई नहीं यार, खेलोगे हाँ खेलते हैं कुछ करने को है ही नहीं। और वैसे भी if he crosses 40 is equal to ban क्या? बॉटम ट्रैकर DMG है। हाँ वो बचते हैं, ये जो लो रैंकर्स होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा बोलते हैं। आजा कुछ क्रीड को नहीं यार, अभी वापस ऊपर जाएंगे, टेंशन ना ले। लेज नाइस। हाँ ग्रीन वाले लेज हैं गाइस। ग्रीन वाले लेज बेस्ट है नहीं मेरे हिसाब से तो, है ना? कौन आ रहा है अपने इसमें? कोई और आ रहा है क्या? एक लकी मार्की है, बुलाऊं कैसे? MG1 है। इसका मैच खत्म हो तो चुका है, लेट्स सी अगर आता है नहीं आता। मैंने फ्रेंड लिस्ट में डाल रखा है, मुझे पता नहीं क्यों डाल रखा है, खाली करनी पड़ेगी फ्रेंड लिस्ट। तुम्हारे हिसाब से कौन सा फेवरेट फ्लेवर है लेज का? कौन सा फेवरेट फ्लेवर है? लेज का बोल दिया कर भाई। लेज का कौन सा फ्लेवर फेवरेट है? ग्रीन वाला ना? क्रीम एंड ऑनियन बोलते हैं उसको। क्रीम एंड ऑनियन, हाँ भाई। नहीं पहले वही पूछना चाहिए था। ICSE बोर्ड से CBSE? अंगूठा छाप लोग है भाई ये लोग। गो कर दे फ्लेवर किसको पसंद है भाई? गो कर दे। लड़कों को थोड़ी पता होता है कॉन्डम का फ्लेवर से मतलब थोड़ी होता है। काइडो पूछ रहा ना, काइडो को पता होगा। काइडो तो तू मेंशन करने का बोल रहा ना? एग्जैक्टली ब्रो। तेरे को पता है काइडो उसमें टेस्ट होता है? गो कर दे। मैं तेरे को पता है तो कुछ आस्किंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे को पता भाई, मेरी क्या गलती? कौन ब्लो जॉब ले रहा है? मजा आ गया भाई, पानी पी रहा था मैं ठंडा। मैं ठंड में ठंडा पानी पीता हूँ, मजा आता है। तेरे पास लॉन्ग वाला माउस पैड है, स्मॉल जो नॉर्मल? नहीं मेरे उसमें दिखाता हूँ यार, इतना बड़ा माउस पैड है मेरा। कौन सा वाला तेरा? देख जरा एक बार स्ट्रीम पे देख ले, ऐसे समझ नहीं आएगा तेरे को। मेरा कॉस्मिक बाइट का है। इतना बड़ा माउस पैड भाई, दिस मच। एक मीडियम साइज है। जैसे पूछ भी नहीं रहा साले, टॉवल पे रखता होगा तू तो। हाँ भाई मैं टॉवल पे रखता हूँ, सही बात है, इसको पता है। कॉस्मिक बाइट का है, मैं तेरे को तो थ्रो लिंक भेज देता हूँ। रेड गियर के बेस्ट होते हैं और हाइपर एक्स के। अरे मेरा बहुत लेस नाइस। 337 क्या मतलब? टाइफून, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यार नैनो माउस नहीं दे रहा यार। अरे उसके वहाँ होगा कुछ इशू हो रहा होगा अभी। अबे भाई व्योम भी तो वही रहता है गुजरात में, कह रहा कोई लॉकडाउन नहीं है यहाँ पर, सब बहन के लड़े लोग। मतलब समझ रहे हो? नाना को बोल देना कैश दे दे, मंगा लेगा वो अगर कैश है तो। मेरे पास भी सेम है ना, सब पे सेम है ना भैया, मुझे पता है यहाँ पर सब पे सेम है। मैं अब सोच रहा हूँ जब नया टेबल बनाऊंगा तो वो लंबा वाला माउस पैड होता है ना, वो वाला लूंगा, फुल वाला जो होता है। भेजो। ओल्ड मॉन्ग B6942 B69420 बेस्ट वर्जन। सिर्फ मेरा कीबोर्ड और माउस रहता है क्योंकि मेरा मॉनिटर तो पीछे रहता थोड़ा और आगे फिंगरी पीपल आएंगे। अरे भाई डॉग में मेरे को भी ले लो। DCOD क्या मतलब? DCOD समझा नहीं मैं आप क्या कह रहे हो? डॉग डिस्कॉर्ड क्या? डिस्कॉर्ड वाचिंग बहन की लॉडी। DCOD अरे डिस्कॉर्ड कह रहे हो? अबे यार डिस्कॉर्ड काइडो हमने क्या ऐड किया था कमांड ऑनलाइन में? एक्सक्लेमेशन DBZ डिस्कॉर्ड, एक्सक्लेमेशन दोनों ट्राई कर लो। एक्सक्लेमेशन DBZ डिस्कॉर्ड और एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड DBZ। बेस्ट चीप एंड गेमिंग माउस सजेस्ट करना। लॉजिटेक G102 1000 की रेंज में है। मेरा लॉजिटेक G302 है, वो भी बहुत अच्छा है। 302 इतना वो रिव्यू नहीं मैं हमेशा बट
मैं पता है 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे पास। लक भी हो सकता है, कुछ लक भी मैटर करता है। मैं तो श्राउड को देख के लिया था। फाइंड नहीं वो नाइट बॉट ने ऐड किया होगा आई गेस। काइडो ने ऐड किया था ना वो नाइट बॉट का एडेड है। तो मैं भी चेक करके बताया था। 4000 का नया माउस ऐसे ही रखा है, अभी तक यूज नहीं किया मैंने। ऋषित सुन रहा? ऋषित क्या कह रहा है? कुछ डिस्कॉर्ड पे ऐडेड है क्या मेरे? क्या कह रहा है? कितना पैसा दिया? बस डिस्कॉर्ड पे ऐडेड है तो मेरे भोसड़ी के 300 रुपए का माउस यूज करता हूँ मैं इस टाइम। कमांड्स में था ना अरे टूर्नामेंट्स की वजह से बैकअप के लिए रखा था। एक्सक्लेमेशन डीबीजी डिस्कॉर्ड है उसका वो। आई एम सो सॉरी गाइस, ऐड नहीं कर रखा। आई विल ऐड इट रियल क्विक। यस, एक्सक्लेमेशन डीबीजी डिस्कॉर्ड इफ यू वांट टू जॉइन डॉन बस्टर्स डिस्कॉर्ड। हमने इसको प्राइवेट बनाया था जब स्टार्टिंग में शुरू किया था, उसके बाद फिर ओपन सोर्स कर दिया था जब जॉनी और ऋषित स्ट्रीम करते थे। ओपन सोर्स कह रहा हूँ, ओपन कर दिया था। ओपन सोर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? What? Exclamation DBZ Discord has been added to the description, boys and girls. मैंने पहले करके रखा है भाई। नहीं, डिस्क्रिप्शन में कमांड्स वाली लिस्ट डाल दिया था। मेरा एम इतना क्रिस्प नहीं है आज जितना था भाई लास्ट टाइम। कल था यार, नहीं था भाई, झूठ बोल रहा है यार। ठीक है, लेटेस्ट Amazon में पेटीएम से पे नहीं होता क्या? नहीं, मैंने सुबह ही चेक किया ऋषित, नहीं होता। अगर हो जाता तो मैं वो कर लेता ना। फिर उसमें यूपीआई होता है और वॉचिंग लॉन्ग जा, डिनीस लॉन्ग जा, क्रेंज लॉन्ग जा। ठीक है, इसमें यूपीआई डिमाइस। मैंने डिनीस बोल दिया। डिमाइस दिखा नहीं मेरे को है मैडम। बी फुल वन है बी जा। बॉम्बी डिमाइस में ढूंढना चाहिए बंदा ध्यान से। नाइस काइडो। ऑन साइड मुझे मार ऑन साइड लास्ट ऑन साइड। 90 दिया इसको भी भाई। किस्मत है काइडो तेरी। अच्छा खेला लेकिन काइडो बहुत अच्छा खेला काइडो। पिछला गेम का फ्रस्ट्रेशन। काबिलियत तारीफ। बस और कुछ नहीं। मैंने करा भाई, अगर तेरे डिलीवर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 3-4 हज़ार का माउस के पैसे ही दे दे भाई मेरे को। ओ भाई क्रेंज इतना डेस्परेशन। ये नहीं यार, वैसे इसका माउस सही है ना, बात ही वही है। इसका माउस भी तो सही है। माउस सही है ना। दोबारा स्कैम नहीं करवा रहा अपने। स्कैम छोड़, इतना डेस्परेशन। ए लॉन्ग जा रहे। पहले किसने स्कैम कर दिया? ए लॉन्ग जा रहे। भाई मैं कितना अच्छा बच्चा हूं यार, ऐसा थोड़ी होता है। काइडो दो और है वहीं पर। 1 HP। कौन? मैं लॉन्ग मैं मारता हूं, लोग को रुक। टू मोर लॉन्ग। एक 1 HP है। Deploying flashbang. TV is clear है। I'll flash for you demise. Start. Go peek. Throwing flashbang. क्या डर में डिमाइस W दबा के भागता है। एक और लो। राइट साइड होगा। नेड किल। 1 HP। अरे नेड किल मारना था रे। कोई नहीं। ऋषित सुन मेरी बात सुन। इतना कभी किसी का नो डेस्परेशन दिखाने का नहीं। हम मेरे सामने कभी भी वही ना, अगर वो नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा ना। हम कभी just like it happened with me, right? You shouldn't have asked for so long. कुछ ने मुंह पे बोल दिया भाई। हम अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, टेंशन नहीं। अगर वो मना कर देना तो मैं नहीं मानूंगा। वो कह रहा हां भाई दे दूंगा। मिड वन शॉट हो जाएगा। मेरे बातों के चक्कर में एक और मैं भी कैरिड हो गया। शॉट पुश कर गया उसने। हाईवेड शॉट है। नहीं मतलब शॉट पुश चेक कर लिया उसने। ये मरा कैसे नहीं एक भी बंदा भाई इसका स्प्रे में? ये साइट आ गया। डिमिस गया। अबे गुड ट्राई। वैक मंथन भाई वो वॉल थ्रू मारा मैंने उसको, बढ़िया मारा लेकिन मजा आ गया। क्या? तूने तो मुंह पे सबके सामने मना कर दिया तो नहीं दूंगा तेरे को मैं। कुछ ने उसको बोला था गाइस ऋषित को कि नहीं दूंगा। मना भी नहीं कर रहा। नानो कह रहा है भाई ले मेरे से। अब भाई अगर वो बाद में मेरे को दे दे, अगर मैंने 1.5-2 हज़ार का माउस मंगवा दिया। हाँ उसको बता दे ऋषित। मुझे ऐसा लग रहा है नैनो आलस कर रहा है। ए लॉन्ग जा रहा है एक बंदा दिखाई। नैनो आलस तो मेरे 2000 तो वेस्ट हो जाएंगे। माउस का कोई फायदा नहीं बनता। मैं शॉट पुश कर रहा हूं। बी क्लियर करता भाई। लॉन्ग पे कितने फ्लैश आन गए?
बी क्लियर काइडो मैं भी आ रहा हूं मैं M4 वेस्ट नहीं कर रहा। मिडिल वन। हां मेरे को अच्छा काइडो भाई मेरे को आता है पहले। ये लॉन्ग रिशित। आ गया। हां दो लोग साइड पे आ गए, फ्लैश है मेरे पे, फ्लैश है। कॉल पर फ्लैश कर दे फ्लाई दे। Flashbang. छुप गए। साइड वॉचिंग साइड पे जाना। फट्टू जाना। वही ना, पता नहीं कौन सा एंगल होल्ड करके बैठा है फट्टू। अबे वो तूने शॉट पे रीलोड का साउंड आया, शॉट वाले डब्बे पे था नूबड़े। साइट बोल रहे हैं हम लोग, शॉट वाले डब्बे पे था, डब्बे पे ऑन साइड शॉट वाला डब्बा जो है। मैं खुद मरा ये काइडो मारा उससे। ऑन साइड शॉट वाले डब्बे पे था, मेरे को पता है, मैं वहीं से पिक कर रहा था, कोई जैसे बाहर निकल जाए तो पता है मेरे को, वहीं पर था रे वो। इधर फिर से 7 दिन का कूलडाउन देता। क्या भी जा रही थी? ए सुसाइड वन। लॉन्गा टैग है क्या? पीछे नहीं गया उसने, शॉट किया। हां एक ही उठा ले। तू पीछे जा, तू टनल के अंदर चले आ रही है। बाहर मत आइयो टनल से, अंदर चले आ टनल। क्या वाइड पिक है भाई। 40 टैग है लॉन्ग पे 40 डाउन है इजी। अरे एंटी सेव कर से और क्या करेगा? किट नहीं है इधर पे। नहीं वो जो उसकी नली है ना, उससे गांड कर सकते हैं। जब तक निशान ना बढ़ जाए तब तक। अभी खोल लूं क्या यार, अभी मन नहीं मेरा खाने का। काला नली लाल नहीं होता ना, पीला नहीं होता ना, जब तक काला नली तब तक गांड करते रहे प्लेयर। शी भाई नहीं आएगी को भी। डिमाइस इज मेजरली मिसिंग आउट ऑन स्टफ ऑन डिस्कॉर्ड। कल माइक आ जाएगा, मजा आ जाएगा ऋषित। अरे आ रहा है कल आएगा ना। मेरे को दिखा क्यों नहीं अभी तक अमेज़न में? इसका माइक आ रहा है, मेरी टट्टी नहीं आ रही। व्हाट 30 पॉइंट बिहाइंड पे काइडो क्या शेयर कर रहा है। हां मेरा है तू गलत मरेगा ये 100%। भाई फ्री फायर का कमर पे खाएगा ये। एक टीवीएस में बैठा था, मैं ऑफ निकालता हूं। मेरे को दे के आई लव बी। नहीं आई लव पे मेरा एक आ रहे हैं ना, लगे आ रहे हैं। मैं चलाता हूं। ऋषित कुछ और मैं ए जाते काइडो और इसके डिवाइस भी काइडो भी जा रहा हूं बेटी। मैं शॉट होल्ड करता हूं। मैं स्क्रीन शॉट दे रहा फास्ट। स्पॉन उसने क्रॉसिंग मार्क किया है। मॉली कर पुश मत करना, मॉली करके पीछे मॉली नहीं है क्या? Deploying decoy. zywoo mid out Incendiary out. Smoke out. mid out मैं डोर से बाहर आ गया बंदा। आउट से है, डोर पे आके बैठा होगा पक्का वो। आई एम ब्लाइंड इन कर रहे हैं मिड। Molotov out. नो वन पीकिंग along। काइडो मार मत मिड पे। along smoke out। पुश कर रहा है, मेरे पे कोई बैकअप दे सकता है तो दे दो। मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं टीवीएस ऊपर सीटी में हूं मैं। काइडो एक रश कर गया, शॉट रश कर गया। मिड पुश, अरे बैकअप मांग रहा हूं तब से। रुक ना। अच्छा तू नो वन along push, नो वन along। वन डाउन, वन मोर। एक और शॉट मिड पे आराम से। एक और बीन। वो शॉट वाला अंदर चला गया। तुम शॉट है। अरे C4 बी पे था। क्रॉस मार ये किधर नियर बैठा भाई साहब। क्रॉस कर गया लेफ्ट साइड गया। शॉट रहे बेबी डॉल। क्लच हो गया ना। मैं वो उसमें डिस्कॉर्ड में हूं। हां टाइफून नाउ यू कैन टाइप इन जनरल चैट ब्रो। मैं आपको रोल दे दिया। वेलकम टू डॉन बस्टर्स डिस्कॉर्ड। नाइस शॉट। मुझे लगा कि वो बंदा मिड रहेगा, वो तो शॉट से कूद गया सीधा। कुछ ड्रॉप दे। मैं बी जा रहा हूं आपसे। भाई पास है नहीं यार। बी मेरे को सोलो करने दो, ए जाओ। इसलिए बोलता है A1S चलाओ।
एवरेज बढ़िया है भाई, मेरे पास बहुत बढ़िया सस्ते में आ जाती है। मैं 20 सोलो कर रहा हूँ गाइस, ये चलेगा साथ। मैं शॉर्ट पुश कर रहा हूँ। दिमाग तू मत करना, तो शॉर्ट पुश मत करना। मिड ओपन है तुम्हारा पीछे बी फ्लैश बी ट्रिपल मैं जा रहा हूं पीछे। गार्ड वन मेरे वाले ने कॉल दिया एलटी का। साइड साइड ऑफर लगा के बैठा है अभी भी। कितने मॉली है भाई? की तरफ गया टीम पर। I can flash you in. I'll flash you in. Kush, flash you in. I'll flash you in. Ready? मार गया कार वाला, मार दर Flash in. Nice shot. Tunnel, tunnel. टनल Back side one, tunnel one. क्रिंज 1 HP. क्रिंज हक दिया यार तू। हक दिया करे वो घूम उसको के खा इसको गया नोस्कोप भाई। मार दिया, इतना गंदा आ गया इसमें। तो ये देखना क्या कहूँ भाई, 95 इन 4 क्या मत चला। चलो M4 आर्मर पे 4 बुलेट लगता है वो उसका। बहुत हेड पे एम करता है, आराम से मारता है, आराम से थोड़ा सा आराम से मार के। व्हाट द फक? कौन क्या व्हाट? आर्मर है अपना। अरे मैं लगा इको कर रहा है कुछ। थैंक्स ब्रो, नो प्रॉब्लम थैंक्स। ओह टैग हो गया मिड पे। Against the law if I don't buy anything. लॉन्ग एक बी क्लियर मल्टीपल लॉन्ग बी वन वहीं खड़ा है, बी डोर पे खड़ा है अभी भी, बाहर आ रहा है। लॉन्ग स्मोक किया। निश्चित कैसे टैग हो गया? अच्छा ओके। काइडो के पास 2-3 दो है, कुछ 2 लॉन्ग है। अल्टी वाले को निकालना पड़ेगा, बाद में निकाल लियो उसको, अभी उसको वेट मत कर। और लॉन्ग है बेटी चोद साले। साइड चलेगा कुछ वो। मैं लॉन्ग से जा रहा हूँ। योर फेसिट रैंक 6 राइट नाउ ब्रदर। शॉट गन एक मिड है, मिड डोर है। ऋषित ध्यान से। ऋषित कुछ को एक पंचा दे। अरे नहीं बहुत दूर है कुछ। रहने दे तू, हाइड ले, टीवेस पे हाइड ले। ऋषित का जिंदगी सेव करने में जाने वाला है। ऋषित कोई नहीं, गन आ जाएगी हाथ में एटलीस्ट। भाई शॉट मस्त मारा ऋषित ने, राउंड कुछ भी बोल। भाई करियर खत्म कर दिया बंदे का। जॉब एप्लीकेशन में लिखेगा डिलीटेड बाय क्रिंज इनटू 100। यार सामत वो होल्ड करते करते हक देगा यहीं पे। एंटरप्रेन्योर बनेंगे भाई। आपके रेज्यूमे पे ये क्या लिखा है? हाँ तो क्या कह रहे थे आप रेज्यूमे वाली बात? क्या कह रहे थे आप रेज्यूमे वाली बात? रेज्यूमे आपके रेज्यूमे पे लिखा टट्टी ने आपको मार दिया। अफर्मेटिव मुझे निकल ले। वो भी 3 बार। इसमें तो एक बार लिखा है, 3 बार मारा। वो लोग लीड पे भाई। काइडो रोमाश, काइडो नहीं विदाउट आर्मर चला रहा हूं। हटाओ टेंशन नहीं लेनी काइडो, टेंशन नहीं लेनी। ऋषित टेंशन नहीं दिलवानी काइडो। भाई टेंशन मत दिलवा, सिर्फ डीगल दिलवा और कुछ नहीं चाहिए मेरे तरफ से। लॉन्ग 4 फ्लैशेस लॉन्ग। बी में 4 लॉन्ग है। बी टनल 1 है मिड। शॉट स्मोक हुआ। लोअर टनल के मिड आएगा। लॉन्ग इन आ रहा है। उसका भरोसा उड़ गया इंसानियत पे, उसने मॉली कर दिया कार पे। नाइस शॉट। मिड शॉट स्मोक है। एक टैग हुआ। वन मोर। बी क्लियर। पीछे मैं हूं। मेरे पीछे क्यों खड़ा? मैं नहीं आ रहा भाई। ऋषित उड़ाया जा रहा है लोगों को। ऋषित चल साथ में चलते हैं, साथ में। ओ ऋषित चलने लायक है, साथ में जाने की बात कर रहे हैं। क्या बेटी है यार। माइक ऑन साइड वन वेरी क्लोज। लॉन्ग वन लॉन्ग मेरे को ही देख रहा है वो लॉन्ग पे। क्या वो लॉन्ग नहीं देख रहा कर दिया ना कुछ। मॉली क्या ना उसने लॉन्ग पे। हां दोनों 20-20 टैग है दोनों। नहीं 1 गाइड 20 एक्चुअली। एक 40 टैग है, 20 वाला का 40 दिया मैंने। ब्रो ये राइट लेफ्ट हैंड स्विच करने से कोई एडवांटेज मिलता है? नहीं, इट्स ऑल मेंटल ब्रो, मेंटल। मेरे को पर्सनली एडवांटेज मिलता है बाय थिंकिंग कि मैं एक एंगल ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। भाई ये कौन सी स्पीड से निकला वो सामने वाला? ओ भाई साहब ये तो फरारी नहीं, कोई और ही थी। गाना है ना फोन वाला। वो कौन सा गाना था मैं भूल गया। फोन बिहॉप वाला। नहीं मीम था। यू सुअर
अरे खुश यार तू मारा भाई यार कमाल चीज है। अबे क्या करूं? मिड पीक क्यों ले रहा है तू? मैं ऑपर हूं नुबड़े। तूने शॉट फायर किया वो मेरे को प्री फायर दे गया। मैं तो उससे फाइट ले रहा था तेरे को मिड पे आने कौन बोला? होल्डिंग कैट टट्टी प्लेयर मेरे को ब्लेम कर रहा है। ये कहां से निकल के आया अपनी व्हाट द अबे लॉन्ग नहीं देख रहा लॉन्ग स्मोक ऑफ है। लॉन्ग है लॉन्ग। ये लॉन्ग अरे उन्होंने स्मोक उसके पास। साइड आ रहे साइड आ गए एक बंदा। 1 बड़ी नाइस। माय रेड मैच होना चाहिए एक और यार। डाउन लॉन्ग ऑफर है ना मैं पिक ले रहा हूं। क्लोज ओह शॉट। ऋषित हट मेरे सामने। बढ़िया राइट पे नाइस गुड कौन सी ऑफिस में आगे सेकंड लियो है गरीब। कुछ M4 दियो एक ड्रॉप। ये ले तू ऑफर आ रहा हूं। फिर मरेगा। अरे तूने मिड पे वो शॉट फायर किया ना तो उसने उसी वक्त फायर कर दिया और मैं वहीं पर पीक कर रहा था उसी वक्त मर गया। हां तो गलती से लग तो मुझे क्या ब्लेम कर रहा था साले? हां तो वो शॉट किसने फायर किया पहले भाई? तो मेरा तो काम है शॉट फायर करना। मेरे पास तो स्काउट थी। चिल्ला पकड़ क्या कर रहे हो? मारा-मारी करो ना। Laying down some fire. Incendiary. Grenade. I don't think so. ऋषित पिट जा। Oh. वाली क्या पता सब ध्यान देता है हमारे पास। नीडल ज्यादा ऋषित गलत टाइम पे रश हो जाता है मेरे को। थोड़ा मिट गया ना मोस्टली। नाइस और क्या मिट हो रहा है? रुक एक कार है एक कार एक अंडर साइड एक नीचे फ्लैश किया कार साइड कार एक। भाई तुम लोग वेट नहीं करते। फ्लैश बोल रहा हूं फ्लैश। अब तेरे फ्लैश के लिए रुका था उसने पीक लेके मारा मेरे को। टनल से गया एक बंदा। टाइमिंग अच्छी हो गई बस मेरी। और पीछे और पड़ी तेरे को सेव कर ले। क्या पीक कर टाइम पे भी कर रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं सामने। टाइमिंग लकी हो रहे हैं अरे लकी हो गए नहीं जितना टाइम होल्ड किया एंगल उतना टाइम निकला नहीं। वो लकी पीक था। बाय करना है लकी का नया प्रोफाइल है। किसका नया प्रोफाइल है? का कौन स्टार का है? डार्क मैंने कहा स्टार का। अब एक तो ये इनको पता नहीं कौन से एजी फॉन्ट लिखने की अपनी पता नहीं क्या है दिमाग खराब है इनका। 3 मिनट दो ऑपर मिनट। लॉन्ग दो। नो वन बी। मैं मर गया आई गेस। यू टेक क्लियर। दो लोग रश हो गया मार काइडो। वो 2 सेकंड पहले मार देता काइडो। साइड वन लास्ट साइड ओपी प्ले कर गया काइडो। प्लानिंग साइड फ्लैश दे काइडो फ्लैश दे। फ्लैश में शॉट बॉक्स नाइस रे काइडो उसको 1 सेकंड पहले मार देता यार। वो फॉल डैमेज की आवाज थी मेरी आवाज नहीं। बिल्कुल डिवाइस ने बहुत अच्छा किल निकाला इससे चीटिंग। इसने भी बहुत अच्छा किल निकाला चीटिंग। वो लॉन्ग वाले ऑफर को जो वन टैप कर रहा है ना भाई। मेरे को तो स्मोक के अंदर मार दिया। डिवाइस कुछ चाहिए? डिवाइस हम कर दो जो मांगना है मांग। कैसे भाई एपिलेप्सी हो गई इसको। एपिलेप्सी हो रही है। मांगते एपिलेप्सी हो गई इसको। एपिलेप्सी हो गई क्या फिर? जाओ फ्लैश करूंगा जाओ फ्लैश करूंगा। Flashbang. चलो वापस आ। सारे रश करके भी हार्ड रश यार क्या है यार ये। मैं जब भी जाता हूँ रश हो जाता है नूब्स का। हार्ड तो उसने किया था मुझे। 27-30 फ्लैश पे एंट्री लेना। स्मोक में एक फ्लैश पे अबे बिना बात विंडो एक कार वन फ्लैशिंग साइड वेट। कुछ अंदर साइड फ्लैश किया।
कार है काइडो छोड़ दो सेव कर डोर आया भाग नाइफ निकाल के भाग काइडो वो जिंदा बच गया भाई मैं मर गया माँ की चूत मिड वो कैसे बच गया अच्छा कार पे छिपा था Bro, that shot was too crazy. मेरी गांड ले ले भाई तू इस बात पे दे राज जल्दी यार जब मैं बीच आता हूँ वो लोग कुत्तों की तरह रश कर देता है ऋषित जब मैं बीच आता हूँ मैं एक किल लेता हूँ उसके बाद खत्म गेम येलो तू क्यों ले रहा है साले तूने मारा नहीं वैसे सो नो फ्लैश है ना वहाँ पे मैं मर गया ये राउंड नहीं जा पाया भाई हर बार नहीं होती मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ सारे लॉन्ग है भाई पूरे गेम में वो मॉली गया उसका मैं बदले फाइट नाइस वन पे गया ए लॉक करके साइड गया मैं स्मोक के अंदर ही मर रहा हूं हर बार एक जंप करके चला गया दो साइड वन मोर नाइस शायद कार 90 टैग नाइस राउंड रे टैग हो गया यार वो इतना ऊपर कहाँ चढ़ा हुआ है वो क्रिकेट कर रहा था मैं कुछ भी वो कहाँ इतना ऊपर चढ़ा हुआ है भाई कोई बात नहीं चल बात मैं गन दे रहा हूँ आपके गवार के बच्चे ये ले अरे ऋषित तो रोना बंद कर रही है बड़ा बुरा लगता है यार मेरे को भी लगता है रे भाई मतलब एक ही मैच में 6 बार हो जाए ना तो इतना मैं स्मोक करके तेरे को मारता डाउन एक और यही था उठा कर हेलो जैम वाली था हेलो आई एम 2 आई एम मैं लैग आउट हो गया ए मिड 3 मिनट कुछ कवर दे दे अरे फक विंडो आया अरे क्या गंदा बंदा है अंदर जल्दी देख कुछ जल्दी देख नहीं है ए भाई बंदा है सामने है कुछ मेरे फ्लैशिंग मिड टनल साउंड मैंने मिड चेक किया मेरे को मिड में कोई दिखाई नहीं मतलब एक कीस्पॉन था वो मेरी M4 लेके जाएंगे वो लोग मैं बता वाचिंग यही देखता रहे कुछ कर रहा है वापस गया LT और MP9 वाला रहा है पीछे हो जा सीढ़ियों में अरे फालतू का जाके मारा तू हां ना अरे मेरे को लगा डिमाइश पीछे दे देगा 75 मिड ठीक है लो है वो आराम से खेल एक स्काउटर है आना नहीं चाहिए उसने दो निकाले हैं वाले क्रॉसिंग के 75 स्काउटर शुड बी पिट निंजा साइड साउंड आया गुड आउट आ रहा है इसका ये पता है तेरे को मालूम है मैं जब लॉन्ग से वॉक करके पुश किया ना ये राउंड ये बंदा डीप सिटी स्पॉन बैठा था मैं इसी पे लगा के बैठा था मैं जब कैटवॉक की तरफ मुड़ा इसने वाइड पिक लेके हेडशॉट मार दिया न्यू प्रोफाइल नहीं कर रहा रे अरे तुम लोग क्या भाई मैक 10 से मर गए एक लेके कैसे अरे ये देखो मालूम है मैं तेरे को सीरियसली बोल रहा हूं अभी मैक 10 से कैसे मर गए भाई मैं पूरी गेम में पहली बार और वाचिंग तू ऑफ लेके पुश कर रहा है पागलों की तरह हां उसने बोला प्राइवेट प्रोफाइल है लॉल रुक जा अबे कुछ नहीं कर रहा वो नहीं पता नहीं कर रहा भी हो नहीं कर रहा वो हां मैं भी इससे नहीं कर रहा था डाउट लास्ट मैच मेरे को नहीं बोल रहे थे वो लोग कर रहा था क्या नहीं ना मैं भी तक इससे फाइट लिया नहीं मेरे को पता नहीं कैसा खेलता है नहीं कर रहा बार मार रहा क्यों इतनी आवाज कर रहे हो नाइस बता दो उनको इधर ही थे तुम नाइस एंट्री लेना एंट्री मत ले साउंड आउट पे भाई फ्री फायर मारते हैं कुछ मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली नहीं कर रहा मिड डोर व्हाट नाइस शॉट राइट साइड क्लोज और एक और है उधर ही पुश करेगा उसको मारता हूं फाइट है मैच निकल टीम में बी बना ले एक बी रैंप है उधर था क्या बी रैंप कहां होता है 34 टैग है अंडर विंडो डिवाइस टैग बढ़िया लास्ट डोर पे था हां सीटी दिखा अननोन एचपी अननोन सिटी 34 मैंने दिया उसको मैंने 0 दिया उसको 60 एचपी है ब्रो
यार मिड पे मेरे को क्या मारा उसने, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मैं स्ट्रीम पे देखा कुछ भी मारा है इसने, मेरे को भी कुछ भी मारा है इसने। नहीं वो, अरे कुछ और इसके बीच में मार गया मेरे को भागते भागते, रनिंग शॉट लग गया। मेरे को फ्री फायर मारा उसने मेरे पे, मैं आउट आके बैठा था। एंगल बैक तो यार इसको क्या फायदा कर देते हैं, मैं स्काउट उठा रहा हूं, देते हैं, लगा रहा क्या फर्क पड़ेगा। तू एक निकाल सकता है। कर दे मैक 10 भी कर देगा कार्ड। मेरा भी इको है, मैं कह रहा हूं इको रख लो यार, साउंड सिक्योर हो जाएगा नेक्स्ट वाला। हां ठीक है अभी है। नेक्स्ट सिक्योर करते हैं। हां कुछ टैग देता है सबको, तो फिनिश करने की कोशिश ना करियो, टैग पे ट्राई कर। क्वांटिटी कवर कर, किल सिक्योर का बाद में देख लेंगे। एक टैग हुआ, एक और टैग हुआ। 3 लोग मिड है, 3 लोग मिड है, 3 लोग मिड है। टैग हुए दो लोग टैग हुआ। 87 एल्टी पुश ये वॉल कर रहा है भाई, मेरे को सीरियसली डाउट आ रहा है। मिड स्मोक किया रे उसने, मिड स्मोक कर घुस गया वो। ऋषित को प्री फायर दिया है डब्बे के पीछे, बैरल के पीछे। कुछ को देखते हैं ना, हां देख। जिगल की वन मोर सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। यार इज बॉलिंग लग रहा है मेरे को अभी देख। यार मैं हैरान हूं यार, टेजर वाले बंदे ने अपनी मॉली फेल कर दी और मैंने उसको 87 इन 2 दिया और वो अपनी मॉली में खड़े होकर मेरे को मार गया। और एक वो ए लॉन्ग टिक लेगा। हां जाता हूं मैं उड़ा रहा हूं वापस में। कमाल है रे, मुझे मरा नहीं वो, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूं, मरेगा ये मरेगा। वो पता है W दबा के एल्टी पुश करके मेरे पीछे आ गया एकदम, और कोई एंगल चेक नहीं एक क्रॉस किया। अरे कौन है मेरे साथ ब्लॉक हो रहा है ऋषित? ऑन साइट यार, बॉम्ब लेके मत जाइए। क्या था? एक है फिट में किधर है तेरे? पेट में साइड डाउन। ओ भाई साहब, रन रे भाई, अबे वॉक क्यों कर रहा है? रन ऑफर है वॉक यार नहीं हो पाएगा। 101% चालू है इसका, रिपोर्ट करो। डस्ट 2 है ना रात को, इसलिए हम डस्ट 2 नहीं खेलते भाई। कुछ का भी डी रैंक लग रहा है मेरे को। 0 कमेंट, फर्क नहीं पड़ता। 0 कमेंट कुछ नहीं। हमें नहीं प्रोफाइल है इसकी। अरे CSGO स्टार्ट पे एकदम प्राइवेट प्रोफाइल बता रहा है। क्या ये नहीं खत्म है भाई, कुछ भी कभी इतना नहीं मारता जिंदगी। ये लगता है मिड फाइट ले रहा है साइड। भाई मैं बहुत मतलब 33 in 1 बीटा भाई लेजेंड होता है मेरा 40 किल जाते पता है। टाइफून यू आर राइट ब्रो। रेड टी 26 पता है इसका रीजन क्या है टाइफून? इफ आई सीरियसली एक्सप्लेन इट टू यू, बिकॉज डस्ट टू एंड इन्फर्नो पे फ्री स्क्रिप्ट चलती है जो जिसमें हैक्स जो होते हैं, हैक्स वाली स्क्रिप्ट होती है, एम लॉक वॉल्स वाली, वो फ्री स्क्रिप्ट चलती है। तो फ्री मतलब एक्सेसिबल टू ऑल, एंड वो हैक करके यूजुअली MG टू वाली रैंक में आते हैं। MG, DMG, LEM इस वाली रैंक में हैकर सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से, क्योंकि वो हैक करके फ्री हैक से तो बैन हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, लेकिन टाइम लगता है उसको भी। और डस्ट तो फ्री है तो फिर तो चलाते ही हैं। वो रात को फ्री होते हैं सारे हैकर, और रात को याद अरे आना कोई नहीं गुड ट्राई ऐसे पुश करना। क्या डब्बे पे क्या कूद रहा है? ट्राई किया था मैं तेरे लिए टैग करने के लिए टैग कर रहा हूँ, तू कूद रहा है मेरे सामने। कोई नहीं गुड ट्राई था। 34 पे 6 भाई, उसको शर्म में नहीं आ रही। गेमिंग चेयर है हमारे पास, गेमिंग चेयर है तो और कुछ नहीं। हार्ट ब्रेकिंग, यस आई नो राइट ब्रो, वी कांट डू एनीथिंग। क्लियर नहीं किया, मेरे को क्लियर किया। साइड 1 सिटी सिटी आ रहा है।
Watching left. नहीं सिटी क्लियर है सिटी आ बी साइड से आ रहा था एक लेफ्ट में यार ए साइड शॉट कैटवॉक आधा डिमाइस जंप करेगा वो I am planting the bomb. ओपन प्लांट है वैसे Bomb has been planted. Terrorists win. क्लिक करेगा राइट वैनगार्ड मच बेटर राइट वैनगार्ड का स्टार्ट करने पे रहता है ना तो रूट एक्सेस है एंड रूट में वो सारी चीजें रीड कर सकता है जो बाहर मेरे को एक वाचिंग है अरे पहले ड्रॉप भाई ये टेजर को दूसरी बार मैंने 180 डिग्री मारा है सीधा सर पे Yes. Thanks. CSGO नहीं कर सकता ऐसा क्योंकि प्राइवेसी का कुछ Our नहीं enemies tremble. फ्लैशेस इधर If they so much as touch our hand, they will all die quickly. Throwing smoke. Flashback. अबे यार मेरा फ्लैश गंदा हो गया भाई Flashbang out. बस और फ्लैशेस नहीं चाहिए मांगे स्काउट भाई ये राउंड बैठा है वो वॉल कर रहा ब्लेटेंट वॉल कर रहा है वो उसका कोई चांस ही नहीं है हारने का ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कोई बी क्लियर है जल्दी भाग के जा लो जंप करके जाना निश्चित मिड नहीं होना चाहिए कोई सीटी देख मिड नहीं है कोई मिड नहीं आएगा यहीं पे लेफ्ट में बैठा रहा अगर उसने चेक किया देखो तो पता लग जाएगा यहाँ पर हाँ अरे हेड दिखा के बैठा रहे तेरा यार हेड पे प्रीएम लेकर आया तो समझ ले कर रहा है बस यहीं बैठ आगे पीछे नहीं जा ऋषित तेरा हेड दिखा के बैठ हेड आगे जा हाँ बस बैठे रह सिटी वन अब समझेगा शॉट जा रहा हूं 2 शॉट चला मिड आ गया 2 शॉट सारे शॉट सारे मिड मॉली है तेरे पे डोर मॉली कर दे डोर एक भी बंदा का सीटी नहीं आया अभी विंडो होल्ड कर यहाँ पर पीक लेना नहीं था विंडो होल्ड करवाएंगे एक भी बंदा सीटी नहीं आया भाई ऋषित जब होल्ड करके बैठा एक बंदा सीटी नहीं आया कमाल वो बंदा लॉन्ग से होके आया पूरा का पूरा गलत गेम है भाई ये Bomb has been defused. Counter-terrorists win. मेरे को तो सीधा शॉट पड़ा भाई निकलते 38-7 इसका इतना अच्छा रिएक्शन रेट है कि भाई मेरे को निकलते बराबर लॉन्ग पे उसने गोली मार दी पहली वो मेरे को फिनिश कर रहा है वो इनसे अच्छा इनसे ज्यादा ये सबको मारने से बड़े मेरे को फिनिश कर रहा है वो बीच खड़े होके कमाल क्यों तू भगवान लग के गया We must move. आगे Throwing a decoy. Smoke down. कौन नाचता है जा रहा है ऑफर के सामने कौन नाचता है मिड स्मोक किया है Throwing flashback. ठीक है Molotov out. भाई बॉल पे रेस कर रहा है Grenade. ओ लॉर्ड प्रीएम एलटी देख मैं एलटी होल्ड कर छोड़ दे उसको एलटी होल्ड करने एक मारा बॉटम मिड वाले को मार दे एंटी कोई भी नहीं है अरे डिवाइस बॉम्ब के छोड़ गया हां अबे CSGO stats से ओपोनेंट के रैंक दिखता है यस ब्रो CSGO stats.gg ओपोनेंट क्या हर किसी का रैंक दिखेगा हर किसी का जैसे ऑब्वियो है प्राइवेट प्रोफाइल आई थिंक नहीं दिखेगा लेट्स सी हाँ DMG थंडरबोल्ट रुक गया सारा कर रहा है भाई कैसे पीक ले रहा था फेक कर रहा है हाथ में आगे फट के हाथ में आ गई इसकी फेक कर रहा था ये वाला यस बॉल है क्या बात है भाई कमाल का बॉल है इसका भी वेरी नाइस एक डेमो दिखा इतना वॉल लेके भी आउट टाइम हो रहा चूतिया इसका मैंने भाई वो 41 और 8 पे है वो हाइड करके भी क्या करेगा वो ओवरवॉच फेक भी नहीं कर सकता भाई Throwing a flashbang. one more I'm starting the fire. Flashback. एक और टैग बिना फ्लैश मांगे लॉन्ग पे W कर रहा Throwing a है grenade. फ्लैश एक टैग था मिड पे कुछ ध्यान से सिगल में ले गया नाइस कुश फ्लैशिंग लॉन्ग इफ यू वांट राइट देख डिवाइस शुड आई फ्लैश लॉन्ग पिट देख Flashback. क्लियर है Yes, my friend. Yes. फ्लैशिंग साइड वन Flashbang. डिवाइस Throwing flashbang.
एलिवेटर होगा कुछ देख लेते दे रखे यार। शॉट है राजा शॉट है। हाँ शॉट है। राइट साइड लीव हिम मिड कूदा ठीक है नेट मारता हूँ 3 3 2 1 स्पीड तो ऐसा एक दे सकता पंचा ये तेरे पीछे देख भाई मत करना कोई भी। नींद आ रही है अब तो 1:40 हो गए। गोली मारो यार हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना व्हील घुमाऊंगा जाके फिर चला जाऊंगा। क्या फ्लैश दिया इसने टीबीएस पे एंड्रॉइड शॉट बॉल थ्रू मार लॉन्ग रश होके हाई मिड आ रहा है। जा मैं लॉन्ग वाले को ले रहा हूं। मिड डोर Rishit, are we going to talk about that? 11-9 liquid leading Inferno. Oh, liquid जीत रही है अभी तक। Yes. क्या बात है यार। अबे फॉलन है भाई, फॉलन है उधर। फाड़ना पड़ेगा। किसको हो रहा है उन्होंने? नावी के अगेंस्ट है। अच्छा नावी हार गया बाहर हो गया। नहीं 11-9 है अभी रुक जा। मिड दो लोग मिड को ऊपर कॉपर एक स्काउट है मिड पे। दिमाग जंप करके जा मत पिक ले उसका आपको लेने दे। लॉन्ग देख लो भाई। मैं देख रहा हूँ। नाइस काइडो। एक और लॉन्ग। अरे बॉम्ब वाह मैं बॉम्ब ले रहा हूँ छोड़ो। शॉट जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तेरा। क्या टाइमिंग पे नेड किया है भाई इसने। ओ भाई मेरे को ट्रेस कर रहा है वॉल के पीछे। वन मिड डोर लॉन्ग पे बैठा। स्लोप पे ऊपर है। स्लोप डबल स्कोप में कर ऐसा। आमो नहीं 2 ए साइड पे वचन। लॉन्ग कह रहा था ना कुछ। हाँ मर गया छोड़। दो लोग हैं वहाँ पे। हाँ एक सीटी है के साइड वो अपर क्लोज आके बैठा है। लॉन्ग एक फ्लैश 87 in 1 90 in 1 दोनों टैग 90 87 डैम 10 तूने 87 एलटी वाले को दिया है। नहीं नूबड़े नेचर गॉड और हैकर 87 90 टैग। अबे यार रिप नाइस। नेक्स्ट मैप न्यूक थर्ड मैप D2 न्यूक तो जीत जाएंगे ना अभी 100%। लाइन कब लिया तूने टैक्सी लग रहा है ब्रो। न्यूक 100% जीत जाएगी ना टेंशन नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड इको इज आउट थ्रोइंग अ फ्लैशबैक। भाई क्या यार इस पे टैग है 100% टैग वाला डेड है। ये कैसा स्विच है? लॉन्ग पुश 50 टैग बी साइड प्लेटफॉर्म हॉपर वॉक कर काइडो एक फुटस्टेप क्या दे रहा है पता है लॉन्ग। क्या गेम है क्या गंदा प्लेयर है भाई वो बीट टनल देख रहे सीधा विंडो देखता है बिना साउंड के। रैंक अप डी रैंक हुआ कुछ का नहीं हुआ? नहीं अबे यार काइड किसका डी किसी का तो हुआ होगा यार। किसी का नहीं हुआ। ऋषित का डी रैंक हो गया। ऋषित का डी रैंक हो गया। मेरे पिछली मैच ही हो गया था। हैं सही में? हाँ तूने बताया MG1 हो गया तू। जी एंड MG2 MG2 डैम सर MG1 हो गया ऋषित तू। MG2 MG2 MG2
MG1 हो गया ऋषित। एलियन भाई। MGM भाई बंदा एलियन था यार, क्यों इतना अबे बोल। लैंड मेरा भाई एलियन था भाई, वो था ही वो नया का नया एलियन। अकाउंट है, हैक करके एलियन बनाया। हाँ वो एलियन था, वो प्रो प्लेयर है। 70 आवर्स पास 2 वीक्स हैं उसके। भाई 70 आवर्स है टोटल। भाई वो जिम जाता है और कुछ नहीं है। मैं चलो क्रैश बाय। होने जा रहा हूँ। चलो डिवाइस गुड नाइट ब्रो। मैं भी जा रहा हूँ गाइस। जा रहा हूँ क्रैश होने भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। टाइम क्या हो गया है भाई, 2 बज गुड ही गए नाइट, गुड यार। नाइट काइडो, गुड नाइट कुश, गुड नाइट ऋषित। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड गुड नाइट। नाइट बच्चा, गुड नाइट। चलो गाइस, इस मौसम सी स्ट्रीम का एक एंड कर दें गाइस, प्यारा सा। मज़ा आ गया मैच खेल के, लेकिन थोड़ा हैकर वैकर हो गया तो मूड अपसेट सा हो गया। हैकर्स अगर ना हो ना तो फिर अच्छा लगता है, लाइक अगर हैकर हो देन इट्स लाइक क्या फ़ायदा गेम खेलने का, है ना। सी या ब्रो, हैव फन, थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल हैव फन ब्रो if I can. I hope you guys also enjoyed the stream. I hope you guys learned something new from the matches. I hope you guys want me to continue this streaming and stuff. And मैं आपको entertain करता रहूँ. And Mike कल आ रहा है, so it will be like more entertaining now, bigger, better streams. And hopefully we go for that, 100K वाला जो mark है, कभी हमने यहाँ subs में hit करना है videos and stuff के साथ. Hopefully we go there. Hopefully we become a big streamer. मज़ा आ जाएगा. चलो, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच आज रात को आने के लिए। I'll see you all in the next stream. Till then, good night, stay safe, have fun, don't cheat, bye bye bye, good night, see you tomorrow.